शर्मा बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे विचारों के मंथन का यह अप्रतिम आयोजन कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी से मेरा सादर अनुरोध है, कृपया अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। के विकास के पर्याय आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, उनके साथ हैं विधायक रमेश मेंदोला जी, जो कि क्षेत्र क्रमांक 2 के विकास के सुदृढ़ स्तंभ, हमारे सभापति मुन्नालाल यादव जी, हमारे सभी MIC मेंबर निरंजन सिंह चौहान जी, राजेंद्र राठौर जी, नंदकिशोर पहाड़िया जी, आदरणीय राकेश यादव जी, सभी सम्मानीय MIC मेंबर हमारे बीच उपस्थित हैं। राकेश जैन जी भी हमारे साथ हैं।
अध्यक्ष हमारे बीच पधार चुके हैं हमारे जनप्रिय लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। स्वच्छता का सूरज निकला कोना कोना, इस शहर का हो उजला, आओ बनाए नंबर 1 फिर से अपना ये इंदौर। जागो जागो, स्वच्छता का सूरज निकला कोना कोना, इस शहर का हो उजला, आओ बनाए नंबर 1 फिर से अपना ये इंदौर। सात रंग मिलकर आप सभी का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरा आप सभी से सादर विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप अपना यथास्थान ग्रहण करें। हमारे बीच आज के इस अप्रतिम विचार मंथन के अभिनव कार्यक्रम में माननीय शंकर लालवानी जी सांसद उपस्थित हो चुके हैं। कुछ ही समय में हम इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ इस इंपीरियल हॉल में करने जा रहे हैं। मेरा यत्र तत्र खड़े सभी सम्मानीय जनों से सादर अनुरोध कि कृपया अपना नियत स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी को विदित है, पूरे देश भर के राज्यों से, शहरों से सुधीजन पधारे हैं। हमारे महापौर, उनके प्रतिनिधि, अधिकारीगण, जो कि अर्बन 20 की इस विचार मंथन की श्रृंखला में अपने विचारों से इस सदन को लाभान्वित करेंगे।
कुछ ही समय में इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज इंदौर बड़े गौरव के अनुभव के साथ हर्षित पुलकित मन से करने जा रहा है। आप सभी से मेरा करबद्ध अनुरोध, कृपया अपना नियत स्थान ग्रहण करें। स्वच्छता का सूरज निकला, कोना कोना इस शहर का हो उजला, आओ बनाए नंबर 1 फिर से अपना ये इंदौर। जागो जागो स्वच्छता का सूरज निकला, कोना कोना इस शहर का हो उजला, आओ बनाए नंबर 1 फिर से अपना ये इंदौर। सात रंग मिलकर बनाए श्वेत रंग उजियारा, सात रंग मिलकर बनाए श्वेत रंग उजियारा। स्वच्छता के इस श्वेत रंग से रंगा है शहर हमारा, सतरंगी सपने आंखों में, दिल में एक विश्वास, निकल पड़े रचने को फिर से एक नया इतिहास। मनाए स्वच्छता का त्योहार 7वीं बार, छुएगा 7वां आसमान। आदरणीय रवि रंजन सर जहाँ कहीं भी हो, कृपया मंच के समीप आ जाएं। आदरणीय रवि रंजन सर। छुएगा 7वां आसमान 7वीं बार। सात सितारा शहर हमारा, जग में सबसे निराला, 7 सुरों सा सुंदर है इसका हर ताना बाना। सात सितारा शहर हमारा, जग में सबसे निराला, 7 सुरों सा सुंदर है इसका हर ताना बाना। अहिल्या की नगरी के हैं हम सारे वासी, ठान लिया है मन में और पूरी है तैयारी। 6 सालों की मेहनत है और जारी अथक प्रयास, निकल पड़े रचने को फिर से एक नया इतिहास। मनाए स्वच्छता का त्योहार 7वीं बार, मनाए स्वच्छता का त्योहार 7वीं बार, छुएगा 7वां आसमान 7वीं बार। जागो जागो स्वच्छता का सूरज निकला, कोना कोना इस शहर का हो उजला, आओ बनाए नंबर 1 फिर से अपना ये इंदौर। बस्ती चौक चौबारे पूरे शहर से अपना वास्ता, बस्ती चौक चौबारे पूरे शहर से अपना वास्ता, इन गलियों से होकर गुजरे अपने घर का रास्ता। स्वच्छता आदत है अपनी, अपना है सम्मान, स्वच्छता का अपना परचम अब छुएगा आसमान। मनाए स्वच्छता का त्योहार 7वीं बार, मनाए स्वच्छता का त्योहार 7वीं बार, छुएगा 7वां आसमान 7वीं बार।
हेलो। हमारे बीच आज के इस अवसर पर पधार चुके हैं आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे साथ हैं आदरणीय नीरज मंडलोई जी, प्रमुख सचिव आवास विभाग, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। मेरा सभी सम्मान्य जनों से यह अनुरोध है कि कृपया आवागमन इस पैसेज को छोड़ दें और आपका नियत स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। हमारे बीच आज के इस अवसर पर उपस्थित हैं श्रद्धेय कुणाल कुमार जी, संयुक्त सचिव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। मध्य प्रदेश की धरा का हृदय स्पंदन हमारा इंदौर शहर, स्पंदन एवं संवेदनाओं से ओतप्रोत हमारा इंदौर शहर, सृजन एवं निर्माण की गाथा कहता हमारा इंदौर शहर, कई दौरों से गुजरा फिर भी स्थित प्रज्ञ हमारा इंदौर शहर, देश के क्षितिज पर स्वर्णिम पटल पर स्थापित स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 6 बार सिरमौर बना हमारा इंदौर शहर, माँ अहिल्या के पुनीत आशीर्वाद से फलता फूलता हमारा इंदौर शहर। इंदौर शहर आज गौरव का अनुभव कर रहा है, गर्वित है, हर्षित है। आप सभी को विदित है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में G20 के कई शिखर सम्मेलन देश में हो रहे हैं। इसी क्रमबद्धता में प्रदेश की आर्थिक राजधानी में आज ये अर्बन 20 का आयोजन हम सब के लिए गौरव का पल है। वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों की मेजबानी कर इंदौर अपने आप को हर्षित अनुभव कर रहा है। सभागार में उपस्थित विभिन्न राज्यों शहरों से पधारे महापौर, उनके प्रतिनिधि, अन्य अधिकारी कर्मचारीगण का इस मंच के माध्यम से मैं सुनैना शर्मा बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूं और आदरणीय रवि रंजन सर से अनुरोध करूंगी कि ससम्मान हमारे अतिथियों को कृपया मंचासीन करवाने का कष्ट करें। आदरणीय शंकर लालवानी जी, सांसद से मेरा सादर अनुरोध, कृपया मंच पर ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी से कि वे भी कृपया मंच पर अपना ससम्मान स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय रमेश मेंदोला जी से कि कृपया वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय किरीट कुमार जी, महापौर अहमदाबाद से कि वे भी कृपया मंच पर ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। रवि रंजन जी से मेरा सादर अनुरोध कि कृपया सभी को ससम्मान मंच पर अपना स्थान ग्रहण करवाएं। आदरणीय नीरज मंडलोई सर, प्रमुख सचिव जी से भी अनुरोध है। आदरणीय कुणाल कुमार जी, संयुक्त सचिव जी से भी मेरा सादर अनुरोध। और अब मैं उस व्यक्तित्व को बुला रही हूँ जिनके मार्गदर्शन में आज का यह संयोजन सुखद अनुभूति से स्पंदित कार्यक्रम आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी, महापौर इंदौर को भी ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय हर्षिका सिंह मैडम, आयुक्त को, नगर पालिक निगम इंदौर को भी कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय कुणाल कुमार जी, नीरज मंडलोई जी, आदरणीय जयराज फाटक जी से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
हमारे सभी सम्मानीय मंचासीन हो चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी का स्वागत अभिवादन करें। हमारे साथ हमारे MIC मेंबर, हमारे पार्षदगण भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और कार्यक्रम को गति देती हूँ। आप सभी को विदित है कि आज का यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर विचार मंथन का एक ऐसा अभिनव अप्रतिम आयोजन है जिसका अमृत निश्चित तौर पर नगरों के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। मैं सभी मंचासीन सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि सर्वप्रथम हमारी सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन करने का कष्ट करें। मेरे मीडिया भाई बंधुओं से अनुरोध करूंगी कि थोड़ी सी जगह दे दें, क्योंकि हमारा अलौकिक प्रकाश पुंज नीचे ऊपर आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, आदरणीय सांसद महोदय और सभी सम्मानीय जन से, कि कृपया इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन कर अर्बन 20 के इस अभिनव अप्रतिम पल का विधिवत शुभारंभ करें। यह अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा निर्देशन, राज्य सरकार, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का संयुक्त आयोजन और इस अभिनव अप्रतिम पल का यह दीप प्रज्वलन का अप्रतिम पल निश्चित तौर पर विभिन्न राज्यों से, शहरों से पधारे महापौर, प्रशासनिक अधिकारी, स्मार्ट सिटी CEO, विषय विशेषज्ञ, विभिन्न संगठन, कारपोरेट संस्थानों के प्रतिनिधि, जो का आयोजन जीरो वेस्ट थीम अर्थात शून्य अपशिष्ट अवधारणा पर आधारित है, उसका विधिवत शुभारंभ इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के साथ, जिसकी हर ज्योत में एक नई सोच, एक नई रोशनी की हजारों किरणें प्रस्फुटित हो सार्थक एवं सकारात्मक कार्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन हमारे समस्त सम्मानीय अतिथियों के करकमलों से किया जा रहा है। वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि और उस विघ्नहर्ता मंगलकर्ता का आह्वान, जिसकी उपस्थिति से ही सारे काम सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय मुन्ना लाल यादव जी से, जो हमारे सभापति हैं नगर पालिका निगम इंदौर, कृपया ससम्मान मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मुन्ना लाल यादव जी, ससम्मान आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। शहरी विकास में डिजिटलीकरण के महत्व, शहरी निकायों के फैसले हमारे बीच पधार चुके हैं इंदौर जिले के जिलाधीश परम श्रद्धेय डॉक्टर इलैया राजा TG सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। देश के शहरों के नगरीय प्रशासन को मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर नए सिरे से विकसित करने पर विचार विमर्श मंथन करने का यह अवसर है अर्बन 20। मंचासीन सभी समान अतिथियों का स्वागत करना हमारा परम कर्तव्य सौभाग्य है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को मानस पटल पर पल्लवित और पोषित करती है। स्वागत सत्कार की इस श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी हमारे इंदौर के महापौर माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी का मोमेंटो और पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय महापौर जी से मेरा सादर अनुरोध है। हम जोरदार तालियों से स्वागत के इस अभिनव पल को चरितार्थ करें। आपकी तालियों की गूंज ही हमारे अतिथि सम्मानीय जनों के प्रति अपने सम्मान के भाव को प्रकट करेंगी। मैं अनुरोध करूंगी नगर निगम आयुक्त आदरणीय हर्षिका सिंह मैडम से कि किरीट कुमार जे परमार जी, जो कि अहमदाबाद से विशेष रूप से हमारे बीच पधारे हैं, अहमदाबाद महापौर का स्वागत स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ के माध्यम से करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय रवि रंजन जी से कि हमारे इंदौर के युवा, ऊर्जावान और ऊर्जा के अक्षय स्रोत महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी का सम्मान स्वागत करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी और निरंजन सिंह चौहान जी से कि कृपया वे मंच पर पधारें, और नीरज मंडलोई जी, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश का मोमेंटो
और पुष्पगुच्छ देकर नीरज मंडलोई जी का स्वागत करें। मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय नंदकिशोर पहाड़िया जी को कि वे आए, और कुणाल कुमार जी संयुक्त सचिव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय राकेश जैन जी से कि कृपया वे मंच पर आए और आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी का स्मृति चिन्ह और पुष्प भेंट कर स्वागत करें। आदरणीय राकेश जैन जी, आप सभी हमारे MIC मेंबर हैं, आपका सभी का स्वागत करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। राकेश जैन जी कृपया जयपाल सिंह चावड़ा जी का स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगी आदरणीय निरंजन सिंह चौहान जी से कि कृपया वे आए और आदरणीय रमेश मेंदोला जी का स्वागत हम सबकी ओर से करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगी आदरणीय नंदकिशोर पहाड़िया जी से कि कृपया वे आए और हमारे मुन्ना लाल यादव जी का स्वागत स्मृति चिन्ह और पुष्प के माध्यम से करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय अभय राजन गांवकर जी से कि वे कृपया आए और हमारे इंदौर के कलेक्टर आदरणीय इलैया राजा टी जी का स्वागत स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट करके करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय दिव्यांग सिंह सर से कि कृपया वे आए और हमारी नगर निगम आयुक्त आदरणीय हर्षिका सिंह मैडम का स्वागत। मैडम, हमारी जो टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, उनका अनुरोध है कि आपका भी स्वागत करें, तभी इस स्वागत की श्रृंखला को पूर्णता मिलेगी। तो दिव्यांग सिंह सर की तरफ से आपका भी स्वागत। और मैं रवि रंजन गुरु सर से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय जयराज फाटक जी महानिदेशक का स्वागत करने का कष्ट करें। रवि रंजन सर से मेरा सादर अनुरोध, आदरणीय जयराज फाटक जी का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय DP तिवारी जी से कि वे आए और आदरणीय उप महानिदेशक रवि रंजन जी का भी स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय DP तिवारी सर से मेरा सादर अनुरोध, आप रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सलाहकार भी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट में कुछ कमी नजर आ रही है क्योंकि आपकी तालियां ही इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगी। सभी के स्वागत से हम अभिभूत हैं और इंदौर गौरवान्वित। आज के इस अर्बन 20 के आयोजन का विधिवत शुभारंभ हम कर चुके हैं और पुष्पों से स्वागत के बाद मन के भावों को स्वागत वाणी में पिरोकर स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं नगर निगम आयुक्त श्रद्धेय हर्षिका सिंह मैडम को कि कृपया वे आए और स्वागत के भाव प्रस्तुत करें। U20 इंदौर के इस कार्यक्रम में मंचासीन माननीय श्री शंकर लालवानी जी, सांसद इंदौर, श्री किरित कुमार परमार जी, मेयर अहमदाबाद, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, मेयर इंदौर, श्री जयपाल सिंह जी चावड़ा, IDA चेयरमैन, रमेश मंडोला जी, विधायक, मुन्ना लाल यादव जी, सभापति इंदौर नगर निगम, श्री नीरज मंडलोई जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, कुणाल कुमार सर, जॉइंट सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, इलैयाराजा सर, कलेक्टर इंदौर, जयराज पाठक जी, डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन गवर्नेंस, रवि रंजन गुरुजी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन गवर्नेंस. On behalf of Indore Municipal Corporation, I would like to extend a very warm welcome to all the delegates today in the U20 program in Indore, the cleanest city of the country. It is an honor for us as part of the Indore Municipal Corporation to be an organizer and to organize the city event of U20
in collaboration with All India Institute of Urban Governance. The day-long event, which will span across 3 main panel discussions on 3 thematic issues related to urban digital space, urban governance reworking, and urban local identity, along with 2 parallel sessions on the experience sharing by IMC, as also with the panel points of the World Economic Forum. We look forward to this entire whole day of effective discussions. I'm sure with our varied experiences and through peer learning, we would be able to come to positive deliberation points with far-reaching impact. Indore Municipal Corporation has over the past 6 years have been consistently working on the Swachhata front with the mass public involvement as the main theme point. Going ahead, IMC is taking several steps to move ahead on the path of green and sustainable living city. Organizing U20 Indore Event as a zero-waste event is one of our efforts in this direction. We hope while you stay with us in Indore, you would relish the Indori food, witness the Indore Swachhata movement, and overall the warmth and love of Indoris, while we part way today in the evening with lot of good thoughts and learnings about urban governance. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और उद्बोधन की इसी श्रृंखला में जब विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे साथ मंच पर होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके विचार नया मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं ससम्मान आमंत्रित करने जा रही हूं आदरणीय रवि रंजन गुरु जी को, जो कि आज की इस आयोजन की थीम क्या है उसके बारे में विवरण हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आदरणीय रवि रंजन गुरु, उप महानिदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Thank you, ma'am. माननीय श्री शंकर लालवानी जी, Member of Parliament, dignitaries on dais, ladies and gentlemen, it's really a privilege to be here for this U20 event, which is a series of events that has been happening in India. Just to give you a background on this, that you know that this year the government, India is leading the presidency of G20, and the Urban 20 is one of the engagement group under this program. So we started our journey with the Ahmedabad Sherpa meeting, where we actually discussed about the priorities areas where the delegation from the 20 countries Sherpa participated. As an organization, All India Institute of Local Self-Government has been involved since starting of this program. And we are also representing the convener, who is the convener of Urban 20. We are representing the UCLG, which is the government, which is a global organization. Across the globe, they have cities as a members, and we are representing in India UCLG as a convener, and started our support to this Urban 20 program starting of this. With the support of Ministry of Housing and Urban Affairs, as well as the NIA, Ahmedabad Municipal Corporations, we are engaged ourselves for this program. We are very thankful to the Ministry and the Government of Madhya Pradesh and the Indore Municipal Corporations for trusting on us and giving us this opportunities to organize this Urban 20 series workshop here in Indore. And we discussed initially with the Kunal sir, and he said straight away that the urban governance can be organized by All India Institute of Local Self-Government based on the experience that All India Institute of Local Self-Government has. And we, as an organization, we are actually have a lot of experience on these areas, and we, with the 54 centers across India, this organization has been working in the urban and the local self-government related matters since 1926. We are very fortunate to one of the organization who is going to celebrate our 100 years in the year of 2025. So kind of experience that AIILSG has been leading, it's really, really tremendous. Today's, like Madam Municipal Commissioner Ma'am also mentioned about that, we are going to discuss the
three priorities areas today. So just to give you a background that when the Sherpa meeting happened, then we discussed about the priorities areas that the cities of G20 will lead, or discussed about that, and that will go to the main G20 input as such. So we discussed the 6 priorities areas, and out of that 6 priorities area, the 3 actually were discussed during the Bangalore event, which happened last month. And today we are going to discuss about the 3 priorities areas, and mostly on the urban governance related things. So the 3 priorities area is obviously the digital is one of them. And thanks to the Government of India's and the Prime Minister's support on the digital missions. So if you see that we have a National Urban Digital Mission as well, and the cities really need that. So that's the one of the priorities areas, and the today's speakers are going to discuss about this. And the outcome will be added into the communique, which is going to be finalized and presented during the Meral Summit, which is going to happen in the Ahmedabad in the month of July. All the speakers which we have selected for the 3 technical session, we looked into the kind of experience in terms of the city experience. So we invited the city officials as a panelist on this sessions. Also we looked into the organization and the institution which are supporting and been working on this area since long time. So we have invited them to as a panelist, and as well as we have tried to look into the kind of things that we can added and value added to the today's deliberations. So I think it's really wonderful to be here, and once again I would like to thank the Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs, Kunal Kumar sir and team. Also, we'd like to thank Government of Madhya Pradesh, Neeraj Mandloi sir, who has actually immediately supported us to organize this in Indore. Thank you, sir. I also like to thank Honorable Mayor, who actually been guiding force for entire this programs, and Municipal Commissioner ma'am for supporting us to organize this wonderful event today in Indore. I hope the deliberation and the discussion will benefit to the G20 or Urban 20 communique, and I'm sure that we are going to have a lot of good discussion during the technical session. With this, thank you once again all of you for joining today's program, and looking forward to have more deliberation and discussion. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय रुचिका सिंह, एडिशनल कमिश्नर हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें ससम्मान मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन कर रही हूँ। मैडम, आदरणीय मैम, कृपया अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। आपका स्वागत है। और स्वागत की इस उद्बोधन के बाद हम चलते हैं हमारे व्यक्तित्वों के विचारों को सुनने के लिए, और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर जयराज पाठक जी, जो कि आईएएस हैं। वे आएँ और कृपया इस अवसर पर अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय डॉक्टर जयराज पाठक जी। आदरणीय सांसद जी, आदरणीय महापौर जी, मंच पे उपस्थित सर्व सम्माननीय गण और भाइयों और बहनों, हमारी इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशूर है। ब्रिटिश जमाने में 1926 में मुंबई प्रेसिडेंसी के म्यूनिसिपैलिटीज़ ने सोचा कि म्यूनिसिपल इश्यूज़ जो है उस पर कुछ कॉमन विचार मंथन किया जाए, उस पर कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज डिवाइस किए जाए, और इसलिए हमारी संस्था की स्थापना लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसके तहत 1926 में 1926 में हुई। 1952 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब अहमदाबाद के फॉर्मर लीडर भारत के स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, तो उन्होंने सोचा कि पूरे भारत के लिए ये संस्था का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाए, और मिस्टर पुरुषोत्तम मावलंकर हमारे पहले अध्यक्ष हुए भारत की स्वतंत्रता के बाद। तो हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेस है, एक 20 साल पहले तक हमारे ट्रेनिंग कोर्सेस ज़्यादा महत्व के थे, जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम, जो अब स्वच्छता का अभी सब फोकस है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भारत वर्ष में हमारे 7000 स्टूडेंट्स हर साल वह डिप्लोमा पास करते हैं,
हमारे 42 खुद के सेंटर है और 8 सेंटर हमारे एफिलिएट सेंटर है। यहाँ भोपाल और इंदौर भी हमारे काफ़ी एक्टिव सेंटर्स हैं। फिर म्यूनिसिपल क्लरिकल स्टाफ के लिए और अफसरों के लिए हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा और लोकल गवर्नमेंट सर्विस ये कोर्सेस है। अभी फायरमन खाली 6 राज्यों में ही फायरमन का फंक्शन नगर निगमों को दिया है, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। वो फायरमन का ट्रेनिंग भी अभी हमारी संस्था करती है। नर्सेस के कोर्सेज भी हमारे वडोदरा में हमारे होते हैं। यह सब एजुकेशनल ट्रस्ट इस स्वरूप से हमारा काम है। मगर अभी कुछ 20-25 साल पहले से हमारा एक महत्वपूर्ण रोल शुरू हुआ कि एडवाइजरी सर्विसेज टू म्यूनिसिपल काउंसिल्स। तो हमारे संस्था ने 2 बार विश्व महापौर परिषद का आयोजन, एक बार जयपुर में और एक बार कोची में किया। तो उस समय मैं नगर निगम का आयुक्त होने के कारण मैं दोनों ये जो विश्व महापौर सम्मेलन थे, शायद 1998 और 2005 में, दोनों में मेरी उपस्थिति थी। अभी रिसेंटली हमने दिल्ली में दक्षिण एशिया के महापौर सम्मेलन का संयोजन किया। तो सभी महानगर निगमों के जो प्रश्न हैं उनको चर्चा से ये प्रश्न सूझ सकते हैं। अभी आशिया की जो म्यूनिसिपल बॉडीज है वो विश्व में सबसे बड़ी बॉडीज हो गई है। चाइना में ऑफ कोर्स वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है और कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक ज्येष्ठ नेता वहाँ प्रांतों का गवर्नर होता है और बड़े शहरों का भी मेयर होता है। तो शंघाई और बीजिंग के महापौर वहाँ टॉप 10 लीडर्स में से चाइना में होते हैं और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र उन नगरों को जुड़ा है। तो शंघाई, बीजिंग ये सबसे बड़े नगर निगम आज विश्व में हैं। उसके साथ मुंबई भी बड़ा नगर निगम है और अर्बन एग्लोमरेशन का अगर सोचा तो टोक्यो अर्बन एग्लोमरेशन सबसे बड़ा है। मगर सभी शहरों से आगे निकलकर इंदौर ने भारत में एक क्लीनलीनेस का, स्वच्छता का पाठ सबको पढ़ाया और वो भारत का एक हाई प्रायोरिटी पे बन गया। तो मुझे बहुत खुशी है कि इंदौर नगर निगम ने यहाँ ये चर्चा आयोजित की। आज हम सब सुबह हेरिटेज वॉक को इंदौर नगर निगम से कई तरफ साथ हम गए थे। राजवाड़ा इलाके में जो जो सुविधाएं दी है, शहर कितना स्वच्छ है, इसका इतिहास के साथ हमको सब ब्यौरा दिया गया। मैं आयोजकों को धन्यवाद अदा करता हूं और आगे प्रोग्राम शुरू करने की विनती करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सत्सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ श्रद्धेय कुणाल कुमार जी, संयुक्त सचिव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, क्योंकि वे आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित इंदौर के सांसद महोदय, इंदौर और अहमदाबाद के महापौर महोदय, सभी वरिष्ठ लोक प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सभी आयोजक और उनके प्रमुख फाटक साहब जिन्होंने अभी अपने वक्तव्य व्यक्त किए, उपस्थित सभी शहरों से आए हुए लोक प्रतिनिधि, अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले सभी प्रतिनिधि, आप सभी का इस बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन में, जो कि जैसा पहले के वक्ताओं ने बताया कि G20 में U20 एक एंगेजमेंट ग्रुप और उस नाते दी गई जवाबदारी कि कुछ बहुमूल्य ऐसे सब्जेक्ट्स जो अर्बन गवर्नेंस को इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारे देश के भविष्य को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि शहरों का देश के भविष्य में बहुत बड़ा योगदान रहेगा, उन विषयों पे चर्चा करने के लिए आज यह आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो आप सब यहाँ पधारे हैं, आप सबका मैं शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो कॉन्टेक्स्ट है इस आयोजन का, अर्बन गवर्नेंस, ये बात ये कह रहा है कि आज ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग
इंक्रीमेंटल थिंकिंग छोड़कर नए तरीके अपनाए, जिससे कि हमारी अर्बन गवर्नेंस की जो व्यवस्था है वो आज के हमारे चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज को मीट करने में हमारी मदद कर सके। पहला प्रश्न ये आता है कि ऐसी क्या बातें हैं जिसके लिए ये सोचना जरूरी है कि क्या आज की जो अर्बन गवर्नेंस का सिस्टम हमारे देश में है ये काफी नहीं है या ये काफी है। अगर हम देखें अगले 25 सालों में जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमृत काल का जो समय है, जब 2047 में हमारे 100 साल एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह हम पूरे करेंगे, इन 25 सालों में पूरे विश्व में करीबन 200 करोड़ लोग शहरों में आएंगे। नया शहरीकरण 200 करोड़ लोगों से होगा ऐसा माना जाता है। इन 200 करोड़ लोगों में से 90% लोग जो शहरों में आएंगे ये एशिया और अफ्रीका में होगा, और उसमें से भी 50% लोग भारत और नाइजीरिया जैसे देशों में ही आए। तो पहली बात तो यह है कि आज जिस अवस्था में हम हैं उसमें करीबन 50 करोड़ लोग हमारे शहरों में रहते हैं। 50 से थोड़े कम ही है, लेकिन 50 करोड़ मान के चलें, क्योंकि इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो शहरों के बाहर होते हैं उनको अगर हम इंक्लूड करें तो वी आर अबाउट 50 करोड़ पीपल इन सिटीज, और ये संख्या जस्ट डबल होने वाली है अगले 25 सालों में। तो जितनी हमारी लोक संख्या शहरों में बढ़ी है पिछले 100 सालों में, वो अगले 25 साल में बढ़ने वाली है। तो ये एक संकेत है कि अब हमें नया सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम पुराने सोच पे अटके रहेंगे तो हम उसी पेस को कैटर करेंगे जो पुराना है। नए पेस को और नए तरीके के शहरीकरण को कैटर करने की हम क्षमता विकसित नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि अगर हम 2047 में एक विकसित देश बनना चाहते हैं, विकसित देश बनने के लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही एग्रेसिव हमें अगले 25 साल में चाहिए होगी, बहुत ही तेज इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होगी। वो तेज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आज अगर हम देखें हमारी जीडीपी $3 ट्रिलियन की मानी जाती है। ये $3 ट्रिलियन से बढ़ के अपेक्षा और अनुमान यह है कि $32 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी 2047 में होगी, करीबन 10 गुना जीडीपी में ग्रोथ। और आज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति जो इनकम है, करीबन $2300 पर प्रति व्यक्ति सालाना है, जो कि बढ़ के $20,000 प्रति व्यक्ति, करीबन उसमें भी 10 गुना ग्रोथ होने की अपेक्षा है, अनुमान है, आशा है। देश चाहता है कि यह हो ताकि हम 2047 में वो ऊंचाइयां छू सकें जो हम छूना चाहते हैं। ये करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि शहरों का विकास हो। 70% जो विकास देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो शहरों से आता है। तो अगर ये हमें उच्चांक प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं शहरों को उस उच्चांक को कंट्रीब्यूट करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। आज अगर हम देखें, करीबन विथ एवरी 10% ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन जो है, कहते हैं कि 3 गुना उसका जो है जीडीपी में कन्वर्जन होता है। तो एक अर्बनाइजेशन ग्रो होगा। अब अर्बनाइजेशन ग्रो होगा और इस जीडीपी को अगर हमें सामर्थ्यपूर्ण तरीके से शहरों ने उसको योगदान देना है तो करीबन जाके 500-550 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट अगले 25 साल में हमारे शहरों में लगेगा। ये अगर आज की हम परिस्थिति देखें तो जितना आज हम करते हैं इसका 8 गुना ज्यादा तेजी से हमें शहरों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, 8 टाइम्स। पर हम जो इस गति में करते रहे तो हम 8 गुना कम पड़ जाएंगे। ये अवस्था हमारी है। तो इन 2 बातों से अगर हमें देखें तो हमें और भी कई बातें हैं। आज हम अगर देखें हमारे शहरों में जो 1992 के बाद में 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट की नींव रखी गई, लोक संस्था के नाम पे अर्बन लोकल बॉडीज जो हम बोलते हैं, इनको एक लोकल गवर्नमेंट का दर्जा देने का प्रयास किया गया, वो भी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया। सो हमारी अर्बन गवर्नेंस की व्यवस्था अभी एम्पावर्ड नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फिस्कल पावर जो है हमारे पास, जो लोग अपने नगर विकास संस्थाओं में है, अपने निकायों में है, अपने महापालिकाओं में है, वो काफी कम है, जिसके कारण से इस तेज गति से इस बड़े जिम्मेदारी को निभाना उनके लिए पूरा नहीं हो पाता है। रिसोर्सेज कम है। हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी नहीं है कि हम रिसोर्सेज जनरेट कर सकें। हमारे यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है, ये सर्वाइवल काइंड ऑफ माइग्रेशन काफी हो रहा है, जिनको कि हमें सपोर्ट करना पड़ता है। वो हमारे टैक्स को या हमारी शहर के विकास को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उस तरह का एक अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा है जिससे कि शहर को बहुत फायदा हो सके। फिर हमारे पर्यावरण की स्थिति ऐसी है कि जिसके पर्यावरण की स्थिति अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं की
तो एक ऐसा नॉन रिपेयरेबल डैमेज हो सकता है। जैसे अगर थाने का एरिया है या फिर सूरत का एरिया, अगर क्रीक और वो मैंग्रोव्स का एरिया है, चाहे वो पणजी का हो या चाहे वो कर्नाटक के शहरों का हो, अगर उनका संरक्षण आज नहीं किया गया तो वो शहर परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें जरूरी है कि आज का ये कॉन्फ्रेंस हम लोग बहुत ध्यान से इस बात को सोचें कि क्या जो ब्रिटिश राज्य से हम लोगों ने लिया, जो सिस्टम्स हम लोगों को चलते आ रहे हैं, क्या वही हमें आगे लेके जाएंगे या ओरिजिनल थिंकिंग की जरूरत है? और ओरिजिनल थिंकिंग की अगर जरूरत है तो कैसे वो विकसित किया जाए, किस तरह से हम आगे जाएं जिससे कि हमारे देश को उपयोगी, हमारे कॉन्टेक्स्ट को उपयोगी, हमारे आगे के भविष्य के चाल को उपयोगी होने वाला गवर्नेंस सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर पाए। इसके लिए कई सारी चीजें जो हैं इनफैक्ट हमें करनी पड़ेंगी। एक प्रमुख रूप से मुझे लगता है जो हमारे शहरों में फ्रेगमेंटेशन है, पानी एक देता है, पानी के टैरिफ दूसरा सेट करता है, तीसरा जो है पाइपलाइन डालता है, चौथा उसके अलग कुछ काम करता है, बस चलाता एक है, उसका ट्रैफिक एक संभालता है, रोड तीसरा बनाता है। कई सारे इकाइयों में हमारा शहर बट गया है। तो क्या सुदृढ़ व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं जहां पे सक्षम अधिकार एक संस्था को दिए जाए कि वो एंड टू एंड निर्णय ले पाए? दूसरा कि क्या अकाउंटेबिलिटी हमारी बढ़ाई जा सके कि जनता हमें जो विजन देती है उस विजन को अगर हम पूरा न कर पाए तो जनता उस विजन को पूरा न कर पाने पे उसका जवाब मांग सके, हिसाब मांग सके, और उसमें जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी उसका एक हिस्सा रहे। इस तरह की एक व्यवस्था बनने की जरूरत है कि अकाउंटेबिलिटी शुड फॉलो not only on the mayor, not only on the local body, but also on officers and everyone. Everyone is a single entity as far as providing solutions to the problems of the city is concerned. How does that accountability emerge in our cities? How do we feel responsible to our citizens? How do we become more engaged with our community? जिससे कि local context पे आधारित शहरों के जो खास उनकी ज़रूरतें होती है, सभी शहरों की अलग होती है, उनके हिसाब से काम हो सके। तो इसके लिए आज ये चर्चा सत्र आयोजित किया गया है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इसके लिए हमें सिर्फ इतना कहूँगा कि ओरिजिनल थिंकिंग की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ वही पुराने लिटरेचर से घिसे पिटे अपने आइडियाज़ अगर हम शेयर करते रहेंगे तो शायद उससे हम आगे नहीं जा पाएंगे। हमारे देश के लिए और साउथ एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए मॉडल्स तैयार करने की जवाबदारी एक तरह से भारत पे है। U20 का दायित्व हमारे ऊपर होने के कारण से ये हमारे ऊपर अपॉर्चुनिटी है कि हम वो मॉडल्स विकसित कर सकें और आगे होने वाले इस अर्बनाइजेशन को, जो इस पूरे विश्व के इस भाग में होने वाला है, इसको हम लोग अपना योगदान दे सकें। यहाँ जो भी बातें की जाएंगी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बातें U20 के फाइनल डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होंगी और वो G20 के फाइनल एजेंडा में जाएंगी, जिससे कि हम ग्लोबल अर्बन डेवलपमेंट को प्रभावित कर पाएंगे। आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी क्रम में ससम्मान आमंत्रित करने जा रही हूँ श्रद्धेय नीरज मंडलोई जी, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग को ससम्मान आमंत्रित हैं। श्रद्धेय नीरज मंडलोई जी। इंदौर में आयोजित G20 के महाकुंभ की एक आहुति के रूप में शहरी U20 का एक ये महत्वपूर्ण सम्मेलन में पधारे बाहर से आए महापौरगण, हमारा शहर का नेतृत्व कर रहे सांसद जी और महापौर जी, उनके सभी परिषद के साथीगण, हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अधिकारी, विशेषज्ञ और सभी गणमान्य अतिथि जो आज यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 के आयोजन को एक इंटेलेक्चुअल गतिविधि से बदलकर एक देश में पूरी तरह एक विचार मंथन के रूप में इस अपॉर्चुनिटी को हमको दिया है। कई बार कई देशों में ये आयोजन होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में इसको एक अनूठा जन आंदोलन जैसा बनाया गया है। और मैं इस अवसर पर भारत सरकार आवास मंत्रालय को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इसी अपॉर्चुनिटी को लेते हुए शहरों पे फोकस करते हुए
एक U20 नाम की जो शहरी 20 के नाम से एक सब इवेंट्स जो लगातार सीरीज चल रही है, उसमें AIILSG जैसी संस्था को जोड़ा। AIILSG के सभी पदाधिकारी, फाटक सर, DP सर और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, गारू जी, मैं उनका भी आभार करता हूँ, क्योंकि दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में जब हम और महापौर जी गए थे तो देखा कि वाकई इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसमें जो बातें होती हैं उससे सीखने को मिलता है और एक दिशा मिलती है कि लौट के आके अपने अपने शहर में हम कैसे बेहतर काम कर सकें। आज की जो कार्यशाला है एक दिन की, इसका मुख्य फोकस रीइन्वेंटिंग अर्बन गवर्नेंस है। रीइन्वेंटिंग इसलिए कि शहर हमेशा से रहे हैं, लेकिन उनकी बढ़ोतरी अब एक ऐसे विस्फोटक गति पर पहुंच गई है कि अब हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम सब ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, भारत गांवों का देश है, 90% आबादी हमारी गांव में बसती है। अपने जीवन काल में हम इसको बदलता हुआ देख रहे हैं और अब भारत गांव के देश से शहरों का देश बनने जा रहा है। ये शहर अच्छे रहें, व्यवस्थित रहें, हर दृष्टि से सक्षम, सुदृढ़ रहें, इसके लिए एक और जहां प्राइवेट इनिशिएटिव, लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी मेहनत, उनके आइडियाज़, वो तो अपनी जगह होगा ही, और कोई भी देश निजी सेक्टर के साथ ही कदम बढ़ाते हुए आगे चलता है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की। तो जब गवर्नेंस की बात होती है शहरों की, तो 3-4 ऐसे मुद्दे बार बार घूम के वही आते हैं। यदि हम यहाँ आज इस छत के नीचे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं जो पॉलिसी और दिशा लेकर आते हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं जो उस दिशा को क्रियान्वित करने में मदद करते हैं, और बहुत सारा संशोधन, सुधार, डेटा ड्रिवन फीडबैक प्राप्त होता है। मैं यहाँ फोकस करना चाहूँगा 3-4 विषयों पे जो अर्बन गवर्नेंस में हमारे सामने बार बार घूम के आते हैं, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी जिस पर इंगित किया है। इंक्लूसिव गवर्नेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक ऐसा मंत्र है जो हमेशा हमको दिशा दिखाता है, चाहे वो गांधी जी का तिलिस्मीन हो या हमारे मार्गदर्शी सिद्धांत हों। हमेशा हमको ये सोचना होता है कि कैसे हम उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, इस प्रकार के जो पूरा सेक्टर है सोसाइटी का, उनको साथ लेकर शहरों का विकास करें। शहरों का केवल विकास चमचमाती कारें और ऊंची भव्य बिल्डिंग्स नहीं है। शहरों का विकास है गरीबों के लिए आवास, सभी के लिए स्वच्छ पानी, रोजगार के अवसर, लोक यातायात, ये सब चीज़ों का ध्यान हमेशा हर पॉलिसी में रखना होता है। इंक्लूसिव गवर्नेंस, मैं सोचता हूँ रीइन्वेंटिंग अर्बन गवर्नेंस की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में हमेशा होना चाहिए कि हम जो भी कदम उठाएं, कैसे वो एक गरीब व्यक्ति को, कतार में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति पर इस पॉलिसी का क्या असर होगा। दूसरा जो पॉइंट मैं सोचता हूँ, जैसे जैसे विकास होते जा रहा है और तेज गति से न सिर्फ ज़मीनों के मूल्य, जबकि निकायों के खर्चे, उनके आंकड़े भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमें हमारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाते हुए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये 2 चीज़ें जो आती हैं, ये बार बार घूम के आती हैं। राज्य स्तर पर और भारत सरकार स्तर पर जो संस्थाएं होती हैं, उनके बड़े स्थापित सिद्धांत हैं इन चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में हमने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जो किसी भी केंद्रीय या राज्य स्तर के बड़े संस्थान, विभाग या मंत्रालय से कम नहीं हैं। चाहे वो 100% ई टेंडरिंग हो, चाहे वो 100% ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट हो, चाहे वो बड़े बड़ी परियोजनाओं का इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस ऑडिट हो, थर्ड पार्टी ऑडिट हो, गुणवत्ता की बात हो, ये चीज़ों का और पब्लिक डोमेन में चीज़ों को रखते हुए हमारे पास लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, जिसमें यदि निर्धारित समय में वो सेवा न दी गई तो हम उसको दंडित भी करते हैं। उसको डीम्ड परमिशंस का प्रावधान इफेक्टिवली लागू है कि जब आवेदन के बाद वो अवधि समाप्त हो जाती है तो ऑटोमेटिकली
अनुमति जनरेट होके डिजिटली साइंड मिल जाती है, जिसमें ये अंतर नहीं होता कि ये डीम्ड है या वास्तव में जारी की गई है। इस प्रकार के जो इंटरवेंशंस हैं ये हमको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ओर ले जाते हैं। और इसमें तीसरा बिंदु है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के बिना अब ये गवर्नेंस अच्छा नहीं हो सकता। कई बार हम लोग ये सोचते हैं, और इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड से सोचते हैं, कि जब हमारा बजट 100 करोड़ था तो हमारे पास 4 डिप्टी कमिश्नर थे, अब हमारा बजट 1000 करोड़ का है तो हमको 40 चाहिए। ये गलत सोच है। हमको 40 नहीं चाहिए, उन 4 से ही काम चलेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी इसको इनेबल करेगी। तो मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण फोकस रहता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको ये सारी सुविधाओं और इस चैलेंज को अटेंड करना है। फिर मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ पिछले 5 सालों से ई नगर पालिका के नाम से एक सुविधा चल रही है, जिसमें शहरों की 26 सेवाओं को 100% ऑनलाइन किया गया है। बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे राज्यों में ये प्रयास किए गए, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में ये 100% 5 साल से सभी निकायों में इफेक्टिवली चल रही है। और सैकड़ों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन उसमें होता है, चाहे वो फीस शुल्क के बारे में हो, विभिन्न प्रकार के नवीनीकरण हो, और सभी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस हो। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नक्शे पास करने का और लेआउट अप्रूव करने का सिस्टम पिछले 3 सालों में डेवलप किया है, जिसको ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल और ऑटोमेटिक लेआउट प्लान अप्रूवल के नाम से चालू है। वो भी ह्यूमन इंटरवेंशन फ्री है, और उसमें आप जानते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। यदि 20 मीटर रोड होगी तो इतनी हाइट मिलेगी, 30 मीटर रोड होगी तो इतना छोड़ना पड़ेगा, इतना ग्राउंड कवरेज, इतना FAR, इतना लैंड यूज। GIS टेक्नोलॉजी और रूल्स के माध्यम से इंटीग्रेट करते हुए आज मध्य प्रदेश के सभी शहर गर्व के साथ ही कह सकते हैं कि हम इस ऑनलाइन नक्शे पास करने के मॉड्यूल को 3 साल से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और अब हमारे सारे एप्लीकेशन उसी के माध्यम से डिलीवर होते हैं। ये स्टार्ट है, लेकिन इसका आगे बहुत ज्यादा काम अभी बाकी है। इन सबको चुनौतियों को एक छत के नीचे यदि रखें तो जैसा मैंने कहा, इंक्लूसिव गवर्नेंस यानी कमजोर वर्ग तबके को भी शामिल करने वाला जो हमारे एक दिशा रहती है, वैसा ही एक ऑल एनकम्पासिंग दिशा है। वो है जिसकी ओर कुणाल जी ने भी इशारा किया, सस्टेनेबिलिटी। पर्यावरण का हम केवल अब शब्दों में नहीं, आज हम सब समझने लगे हैं। बहुत समय से ये बात चलती है, और शुरू में हम सबको लगता था कि ये एक लिप सर्विस है। हाँ, पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, कुछ पर्यावरण की बातें होंगी, लेकिन पिछले 10-15 सालों में हमारे सामने ही इसके दुष्परिणाम, इसकी चुनौतियां और इसके लाभ, तीनों चीज देखने को मिली हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पिलर अर्बन गवर्नेंस का यह होना चाहिए कि हमें सजग होना है। थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी होती है तो अध्ययन भी करना पड़ता है, जानकारी सही होना चाहिए, सही अप्रोचेस के बारे में। लेकिन जो भी हम काम करें, जो भी पॉलिसी प्रोजेक्ट बनाएं, जिस भी कार्यक्रम को हाथ में लें, उसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंस एंड मिटिगेशन, इस प्रकार की चीजों में यदि हम खुद न करें तो विशेषज्ञों की सहायता से या जिन्होंने हमसे बेहतर किया है उनसे सीख कर इस काम को करें। ये काम अब और अधिक इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कार्यक्रम सिर्फ वृक्ष लगाने तक या खुली भूमि छोड़ने तक सीमित नहीं है, हमारी हर गतिविधि में अब ये शामिल हो गया है। आप लोगों के टेबल पे जो कांच की बोतल रखी गई है पानी की, ये प्लास्टिक की बोतलों को आज से 3 साल पहले रिप्लेस हुआ है जो दिखता था। ये इंदौर के स्वच्छ भारत का भी परिणाम है कि इंदौर तो अपने आप में जीरो वेस्ट इवेंट करता ही है, परंतु ये अब हमारी दिनचर्या में आ रहा है। इस प्रकार डिस्पोजेबल चीजें और जो स्वच्छ भारत के कंपोनेंट्स हैं, रीयूज, रिसाइकिल, इन सब की ओर फोकस बढ़ेगा तो हम पर्यावरण के लिए भी अपनी जिम्मेदारी उतनी ही गंभीरता से पूरी कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश शासन अपने सभी कंपोनेंट्स में इन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मैं एक कमजोरी या कमी की ओर भी ध्यान बताऊंगा। मेरा अनुभव यह रहा है कि हम लोग जिस एक चीज में अभी तक
सफल नहीं हो पाए हैं वो है हमारी खुद की क्षमता वृद्धि करना। हमारी कैपेसिटी, हमारी खुद की क्षमता इन चीज़ों को डिलीवर करने में अभी उतनी अच्छी नहीं है। चाहे वो छोटा नगरीय निकाय हो, बड़ा नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, महानगर पालिका हो, उनके पास इस प्रकार की चुनौतियों को और एक साथ ये सब चीज़ें आती हैं। यहाँ जितने अर्बन एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं वो जानते हैं कि कितना टफ दिन होता है और सुबह से शाम तक एक तरह से जिसको हम कहते हैं फायर फाइटिंग में ही दिन निकलता है। आज ये क्राइसिस आया, आज ये बड़ी चीज़ आई, वो चीज़ आई। तो हमारे पास ये कैपेसिटी होना चाहिए कि हम मल्टीटास्किंग करें, हमारे पास ऐसी टीम्स हों जो इन सब चीज़ों पर साथ साथ काम करें और आप लोगों से दिशा ले, समय समय पर गाइडेंस लें, और वो डिलीवरी रुकना नहीं चाहिए। अर्जेंट और इमरजेंसी वाले कामों के आड़ में हमको ये कोर वर्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरा आज यहाँ सभी अर्बन प्रैक्टिशनर से ये भी अनुरोध है कि इन चीज़ों की ओर समय निकालना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें लॉन्ग टर्म में हमको, जैसा बताया गया, एक उन्नत, सुदृढ़, सक्षम अर्बन डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगी। मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, U20 के पूरे सीरीज ऑफ इवेंट के माध्यम से और अंततः G20 में भारत की प्रेसिडेंसी के माध्यम से ये बहुत आशान्वित हूं कि हम इन दिशा की ओर सही कदम से आगे बढ़ रहे हैं। मंजिल अभी दूर है, परंतु हमारा प्रयास ईमानदार है और मुझे लगता है कि हम सबको साथ लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी। मैं एक बार पुनः आयोजकों को इस बहुत ही सारगर्भित, गंभीर शिविर को आयोजित करने के लिए बधाई दूंगा। उन्होंने इतने लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं एक बार पुनः, और उम्मीद करता हूं कि कार्यशाला के साथ साथ इंदौर की स्वच्छता और इंदौर के व्यंजन भी आपका मन मोह लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ससम्मान आमंत्रित करने जा रही हूँ महापौर अहमदाबाद श्रद्धेय किरीट कुमार जे परमार जी को कि वे आए और आज के इस अवसर पर हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। भारतीय शहरों के लिए शहरी सुशासन की पुनर्रचना के कार्यक्रम में उपस्थित जिनका कार्य क्षेत्र यहाँ होते हुए भी जिनका बेनिफिट हमें अहमदाबाद, गुजरात को मिल रहे, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, हमारे यहाँ इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मंच पर उपस्थित इंदौर के भारत सरकार के शहरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री कुमार कुमार जी, इंदौर महानगर पालिका के पदाधिकारी श्री विधायक श्री रमेश जी मंडोला जी, इंदौर कमिश्नर हर्षिराज सिंह, रवि रंजन गुरु जी, मुन्नालाल यादव जी, अन्य मंचस्थ महानुभाव, उपस्थित सभी महानुभाव, इस वर्ष के U20 समिट के शहरी विस्तारों से संबंधित समस्याओं में 6 थीम पर विविध विचारणा के लिए फरवरी महीने में शेरपा समिट का आयोजन जब हमारे अहमदाबाद में हुआ, जब अहमदाबाद शहर के अंदर पूरे दुनिया से आए हुए पदाधिकारी, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए पदाधिकारियों, उन सब ने मिलजुल कर आने वाली समस्याओं को, सबका एक कॉमन टॉपिक, 6 ऐसे कॉमन टॉपिक थे कि आए पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया के महानगरों को छूता था कि अब क्या क्या होने वाला, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सुझाव कर सकते हैं। इस थीम के आधारित आज इंदौर में ये U20 अंतर्गत जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके अंदर इंदौर शहर के द्वारा शहरी सुशासन की पुनर्रचना के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ हम
एकत्र हुए हैं। अहमदाबाद की सुशासन की तरफ सदैव नए कदम लेता रहा है। इस बार के अहमदाबाद शहर में बजट में भी हमने पार्टिसिपेट किया था, यानी पब्लिक से हमने सुझाव मंगाए थे कि आप भी हमारे हिस्सेदार बनो। इस शहर हम सबका शहर है, हम मिलजुल कर इस शहर में अपने नए पब्लिक के सूचनों के आधार पर हम नए बजट बनाएंगे। पहले तो इस U20 अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी द्वारा ये इनकी अध्यक्षता में ये U20 जा रहा है और अहमदाबाद को U20 का चेयर मिला, इसके लिए भी हम गर्व अनुभव हमें भी बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है। कंपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन में तैयार किया गया है। पर अहमदाबाद सिटी आज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी होने के बावजूद भी स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अहमदाबाद शहर हब बन चुका है। एजुकेशन में भी अहमदाबाद सिटी हब बन चुकी है। हेल्थ के लिए भी अहमदाबाद सिटी हब बन चुकी है। यानी परिवहन के लिए भी देखा जाए तो अहमदाबाद में 200 से ज़्यादा बसें इलेक्ट्रिक चल रही है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर यानी 100% सिटी की ट्रांसपोर्टेशन हम इलेक्ट्रिक की ओर जाने वाले हैं। भारत सरकार के मिशन के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कंपार्टमेंट रिट्रेशन सिस्टम तैयार किया गया है। अहमदाबाद सिटी जो डेवलपमेंट हो रही है और U20 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने U20 का चेयर जब अहमदाबाद को दिया है, ये पूरे अहमदाबाद के लिए गर्व की बात है। और जो अर्बन के लिए जो जो काम हो रहा है, चारों ओर जो डेवलप हो रही है सिटी, इसके साथ जो काम हो रहा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी अपना जो काम कर रही है वो यानी इस समिट के लिए काफ़ी कुछ काम कर रही है। U20 के मेयर समिट जुलाई में अहमदाबाद में होगा, जिसमें आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं उस व्यक्तित्व को बुला रही हूँ जिनकी कुशल कार्यशैली इंदौर के विकास का सार्थक प्रयास बन चुकी है, जिनके निर्देशन मार्गदर्शन में, जिनके संबल के साथ इंदौर विकास की नई गाथाओं को लिखता चला जा रहा है और आज स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हुए इंदौर के हर जनमानस को गौरव का अनुभव करवा रहे हैं। वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों की मेजबानी कर स्वयं भी गौरवान्वित हो रहे हैं और हम सबको भी गौरव का अनुभव करा रहे हैं। ऐसे हमारे महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी को ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं। भारत माता की G20 की चेयर समिट के पहले देश भर के महत्वपूर्ण शहरों में से इंदौर में, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है, उसमें आयोजित अर्बन 20 जिन 3 विषयों का डिलिब्रेशन आज दिन भर होगा, उसके उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदौर के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, हमारे आज के विशेष अतिथि अर्बन 20 की चेयर अहमदाबाद के महापौर श्री किरीट कुमार परमार जी, मध्य प्रदेश शासन के अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीरज मंडलोई जी, जॉइंट सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन श्री कुणाल कुमार जी, ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डायरेक्टर जनरल श्री जयराज पाठक जी, इंदौर के लोकप्रिय विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 से श्री रमेश मेंदोला जी, इंदौर नगर निगम के सम्माननीय सभापति श्री मुन्नालाल यादव जी, इंदौर के जिलाधीश श्री इलैया राजा जी
और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन, हम सबके सम्माननीय वरिष्ठ संगठक श्री जयपाल सिंह जी चावड़ा जी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री रवि रंजन गुरु जी, यहाँ हमारे बीच भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, अखिल भारतीय महापौर परिषद की अध्यक्ष और बुरहानपुर की महापौर श्रीमती माधुरी पटेल जी, महाकाल की नगरी उज्जैन से पधारे महापौर श्री मुकेश टटवाल जी, अन्य सभी सम्माननीय महापौर, देश भर के अलग अलग शहरों के नगरीय निकायों के कमिश्नर, स्मार्ट सिटी के सीईओज, इंदौर नगर निगम की कमिश्नर हर्षिका सिंह जी, और इस कार्यक्रम को इंदौर में लाने के लिए प्रेरित करने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक वानखेड़े जी। दिल्ली के कार्यक्रम में जब हमने अर्बन डेवलपमेंट के, अर्बन गवर्नेंस के कई सारे विषयों पर विचार विमर्श किया, तो एक विचार ये आया कि इंदौर में भी U20 के विषयों पर विचार विमर्श हो, और वो इसलिए हो कि इंदौर U20 का सदस्य है। इंदौर देश का एक ऐसा शहर है जो G20 की 6 थीम्स पर लगातार काम भी कर रहा है और देश के अन्य शहरों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए देश भर से पधारे सभी डेलीगेट्स का मैं माँ अहिल्या की नगरी में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्मस्थली में अपनी ओर से और अपनी पूरी MIC और पार्षद साथियों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन सब विषयों पे हम दिन भर गंभीरता से बात करेंगे। आज के कार्यक्रम के अतिथि और वक्ताओं ने भी इन सब चीज़ों पे बहुत गंभीरता से बात रखी है, चाहे वो अर्बन प्लानिंग को लेकर हो, अर्बन डेवलपमेंट को लेकर हो, रीइन्वेंटिंग अर्बन गवर्नेंस को लेकर हो, डिजिटलाइजेशन को लेकर हो। लेकिन इन तीनों में से एक ऐसा विषय है जो आज हम दिन भर चर्चा करेंगे, वो है चैंपियनिंग लोकल स्ट्रेंथ। और मुझे लगता है कि ये जो एक विषय है, ये बाकी 5 विषयों को अपने आप मजबूत करेगा, और इंदौर देश में उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने अपनी स्वच्छता की स्ट्रेंथ पर, स्वच्छता की ताकत पर सारी चीज़ों को अपने आप आकर्षित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने NRI समिट में इंदौर में कहा था कि इंदौर एक दौर है, और तात्पर्य ये था कि जब देश भर में अन्य जगहों के पर किसी काम को करने के बारे में सोचा जाता है, इंदौर वो काम कर चुका होता है। और ऐसा उन्होंने इसलिए भी कहा था कि अगर हम अपनी किसी एक लोकल ताकत को, किसी एक विषय को स्ट्रेंथन करेंगे तो अपने आप चीज़ें स्ट्रेंथन होंगी। 2050 में देश की आधी आबादी शहरों में रहने वाली है। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले तक अर्बनाइजेशन के लिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे, अर्बनाइजेशन के लिए हम नए विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस खोलने की बात करते थे, अर्बनाइजेशन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर शहरों को विकसित करने की बात करते थे। लेकिन इंदौर अब एक ऐसा उदाहरण है जिसने केवल शहर को साफ रख के दुनिया भर के एक्सपोर्ट को, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट को और दुनिया भर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को अपने आप इंदौर में आकर्षित किया है। तो एक अकेली हमारी लोकल स्ट्रेंथ हर प्रकार के डेवलपमेंट को आकर्षित कर रही है। तो मुझे लगता है कि G20 और अर्बन 20 में हम अगर एक किसी विषय को या कोई एक नगरीय निकाय अपनी एक किसी खूबी को पूरी ताकत से आगे बढ़ाए, होलिस्टिक अप्रोच लेकर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हों या गवर्नेंस एट डोर स्टेप की बात हो, अपने आप इन उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए स्वच्छता के इस मॉडल में एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।
कि स्वच्छता के इस मॉडल ने इंदौर की जो ब्रांड इमेज बनाई है वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम करती है। इंदौर की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 70 किलोमीटर दूर मां नर्मदा से पानी को लिफ्ट करके इंदौर लाया जाता है और जिसका लगभग खर्चा 300 करोड़ रुपए साल का है। उसको कम करने की दृष्टि से जब हमने ये सोचा कि क्यों ना वहाँ सोलर प्लांट लगाया जाए, तो उस सोलर प्लांट को लगाने की भी कीमत लगभग 305 करोड़ थी। तो हमने ये तय किया कि इंदौर देश की पहली नगर निगम बनेगा जो ग्रीन बॉन्ड्स लेकर आएगा, जनता से पैसे लेकर बॉन्ड इशू करके इस सोलर प्लांट को लगाएगा। यहाँ तक तो हम देश में पहले रहे, लेकिन जब इस पूरे बॉन्ड का हमने स्टडी किया और जब उसकी फाइनल रिपोर्ट्स आई तो 250 करोड़ के बदले हमको 721 करोड़ मिले और ये 721 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले केवल इंदौर के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, देश के 28 राज्यों से लोगों ने इंदौर में इन्वेस्ट किया है, इंदौर के विकास के लिए इन्वेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक छोटी सी स्वच्छता के मॉडल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और इंदौर डिजिटली भी अपने फुटप्रिंट्स पूरे देश में 2 एग्जाम्पल से छोड़ रहा है। हम अभी संभवतः देश की पहली अर्बन लोकल बॉडी बने हैं जिसने पेपरलेस और डिजिटल बजट अपना पेश किया है और बहुत नहीं 6 लाख रुपए का खर्चा प्रिंटिंग का बचाया, लेकिन कितने पेड़ों को कटने से बचाया इसकी तुलना करना या इसका कैलकुलेशन करना हम सब के विचार से परे है। और शहर की चाहे ओवरहेड लाइनिंग हो या अंडरग्राउंड लाइनिंग है, इसका पूरा डिजिटल मैपिंग करने का काम भी हमने किया है। ई नगर पालिका का उदाहरण मंडलोई जी ने दिया ही था, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिस पर लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी और मध्य प्रदेश की अन्य नगरीय निकाय जैसे भोपाल में उन्होंने स्वयं का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको वो यूज़ भी कर रहे हैं। तो डिजिटली शहर को चलाने के लिए, नए तरीकों को अपनाने के लिए ये हाई टाइम है। और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण आने वाले 3 सालों तक जिसकी अध्यक्षता हमारे पास रहने वाली है, चाहे वो U20 हो, Y20 के डेलीगेट्स भी यहाँ हैं, वो भी इन सब विषयों पे आज अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में इन सब विषयों पे U20 के पहले, G20 के पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पहले से ही अलग अलग विषयों पे बहुत गंभीरता से अध्ययन भी होता रहा, चिंतन भी होता रहा। इसी कारण से देश की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल है, देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है और देश का सबसे साफ शहर इंदौर है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, उनका विजन और उनका मिशन रहा है। और इंदौर U20 के इन 3 विषयों के डेलिब्रेशन का स्थान बना, उसके लिए मैं ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और उनके सभी पदाधिकारियों को, साथ ही देश भर से पधारे सभी स्कॉलर्स को, डेलीगेट्स को पुनः बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ, अपनी गरिमा में उपस्थिति से हम सबको गौरव प्रदान कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी सांसद महोदय को। आप ससम्मान आमंत्रित हैं। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित अहमदाबाद के मेयर, जो कि मेरे मित्र भी हैं और जब मैं चुनाव में गया था तो उनसे मिला भी था, उनके बारे में जानकारी भी ली थी, ऐसे आदरणीय किरीट कुमार जी परमार जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय महापौर, युवा महापौर, और जिनके नेतृत्व में इंदौर नवाचार कर रहा है,
ऐसे पुष्पमित्र भार्गव जी, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, और इंदौर में जिस प्रकार विकास की नई गाथा हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, ऐसे हमारे जयपाल सिंह चावड़ा जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की कायाकल्प कर दिया, विधानसभा 2 के विधायक हमारे रमेश मेंदोला जी, सभापति आदरणीय मुन्ना लाल यादव जी, हमारे इस विभाग के पीएस जो कि पूर्व में इंदौर में काफ़ी समय रहे हैं, नगर निगम कमिश्नर भी रहे हैं, वर्तमान में पीएस है, आदरणीय नीरज मंडलोई जी, मेरे मित्र जो कि शहरी विकास मंत्रालय से दिल्ली से आए हैं और जो हमेशा हमें दिल्ली में जिस मंत्रालय की मैं कमेटी में हूँ उसमें हमेशा हमारा साथ देते हैं, ऐसे हमारे कुणाल कुमार जी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं हाउसिंग अर्बन में, इंदौर के जिलाधीश महोदय इलियास टी राजा जी, आदरणीय पाठक जी जो कि डायरेक्टर हैं इस पूरे अभियान को चलाने में साथ में हैं, रवि रंजन गौर जी, रुचिका जी, और इंदौर नगर निगम की जो हमारी कमिश्नर है रुचिका सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी शहरों से, अन्य शहरों से आए हमारे महापौर जी, अधिकारीगण, मेरे दिल्ली से मित्र आए अशोक वानखेड़े जी, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले ये हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 का अध्यक्षीय भारत को मिला है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम ताली बजा के स्वागत करें कि हमें गौरव मिला है देश को कि G20 जी की अध्यक्षता करते हुए। देखिए G20 के सम्मेलन पहले भी हुआ करते थे, लेकिन देश में कभी ये मालूम नहीं पड़ता था कि G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि G20 जैसा महत्वपूर्ण सम्मेलन, अब बताइए हमको लगता है कि इसमें 20 देश हैं, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 75% पॉपुलेशन G20 देशों में आती है, 75%, यानी एक मेजर एरिया वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन 75% G20 देशों में आती है। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो 80% इकोनॉमी G20 देशों में है, यानी एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन है G20 जिसकी अध्यक्षता भारत को करने को मिल रही है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है भारत के लिए। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि जैसे मैंने बताया कि पहले बहुत सारे सम्मेलन होते थे, अशोक जी अच्छी तरह जानते होंगे, वो बड़े शहरों में होते थे, दिल्ली हो, बम्बई हो या इन मेट्रोपोलिटन सिटी में हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि ये G20 के जितने भी सम्मेलन है, मुझे लगता है 56 से ज़्यादा सिटी, पूरे देश के 56 से ज़्यादा शहरों में G20 के सम्मेलन हो रहा है। हमारे इंदौर में भी पिछले दिनों एक सम्मेलन हुआ था, तो पूरे देश में G20 को लेकर एक वातावरण बना है, और इसलिए बना है कि सबका इसमें योगदान होना चाहिए। और योगदान के साथ साथ जब बाहर से हमारे मेहमान आते हैं G20 देश के, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, उनके लोगों से मिलना, उस शहर को देखना, ये एक मौका मिलता है कि भारत को देखने का मौका G20 देशों को मिलता है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश में G20 के सम्मेलन हो रहे हैं। आज का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमारे अहमदाबाद के महापौर जी ने बताया, इंदौर के महापौर जी ने बताया, शहरी विकास को लेकर ये चिंतन हो रहा है। और जो पूर्व में बैठक हुई थी उसमें 6 विषय लिए गए थे, 6 विषय में से 3 विषय पर तो बेंगलोर में चर्चा हुई और बाकी जो 3 विषय हैं उसमें यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये बात सही है कि पूर्व वक्ताओं ने ये भी बताया, कुणाल ने भी बताया कि जिस प्रकार से शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, और नीरज जी भी बता रहे थे कि पहले हमारा देश ग्रामीण क्षेत्र में बसता था, लेकिन इन वर्षों में तेजी से शहरीकरण हुआ है, और जिस ग्रोथ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस बहुत हमारे सामने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हमको अभी से लगना है। और इसीलिए उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय को विशेष प्रावधान भी दिया है, बजट भी दिया है, और आने वाली चुनौतियों में किस प्रकार हम आगे बढ़ें उसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया है। तो वही कारण है कि आज शहरी विकास मंत्रालय के बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे अमृत हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो,
जितनी भी योजनाएं चल रही कि आने वाले भारत में किस प्रकार हम तेजी से आगे बढ़ें, उसके लिए केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। तो हम आज जो बैठे हैं, जो 3 विषयों को लेकर हम सब बैठेंगे, आज दिन भर चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि जो हमारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जो चुनौतियां आने वाली है, उन चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे और इस पर गहन चिंतन भी होगा। और जो जिस्ट निकलेगा, ये जिस्ट आने वाली G20 की जो बैठक होने वाली है अहमदाबाद में, वहां पर ये रखे जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जो चर्चा होगी। लेकिन ये बात सही है कि शहरी क्षेत्र में चैलेंजेस जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उसको हम कैसे आगे बढ़ें, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, डिजिटल हो। और हमारे इंदौर में तो बहुत सारे, महापौर जी ने जैसे बताया, हम नवाचार कर रहे हैं। हम इंदौर डिजिटल हो गए हैं बहुत तेजी से, और इस बार का तो बजट भी उन्होंने बताया कि डिजिटल हुआ है। हमारा केंद्र का भी बजट इस बार डिजिटल ही था, और हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने भी डिजिटल बजट को देके पढ़ा है। और मुझे लगता है लोकसभा में इस बार जो हुआ था सेशन, उसमें एक भी पेपर नहीं था, पेपरलेस बजट पूरा सेशन था। तो उसमें जो बताया गया 30,000 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने इसी में ही बताया, डिजिटल में। तो जो एक समय था, मुझे भी 15 साल इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने का अनुभव आया, और मैंने देखा था उस समय तो जब डिजिटल हम नहीं थे, तब बड़े बड़े रजिस्टर हुआ करते थे और उसमें एंट्रियां हुआ करती थी, मैन्युअल एरर भी बहुत हुआ करते थे। और अगर कुछ पब्लिक के ग्रीवेंस रहते थे तो उसको वह नगर निगम में आना पड़ता था और उनकी समस्या बताना पड़ता था। तो डिजिटल युग में हम बहुत आगे बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि ये डिजिटल युग में और हम कैसे लोगों को बेहतर सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि अब ये समय है कि हमको लोगों की जो आवश्यकता है उस पर ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें। और मुझे लगता है कि ये डिजिटल एक अच्छा माध्यम है, और जो नवाचार केंद्र सरकार कर रही है उसमें अच्छी तरह से हम लोगों की सर्विस पहुंचा सकते हैं। तो मेरा इस अवसर पर मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो एक वर्षन है कि ये अमृत काल चल रहा है, और इस अमृत काल में आने वाले समय में जिस प्रकार देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब ये देश पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी हमारे शहरी क्षेत्रों की। तो आइए हम सब मिलकर इस शहरी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़े और भारत देश का, विश्व का नेतृत्व करे। इसी आशा के साथ इस कार्यशाला की मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को अंतिम सोपान पर ले चलूं, उसके पूर्व हमारे साथ बड़ौदा के महापौर डॉक्टर हितेंद्र पटेल जी हैं। वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंकर लालवानी जी को उनके स्नेह का प्रतीक भेंट करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर हितेंद्र पटेल जी, बड़ौदा महापौर को ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ, और वे भेंट करना चाहते हैं हमारे महापौर जी को भी उनका स्नेह का प्रतीक। तो मैं डॉक्टर हितेंद्र पटेल जी को ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ और उनसे अनुरोध करूंगी कि सर्वप्रथम सांसद महोदय शंकर लालवानी जी को आपके स्नेह का यह प्रतीक भेंट करें। हम जोरदार तालियों से इस स्नेह का स्वागत करें। आपसे अनुरोध है हमारे महापौर जी आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी को भी आपके स्नेह का यह प्रतीक भेंट करने का कष्ट करें। कार्यक्रम के अंतिम सोपान, उद्घाटन सत्र का अंतिम सोपान, आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय रवि रंजन गुरु सर को कि वे आएं और इस दायित्व का निर्वहन करें। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं श्री शंकर लालवानी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से इस कार्यक्रम के लिए अपना टाइम निकाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कृत कुमार परमार जी मेयर अहमदाबाद हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। वो अर्बन 20 के चेयरपर्सन है और इस पूरी जो प्रोग्राम्स चल रहा है उनके चेयरपर्सन में चल रहा है। तो धन्यवाद सर, आप अहमदाबाद से आए, थैंक यू सो मच सर। मैं पुष्यमित्रा जी भार्गव जी का मेयर इंदौर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने अपने भी भाषण में कहा कि इसकी रूपरेखा दिल्ली में तय हुई थी और उन्होंने पूरी हमें मदद की है आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस प्रोग्राम के लिए। मैं श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी जो आईडीए चेयरमैन हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। मैं श्री रमेश मंडलू जी का विधायक जो हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला, थैंक यू सो मच सर।
मैं सभापति मुन्ना लाल जी यादव का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज हमारे इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाया। धन्यवाद सर। मैं श्री नीरज मंडलोई जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला था कि जब हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ जब हमारी पहली मीटिंग हुई, उसके बाद जब हम नीरज मंडलोई सर से मिले तो उन्होंने इमीडिएटली इस प्रोग्राम को हाँक दी और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं श्री कुणाल कुमार जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाउस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं। चूंकि ये अर्बन 20 पूरी की पूरी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के देख रेख में चल रही है, उनके गाइडलाइंस पे चल रही है और उनका जो सपोर्ट इस पूरे प्रोग्राम्स में है वो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आई थिंक उनके इस सपोर्ट के लिए आज ये आज इंदौर में ये प्रोग्राम हो पा रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर सपोर्टिंग दिस प्रोग्राम। मैं श्री इलियाराजा टी जी, कलेक्टर इंदौर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे डायरेक्टर जनरल श्री जयराज पाठक सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरी प्रोग्राम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लीड कर रही है और बिना हमारे डायरेक्टर जनरल के सपोर्ट के इस प्रोग्राम को करना थोड़ा तकलीफ है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर सपोर्ट सर। मैं श्रीमती हर्षिका सिंह, कमिश्नर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैम का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने डे टू डे इस पूरे प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते हुए इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत से इसको पूरी सपोर्ट कर रही हैं। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कर सकता हूं कि आज हमारे पास करीब करीब 250 प्लस डेलीगेट्स हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं और उम्मीद है कि आज शाम तक ये 300 का आंकड़ा पार हो जाएगा। और शहर पूरे दिन इंडिया से लोग आए हैं, महापौर हैं, नगर निगम के अध्यक्ष हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन सब को यहाँ लाना, उनकी व्यवस्था करना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है और अभी तक सारी चीजें स्मूथली हो रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैम आपका। और साथ ही साथ MIC मेंबर्स, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से आपने हमें मदद की है। मैं ऑल्सो मैं थैंक टू NIUA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, हितेश वैद्या जी और उनकी टीम को करना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एजेंडा फाइनलाइजेशन से लेके सारी चीजों की व्यवस्था NIUA ने पूरी सपोर्ट की है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर सपोर्टिंग दिस। ऑल्सो आई लाइक टू थैंक आवर कॉन्वीनर्स UCLG and the C40, because they are the conveners and without their support we can't really organize this kind of a program. So thanks to them. Also like to thank all the really important person who really been supporting us in designing the entire this day program, like MB सिंह सर हैं यहाँ पे, प्रवीण जी हैं, इन सब का बहुत सपोर्ट रहा और शायद ये जो आज का पूरा प्रोग्राम्स होगा उसके लिए हम सब ने काफी इससे पहले डिस्कस किया और इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश की। सो थैंक यू सो मच सर। ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द AIILSG टीम हु हैज बीन प्रोवाइडिंग डे एंड नाइट सपोर्ट टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम। और आज जो भी महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मेयर, कमिश्नर जो पूरी इंडिया से आए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके बिना ये प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता है। आपने अपने अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ आने का कष्ट किया और उनको ऑर्गेनाइज हमें सपोर्ट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ऑल सपोर्ट। सॉरी लिस्ट बहुत लंबी है, टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए अगर कोई गलती से नाम छूट गया तो माफी चाहता हूं, बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ मोर डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन ड्यूरिंग द टेक्निकल सेशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए थोड़ी सी जानकारी है, अभी आप लोगों के लिए टी ब्रेक रहेगा 10 मिनट का। नीचे मेपल्स हॉल फर्स्ट फ्लोर पर टी ब्रेक की व्यवस्था की गई है। उसके पश्चात टेक्निकल सेशन के लिए हम पुनः यहाँ एकत्रित होंगे और हमारा जो द्वितीय टेक्निकल सेशन 2:15 बजे से होना है, उसके साथ हमारा पैरेलल सेशन चलेगा लिकलेक हॉल में, जिसमें डिजिटल अर्बन फ्यूचर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर हम चर्चा करेंगे और हमारे सभी सम्माननीय मंचासीन अतिथियों का एक समूह चित्र होना है। उसके लिए मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आप 4 कदम आगे की ओर आ जाएं और सभी टी ब्रेक के लिए नीचे मेपल्स हॉल में पधारें। शाम को आपके लिए सिटी टूर की भी व्यवस्था की गई है, आप इंदौर सिटी का भ्रमण कर पाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचानी थी।
जागो स्वच्छता का सूरज निकला कोना कोना इस शहर का हो उजला आओ बनाए नंबर 1 फिर से अपना ये इंदौर जागो जागो सूरज निकला कोना कोना इस शहर का हो उजला आओ बनाए सात रंग मिलकर बनाए श्वेत रंग उजियारा सात रंग मिलकर बनाए श्वेत रंग उजियारा स्वच्छता के इस श्वेत रंग से आकार शहर हमारा सतरंगी सपने आंखों में दिल में एक विश्वास निकल पड़े रचने को फिर से एक नया इतिहास मनाए स्वच्छता का त्योहार सातवीं बार छुएगा सातवां आसमान सातवीं बार सात सितारा शहर हमारा जग में सबसे निराला सात सुरों सा सुंदर है इसका हर ताना बाना सात सितारा शहर हमारा जग में सबसे निराला सात सुरों सा सुंदर है इसका हर ताना बाना अहिल्या की नगरी के हैं हम सारे वासी ठान लिया है मन में और पूरी है तैयारी 6 सालों की मेहनत है और जारी अथक प्रयास निकल पड़े रचने को फिर से एक नया इतिहास मनाए स्वच्छता का त्योहार सातवीं बार मनाए स्वच्छता का त्योहार सातवीं बार छुएगा सातवां आसमान सातवीं बार जागो जागो स्वच्छता का सूरज निकला कोना कोना इस शहर का हो उजला आओ बनाए नंबर 1 फिर से अपना ये इंदौर बस्ती चौक चौबारे पूरे शहर से अपना वास्ता बस्ती चौक चौबारे पूरे शहर से अपना वास्ता इन गलियों से होकर गुजरे अपने घर का रास्ता स्वच्छता आदत है अपनी अपना है सम्मान स्वच्छता का अपना परचम अब छुएगा आसमान मनाए स्वच्छता का त्योहार सातवीं बार मनाए स्वच्छता का त्योहार सातवीं बार छुएगा सातवां आसमान सातवीं बार मनाए स्वच्छता का त्योहार सातवीं जागो जागो छुएगा सातवां आसमान सातवीं स्वच्छता का सूरज निकला मनाए स्वच्छता का त्योहार सातवीं कोना कोना छुएगा सातवां आसमान सातवीं इस शहर का हो उजला आओ बनाए नंबर 1 फिर से अपना ये इंदौर जागो जागो स्वच्छता का कोना
सिता का सूरज निकला, कोना कोना इस शहर का हो उजला, आओ बनाए नंबर वन फिर से अपना ये इंदौर। जागो जागो सूरज कोना कोना इस शहर का हो उजला। सात रंग मिलकर बनाए श्वेत रंग उजियारा, सात रंग मिलकर बनाए श्वेत रंग उजियारा।
As we all know, digitalization has become an integral part of urban living and a key factor in transforming governance and public services. And our technical session 1 is based on the theme Catalyzing Digital Urban Future. This session includes some important talking points such as role of data in Indian urban decision making and policy formulation processes. Second, quality of data available and issues of data security as well as privacy. Incubating emerging digital innovations in service delivery through provision of sandbox environment of Indian cities. Accurate urban data and its convergence for other sectoral policies like ease of living, ease of doing business, etc. Role of private-public participation in city data collection, management and analytics. The moderator of this session is Shri Pankaj Sharma. I would like to call upon Pankaj Sharma on the dais. And the keynote speaker of technical session 1 is Shri Pushyamitra Bhargav ji. Okay. I would like to call upon other speakers on the dais. Shri Manpreet Singh ji, Shri Chandar Muthu Krishnan ji, Shri Roshan Tohniwal ji, Shri Pashim Tiwari ji, Now it's time to felicitate our speakers on the dais. For felicitation of Shri Pankaj ji Sharma, I would like to call upon Anirudh Chiyal. Anirudh Chiyal. Thank you, sir. For felicitation of Manpreet Singh ji, I would like to call upon K.R. Sharma. Thank you, sir. For felicitation of Shri Chandar Muthu Krishnan ji, I would like to call upon Harish Sharma. Thank you. For felicitation of Shri Roshan Tohniwal, I would like to call upon Hemadri Raut. Thank you. For felicitation of Shri Pashim Tiwari ji, I would like to call upon Ekansh. तालियों की आवाज नहीं आ रही है. Now I would like to give a brief introduction of the moderator of technical session 1, Shri Pankaj ji Sharma. He is a regional led CDG, National Institute of Urban Affairs.
He has been actively involved in driving technology-led transformation in the government sector. He holds the key positions in various government technological organizations like NASSCOM, PwC, and has been instrumental in designing and implementing technology solutions for government entities. Now I would like to hand over the mic to Pankaj Ji Sharma for giving the introduction of other speakers. Thank you. Good afternoon. I know our session is between tea and lunch, so we'll try to keep it as interactive as possible, and we'll try to keep our interactions with you in bite-sized so that you can consume it easily. On my left is Mr. Chandar Muthukrishnan, correct? He comes from E-Governance Foundation. It's a NGO that has been involved with creating digital interventions in the field of health, urban, financial, PFMS, and all things involved with government. And he's followed by Mr. Manpreet Singh. He leads the Center for Digital Governance at NIUA, and he has been instrumental in signing off 28 MOUs with the states, specifically for urban digital governance in India. And Pashim is a technical director with AIILSG and has been involved with NIUA and also CDG in creating certain state-of-the-art documents and standards and guiding us in many other initiatives. And last but not the least is Roshan. Roshan comes from Ola Mobility Initiative, right, Foundation. He's an expert, he's an urban planner and expert on transportation and mobility in city areas. And all of us will share our thoughts on a very important and pertinent subject or track in U20 that is called Catalyzing Urban Digital Futures. The idea of this track is that how should the whole municipal governance transform itself using technology as a rider, right? So what we need to understand, and it comes from experience, is that digital needs to be embraced by all other functions in the government to work more efficiently and bring in more transparency in the system. It has been assumed, like 10 years ago, not very far, that digital creates problems for, governance, or technology creates problems for governance. It creates another layer of work for people who are working or operationally executing certain things on the ground. But what has changed in last 10 years is, with a push from government at the center and many state governments, the whole understanding about digital and how it can help, and thanks from the agencies like E-Government Foundation, that they have sensitized so many people in the country that how technology can actually help them to reduce the burden of the work they are doing, and also improve not only the lives of citizens by bringing in ease of doing business, ease of living, but also lives of the people who are delivering these services by giving them a lot of other time to do, some visionary activities going forward. So I'll start with Chandar now. Chandar has been involved in E-Government Foundation. So I would like to understand the journey E-Government Foundation has done in the urban digital space, and how it has tried to touch and also transform how the governance has been taking place in India. Thanks, Pankaj. Good afternoon, everybody. So like
Pankaj, my name is Chandar. I'm with eGov Foundation. We are an NGO. We are a 20-year-old NGO, and we are focused on building technology to improve ease of living for our citizens across the cities in India. We've been working from the very beginning at the grassroots level on the ground, implementing technology to solve for urban governance challenges. So we started off by building a finance and accounting software which is NMAM compliant, implementing it in Karnataka and multiple cities across the country. And progressively we built more functionality to address property tax and other use cases within the urban governance context. And at some point we realized that technology needs to evolve, and we took the platform approach to build a technology called Digit, which we then implemented in multiple states. So the state of Punjab was an example where Punjab was trying to go down the RFP route several times unsuccessfully. And then we were talking to them saying, we have a technology platform that is going to solve your challenges. And then that got implemented. And in 3 months, we were able to go live with 2 applications across about 100 ULBs in Punjab. So we were able to achieve rollout at scale and speed in Punjab, and that sort of set the tone for further states getting rolled out across the country. The model of the way we work, the model we follow is to build both state capacity and also mobilize market players to participate in the implementation of technology for the ULBs, because we realize that we need everybody to contribute to drive this urban governance challenge. The other step that we also took was to work with the central ministry to adopt Digit as a national platform. So 2 years back, we signed up with NIUA, and NIUA ran a process of picking platforms for their implementation. And Digit was selected as the national platform for urban governance as part of the NUDM. I'll pause there and hand it back to Pankaj. Manpreet, I would like to understand that since Digit was built by eGov Foundation and it was given to or handed over to Mahua to actually scale it up, and both horizontally and also vertically. So I would like to understand the challenges you have faced in building the whole digital ecosystem while you were trying to, reach out to the states and bring the scalability into the whole ecosystem. Thanks, Pankaj. Good afternoon, everyone. I head National Urban Digital Mission in the country, and the challenge with which this mission was started, that the urban service delivery, our honorable mayor talked about the E-Nagar Palika in Madhya Pradesh. That is one of the exemplars in the country, in terms of urban service delivery. But the whole country is not at that level. We see many states, they're still laggards in terms of urban service delivery. So to bring all the urban services in all these smaller cities in the country, this mission was envisaged by Ministry of Housing and Urban Affairs, and we are working towards achieving this objective. Now, coming back to, I was discussing with Pankaj in the morning, what makes this whole digital urban complex. I'll have urban, we are having 8 categories of work. We talk about mobility, transport. We saw BRT in Indore in the morning. We're talking about security, the whole ITMS, the whole traffic management, the whole cameras. 3rd category is healthcare. 4th, water, the whole water pipeline, the whole waste, solid waste management, the whole waste management part of it. Then the energy part. 7th is the whole business, the way business interacts with the city, and 8th, the citizen part of it. So there are 8 layers to any urban domain. Now coming to the digital part, we will have a physical layer. We have our roads, pipelines, water pipes, STPs. Second are sensors or CCTV cameras. 3rd layer is the applications, software, all these layers. 4th is the data layer. So 4 layers around technology, 8 layers on urban subdomains makes it very, very complex. That's where the whole urban digital needs a complete focus. And under National Urban Digital Mission, we are working with the states. We've already onboarded 30 states with whom we are working very closely to make sure that services are delivered online to the citizens. And
under the mission, we have, as Chandan mentioned, we have a common central platform called Upyog, on which states are building applications. पुराने दिन में क्या होता था, हर स्टेट की अपनी अपनी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती थी. We still know all the states, there are 30 birth deaths applications. हर स्टेट की अपनी बर्थ डेथ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है. बट द थिंग्स आर चेंजिंग विद दिस मिशन. वी हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म जिसको हर एक स्टेट अडॉप्ट कर सकती है. उस सर्विस को लॉन्च टाइम ऑलमोस्ट 70% रिड्यूस हो जाएगा जो भी स्टेट सिटी इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करेगी, ताकि ई गवर्नेंस को हम तेजी से पूरे भारतवर्ष में ले जाएं अर्बन एरियाज में. दैट्स द इंटेंट एंड विद व्हिच एनयूडीएम इज बीइंग वर्कड अपॉन. Thank you, Manpreet. We'll just take a break for a couple of seconds to facilitate a dignitary who has just come in among us. तुलसी सिलावट जी हमारे बीच पधार चुके हैं. मैं पुष्य मित्र भार्गव जी से अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें डाइस पे लेकर आए. मैं पुष्य मित्र भार्गव जी और रवि रंजन गुरु जी से अनुरोध करूंगी कि वे तुलसी सिलावट जी का स्वागत करें. धन्यवाद सर. Sir, now continue with the session. Thank you. Thank you. So continuing our discussion, I would like to understand, Pashim, your experiences on how the governance has transformed in the last 10, 20 years, specifically with the local, in the local governments or ULBs, as we call them, and what can data or digital do to continue that transformation or leapfrog, as Mr. Kunal Kumar said in the morning, that we need to change our pace from the current pace to actually leapfrog and get into the next paradigm before we catch up with the urbanization that is happening at such a pace. Thanks, Pankaj. So from AIILSG's perspective, I think, as a Director General also said, we have been here since 1926 and we have seen, multiple phases of the governance paradigm shift over these last, 90 years or so. But I think I'll pinpoint three particular issues where, digital pipelines, data can change governance, and what we have seen being changed in the last 20 years very, very rapidly. And the first aspect is the acquisition of data and its processing at three levels of government. So this is the first important point. Earlier, if you see, we used to have a 5-year plan, of development in India. And one of the reasons was that to communicate the information, what is happening on the ground in the city, to the center and creating a policy around it and then implementing again took a lot of time. Today, I think we have an option, we have a possibility with this kind of a pipe to have a yearly action plan rather than a 5-yearly action plan. So that's the first thing. You have a speed by which you can change your policies, you can, transform your governance models faster. And this is required also because today the markets are changing much, much faster. You have challenges which are being cropping up in every city due to climate, due to environment, due to even economic issues much faster. So one has to adapt, one has to respond to them much, much faster. There has to be an agile system, and that I think data can do much, much better. The second issue which is there and which has always been there and I think was enumerated in the first session was also the capacity. The capacity of the city to transform itself is
limited because of the fact that the knowledge and the learning does not percolate that well. Secondly, our federal system is such that there are challenges which are inherent in the system because of the tenures and other issues which are there, which means to maintain continuity within the system, there has to be a very rapid capacity enhancement of people both on the public representative side as well as the executive side. And they have to be on the same page also. And that generally there is a mismatch which has been seen over a period of time, and this can be enhanced by tools like NULP, NUDM is looking at, and other such tools which every government is doing. So that is the second aspect which is there. And the third aspect which I think what we can look at is the financing, or the the issues which are related to the money flow. Today, I think this data and this digitization can actually increase both aspects. One is the efficiency of the existing resource which is available, but the second is acquisition of newer resource, which is also very important. So both these aspects, whether it is through PPP, whether it is through World Bank, whether it is through, every one of them wants viability of projects. And if you are able to showcase viability of project through digital tools or correct tools which are there, especially in terms of hard data which can be verified, then it is much faster process and much easier process. So all these three aspects is what we have seen through AIILSG, I mean what we have been doing and what we have seen on ground, that governance can be transformed through these, through digitization. Thanks. Thanks, Praship. I'll get back to you in this next round again. So, Roshan, on since you come from the transportation background, like Pashan said, that we are in the agile mode now. Yeah. So our transportation and mobility has to catch up. We are still traveling in same old diesel-driven buses for last maybe 100 years, right? Maybe the speed has increased in some areas, but our medium has been very slow. While we are trying to be agile using data, digitalization, and other things. So I want to understand from you that what is OMI's understanding about how transformation or transportation sector can change or leapfrog itself to meet the demands of the newer cities that are coming up? Better. Yeah, thanks. Thanks, Pankaj. We at OMI Foundation, so as everybody knows anyway, that Ola was one of the few companies that started off in the digital space and is still, working towards a lot of digitization in mobility. So we, OMI Foundation is a non-profit, again, coming under or established by the ANI Technology, which is the parent company of Ola. And we started off with something called an ease of moving index, where we wanted to sort of look at how easily can people move from place A to B in a city, and what are the key pain points around it. So like you said, this whole digital transformation is also driven by that smartphone. And you look at it in our survey, we found that 39 of the 40 cities have over 95%. 95% people have a smartphone, and that's a very powerful medium through which you can communicate. Right now, like you said, public transport as a sector or as a service is not being as digitized, and the information is not as digitized as it should be. Ideally, you have so many social networking sites through which you can market and communicate to people. You'll find that the people, including students and the most of the educated client, are probably not even aware that when and what time their bus could come. Application is a later aspect. I mean, of course, people should know that, okay, there are, so-and-so bus numbers also. And like you said, and Kunal sir had also mentioned about adoption of a cleaner way of living with the mission life.
this has to be integrated. The digital medium has to be integrated to those aspects. Convergence of various missions that we are talking about, and that overall impact that it can have from from the economic benefit, the financial benefit that can unlock from this whole process needs to be brought in. So in one of our indicators in the ease of moving was, or rather parameter was the future mobility, in which we primarily focused on two aspects. One was on the cashless payment in mobility services, and the other aspects was on usage of applications, or number of applications that these citizens have for different needs. Not more than 25% of the people in all these cities have, usage of delivery apps, which are most common. Almost every city, everybody who has a smartphone has a delivery app, whether it is a Zomato, Swiggy, or any of that. And, about over 80% of the people we saw that had application of ride-hailing apps, So I'm not saying, so it sort of is, mobility is sort of digitized now. And specifically, why mobility should be digitized is, if cities are engines of economic growth, mobility sets that pace. I don't mean to say that, the congestion is a pain point. We've seen that if you have information, there is congestion in a particular zone of the city, you'll probably avoid that. Earlier, the mode of communication was the radio. You would sit in your car and hear out the radio, or you would sit in the bus and hear out the radio and know that, okay, this is a change. But can you start making decision based on these information that is being relayed, and change the course of mobility in the city? That's what I wanted. Thank you. I completely understand your point and buy it that the information that has to be real time, if it can be given to the driver or person, the commuter, that changes the whole way the city moves itself, right? So Chandar, I would like to understand, there are two keywords which I keep on hearing from E-Governance Foundation, and it is also rightly captured almost everywhere in the G20, are digital public goods and digital public infrastructure. Since E-Governance Foundation has been spearheading, or if I can say, are deeply involved in creating these two itself, I would like to understand how important or what role they have played, or what role they can play in the whole urban sector per se going forward. Sure. I think the first benefit of an open source of DPG, digital public good, is it's open source. And what that means is it is available completely free for any city or ULB that wants to implement technology to address urban governance challenges. The lingo kind of gets confusing, DPG and DPI. So DPG is open source software. DPI is digital public infrastructure. If you take the software and implement it in a specific context, it becomes a DPI. So digit is a DPG, Upyog is a DPI. It could be one way of looking at it, right? But I also want to spend some time on the benefits of digitization versus digitalization and things like that. A lot of cities have done digitization. We heard about Nagar Palika some time back. And in many places, what's happened is there's a problem to be solved and somebody goes and solves it, builds an application. There's some other problem in the city, they build another application. So you end up with a number of different applications, and each of these applications have their own user ID, password. The ULB employees have to remember multiple sets of user ID, password. Citizens have to remember different sets of credentials. The data is also stored separately in these applications. Data is often duplicated, and it becomes really difficult for administrator to aggregate data across these different applications and provide meaningful insights and reports up. This is one of the challenges. So I think there is a need for this to be completely transformed in the way applications are built. So that is one part of what I want to cover. The second is, there's also, in many cases, what people do is the process is still manual,
End of day, people enter data into the system and they say it is digitization. But the whole process needs to become digital, which means that every user persona who's using the system needs to come on a digital platform and sort of provide their respective inputs. And this is how capacity also gets built. People have apprehension of using technology. Like Roshan just said, 95% citizens have smartphones. So people are used to some form of application usage on their respective smartphones. So it's a matter of just training people to overcome their apprehensions in some cases and use technology to solve some of these urban services challenges. The second part is this data fragmentation needs to be overcome. And the approach that we've proposed and we've implemented in many states is to go with shared data registries. So at the core of the urban governance platform, there needs to be a set of shared data registries. And on top of that, you have a number of core services, core application services. And this could be some examples of core services could be a user management service. Every application needs to manage users, so there needs to be a common user management service so that when you build multiple apps on top, they all leverage the same user management. So when I log in as a citizen, I get to see multiple applications in my same login. If I'm a ULB employee, I get to see all the application services that me as an employee provide citizens in the same credential that I log into. So it just makes life easier for the various system users. So the other benefit is, if you look at cities, property is like a fundamental building block. So one of the fundamental registries is a property registry. And if you link everything to a property registry, for example, a water connection, a sewerage connection, a building plan application, a building plan approval, an occupancy certificate, a trade license application. So all of these are multiple examples of applications that you could potentially link to your property ID, which is fundamental, right? And you have multiple apps that cover these different services that are offered to citizens. You may have public grievances that you want to raise. You can link it to a geolocation or a property. मेरे घर के बाहर street light जल नहीं रहा है. So you can link it to that specific property ID or a geolocation and then log that complaint and somebody responds to it. So all of this so it makes life easy for the citizen. For the employee on the ULB side, it makes it again easier because they have one credential, they get to see all the services that are being delivered, and they can then in one single window take care of that. For the administrators, again, it's easier because all the apps are in one single platform and they're able to look at this shared data and aggregate them up and build dashboards and look at data from these dashboards and then make decisions. This also drives inclusivity. For example, if you're looking at data and seeing that the open complaint list is very high in a certain mohalla or a certain neighborhood in your city, maybe that neighborhood is being deprived of services. So maybe send someone to that neighborhood, provide some better service delivery. If you're seeing collection of property taxes low in a certain neighborhood, maybe do a collection drive in that neighborhood. So you can drive a lot of decisions, be it revenue side or services side, through use of data. That's the other part of it. The other key principle that we should do in the future, I think, is something called the once only principle. And this is something that a lot of European countries are talking about. I think we should lead the way on that. And this basically means that when a citizen comes onto a platform for the first time, they enter the data only once. And thereafter, that same data is being used for multiple applications. And this is possible only if you have an integrated platform like, say, Upyog, where you have shared registries and you can get the registration of citizen done once and then provide them multiple services on top of that platform. So I want to just pause here and hand it back to Pankaj. Thanks, Chandra. I'll take a cue from what Chandra was mentioning on integrated dashboards and single platforms acting like super apps. And I'll go a step further and ask you, Manpreet, about once we create these kind of dashboards, then are we logically moving towards the AI space? And are we moving to the predictive space while cities can maneuver or change themselves to predictively to transform themselves or on the ground to adapt to the changes that are coming? So
That's a very interesting question. So, Chandar, I'll add on to what you mentioned about the grievance redressal. In Punjab, we did exactly the GIS mapping for our grievances management. What came out? One city, Moga, had maximum sewerage issues. One city had issues on the property tax, a lot of issues on the property tax. Another city had issues on water connections. So that's the kind of good value we could derive out of our data management, out of our the whole grievance management, data churning part of it. So that's the beauty, as Pankaj said. Where do we move from here? Now, as I mentioned, digital is complex. It's not only e-governance, it's about sensors, IoTs, it's about getting a lot of data out of those sensors and all. And I'll also add on some challenges which we are facing right now in terms of National Urban Digital Mission. Now, as in the morning, a lot of stakeholders mentioned about multiple sub-stakeholders in a city. Water is separate body, sewerage is separate body, fire NOC is a separate body, law and order is a separate body. So if I have to digitalize the urban space, I need a closed entity at a state level. Now we are heading towards a state urban digital mission. We at Central Government of India, we have National Urban Digital Mission. Now state like UP, recently they went through cabinet, they have constituted a state urban digital mission, which means any urban activity, any urban digital activity needs to go through that. So all the bodies, all the agencies which are part of a city or a state urban linkage will be part of that state urban digital mission. That's where the first challenge will be addressed towards multiple agencies in an urban area. Second, the challenge which we faced, I talked about earlier also, the technology part, the application part. Very classic example, we are working with one state to create an asset management system for one city. Now, earlier that city will keep it to itself, not share it with anybody. Now, as per the mandate of National Urban Digital Mission, any city, any state which will create a system like asset management will have to share it back to us. I or our mission will share it with the remaining 4,000 cities in the country. So gone are the days where multiple applications will be built. Third, on the process part of it. Now, very important, we are working with the states. Now, some of the states, they issued a trade license in 2 days, in 1 day, and they don't ask even a single document, not even a single document. We talk about Andhra, Telangana, submit your GST number, submit your PAN number, you will get provisional certificate immediately on the day. That's what the process change which is happening across the states, and that's what needs to be replicated across the cities. Fourth, on a data front, I was going through multiple reports, RBI, Niti Aayog, World Bank. None of these agencies, they have good data on urban tax revenue, urban non-tax revenue, or for that matter, anything on, any good data on urban. So that's where National Urban Dashboard, which we are building, already 12 states are in progress of implementation. First time in the country, we'll have live property tax data, live non-tax revenue data on our dashboard. We'll be able to compare one state, one cities. For example, I want to compare Punjab's property tax per GDP with Haryana. I'll be able to do on a real-time basis. That's where the National Urban Digital Mission will be, focusing in next 1 year to get that good real-time data on urban scenario. That's what we are working towards. And on AI front, we are collaborating with multiple agencies for building plan approval, for grievance redressals, and we'll see more use cases in AI space and going forward. Yes. Pasham, you talked about capacity building, and you have been engaged in creating certain knowledge standards in the past. So I would like to understand from you, what change do you see knowledge standards will bring in the whole municipal governance as a space? So, standards are the backbone of any, application or any mechanism which you put for governance into place. And I think they have changed a lot over a period of time. And
I should say, one says standards and, it looks like it is going to be cast in stone, but that's not so. Standards are always evolutionary in nature also. In that sense, I would like to say that, any application or any digital tools which we are using is essentially, and as Chanda said, processes are important, is mimicking the physical side of it. It's actually looking at how people behave, how they want to process information, what are the services they want, and then it converts that into a easy process which is digital in nature. So digital tools are not something to be scared of. Like, earlier it used to be. A pencil was also a tool to write, and a computer is also a tool to write, or a cell phone is also a tool to write. It's just the complexity has changed, but that is on the back end. That's not on the front end. The front end, you're still typing the same words or writing the same letters, and you're doing the same processes. And that is, I think, what cities needs to understand fundamentally, that it is not changing your life. Your life is staying the same. It is just helping it achieve your goals faster. That's the concept. And, I'm trying to break it up very simply. So standards are a first step where you find out what are the processes, what are the identifiers, what are the key performance indicators within a process or a space. And that then leads to individually every person, every city finding their space. They are allowed to have changes within the system. So like Upyog, and I think Manpreet said 70% of your work is done, but 40% is in your hand. You can change the way the processes happen. You can control the way it looks, it feels, and it delivers. And that is, I think, the most important bit, and one has to imbibe and be able to accept that. So that's one aspect which I'm saying. And I think the other aspect which is important in this, and which I think Chanda briefly mentioned, was inclusivity. That is one of the fundamentals which, which digitization can do. It can make everybody equal. That is something which is not available today, especially from the physical infrastructure side of it. Physically, there is a bifurcation, but digitally, there is no bifurcation. Everybody is getting the same application. They can utilize it in the same way. Maybe the process needs to accept that and, do that. There are some challenges in that still there, but it has potentially, potentially it is possible to make everybody equal through that. And one of the other things which I think in the morning, Chanda was discussing, and I think maybe I want to quote. He lives in Bangalore. There is a ward committee meeting which happens every month, but he was not aware of. And that is something which digital processes can actually change. The information gets delivered to everyone. Here I would like to, slightly mention, sometimes we don't state the obviouses, which we take it for granted. Maybe India is one of the few places which would have the 4 sets of key, let's say, identifiers available. So first is your identity, in anything, which is Aadhaar. You have a digital number which states this is this person. This, and sometimes mobile is also replaced, but today mobile and Aadhaar are linked, so you have that. That can give you, the mobile can give you a location, the GPS, where you are at present. And I'm saying only at present. The third is your ability to pay for a service, which is a UPI. That is available today to every citizen in this country. So these 3 things are available, and now the various missions and governments are doing what is called a GIS based master plan available for the first 500 city, which means you can actually track a property, as he said, an identifier through a GIS, that this guy is presently located here. And these 4 sets then can provide any service possible, actually. Because once you have a person, his identity, you have his location,
you have his permanent location, you have his ability to pay, then there is sky's the limit. You can do anything. So Ola works on that, isn't it? I mean, they know exactly where the person is located through the GPS connection, and then is able to provide the service. If these four fundamentals are not available, then you can't. And that I think we have done very well, and which we can, teach everyone in the world. And some of them are learning also. Thanks. So I think you rightly mentioned what India has proudly built. It is called India Stack. Yeah. And based on India Stack, multiple applications have been built in the country. But I would like to understand from you, Roshan, which is a little different from what we have been discussing, is that where do you see twinning of cities or twinning of city infrastructure, especially roads, coming into the whole urban planning or mobility planning, in the future? Thanks. Thanks, Pashim, for setting that context on usage of map and how map is so important for each of us today to even navigate in the city. हमें कोई भी शहर, इंदौर जैसे शहर में जो मैं पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं था. I've heard so much in our course of correction कि ये BRT चलता है यहाँ पे, and I've been telling Chandar, let's go explore that. तो ये we said, okay, how do you get to it? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर शायद है BRT, and कल धूप थी तो we weren't able to really were not really interested in going, and we said, okay, हमारे यहाँ ऑन डोर सर्विस आती है ओला की, तो हम यहीं से यूज करके जाएं. तो उसको भी बताया कि गेट नंबर 2 पे आना है, ना कि 3 पे आना है. तो I'm just saying the utility of the map as such and the usage of the road. So every road also, when we're talking about it, we talk about congestion in the cities. There are congestion index that TomTom comes out with, and it sort of says that, okay, ye speed hai shehar ka. So if you have a lower speed, it doesn't matter. I mean, London is one of the biggest business center of the country. It's slower than Bangalore in terms of speed, but it is one of a thriving city, one of the fastest growing city in terms of business. So point being, what I'm trying to emphasize is that how inclusive is the city. That's something that also came from the whole discussion, even within the digital frame, right? That person who has probably color blindness could also use application. Accessibility to this digital information is also key. We talked about the road infrastructure particularly, and every road or depending on the road width has a capacity. And between any two nodes, कोई भी दो junction के बीच में, what is the throughput? That is something that establishes whether you're efficiently mobilizing vehicle and people. More so vehicle, because everything is designed for vehicle in our cities, not for people. So I just want to bring back that discussion on people per se, that there's studies that says 30% of the trips in urban centers are done by walk or cycle. And when we look at it, how walking and cycling is important for even a cleaner mobility mode, or how would I say, a more sustainable way of living, has to be encompassed. I've seen that Indore as a city has done that by solving the problem of their waste into creating fuel, and then using that fuel to as a mode of energy to sort of put the buses on road. So सारा CNG पे चलता है यहाँ पे, and I think they have the Asia's biggest bio CNG plant here, or a biogas plant here. That's again one of the key factors that needs to be studied and brought in. If you are going to strengthen your public transport, you're going to be able to have a higher throughput. You're going to increase more people start using public transport, and then it will change the course of the city in this process. You'll move faster, you'll have more people start using it, and then in this process, you are able to reduce your wear and tear of the road and improve the mobility services in the road.
So I think that's very important element. Road infrastructure upgradation doesn't mean always building flyovers. It also means that you have to use this digital interface to promote a mode and increase your throughput in cities. Thanks. Thank you, Roshan. We'll pause for some time and take queries or questions from the audience. Yeah. Kindly announce your name and also to whom this question is directed. Hello. Yeah, my name is Anil Tarkor. I'm General Manager IT from Nasik Smart City, basically. And I've been facing these challenges. Basically, I heard this, and I want to know how, because if you look at most of our cities where I am coming from, Nasik, and many of the cities where I have been there, they have applications in silos, and the data they are collecting from last 10 years, which is there, which is on different architecture, and many of them have developed this on different vendors, and the vendors do not work in tandem with each others, and the technology is totally different, disparate technology, disparate databases, and many technologies where this they are not even, the technology do not support APIs also. If suppose if I want to integrate this with the existing Upyog or anything, wherever I want to use it, I need to first rewrite the application with the API architecture in it. So there are a lot of challenges. How are we going to do this where the data is already existing? Do you have any suggestion for this or recommendation where we can use the existing data and use the existing infrastructure? So that will really help everybody. अंडर नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो उपयोग प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, आप इसकी रिपोजिटरी गिटहब पे या ओपन सोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिपोजिटरी है वहाँ से ले सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, जो आप इश्यूज फेस कर रहे हैं, दिस इज द होल कंट्री इज प्लाइट almost, if we look at Madhya Pradesh also, Madhya Pradesh has been running on SAP as a system, which is a proprietary software. I'm not against proprietary, but that's how यहाँ पे SAP है, किसी जगह पे कोई और proprietary software है, किसी जगह पे कोई software supported नहीं है. So बहुत सारे challenges जैसे cities में सब जगह हैं. इसीलिए ये platform हमने बनाया है with collaboration with ईगा फाउंडेशन. इसको होस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा मिशन एक फ्री क्लाउड इंस्टेंस भी दे रहा है सारी स्टेट्स को. अगर आपने इसको टेस्ट करना है, इसको डेमोन्स्ट्रेशन लेनी है, कुछ इस पर बिल्ड करना है, तो आप इसको हमें स्टेट के थ्रू या फिर इफ इट्स अ बिगर सिटी यू कैन मेक अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट थ्रू योर स्टेट यूटी डिपार्टमेंट टू एक्सप्लोर उपयोग. अब उपयोग को यूज करने के 2 तरीके हैं. अगर आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो सिस्टम फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है, उस पर आप आने वाले टाइम पे और चीजें बिल्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसकी कॉस्ट ऑफ रनिंग कितनी है. तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कि आपको मूव ऑन करना है एक उपयोग जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर. उस डिसीजन के बाद वी विल हेल्प यू इन डेमोन्स्ट्रेशंस कि जो भी सर्विसेज हमारी चल रही हैं, चाहे वो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल का स्क्रूटनी इंजन है, चाहे वो वाटर कनेक्शन है, सीवर कनेक्शन है, चाहे वो ग्रीवांस मैनेजमेंट है, चाहे वो एनओसीज हैं, चाहे वो एनी काइंड ऑफ सर्विस है, तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आपको और आपको ऑन बोर्ड करने में हेल्प करेंगे. प्लस फ्यूचर में जो भी हम एप्लीकेशंस इस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे वो आपको रेडिली अवेलेबल होगा. इस वक्त हम फीकल स्लज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है. हम एसेट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन अप्रूव इस मॉड्यूल पे लाएंगे. तो इसका एडवांटेज ये भी है कि आने वाले टाइम में जितनी भी एप्लीकेशंस हम बिल्ड करेंगे वो आपके लिए इमीडिएटली अवेलेबल होंगी विदाउट एनी कॉस्ट और मच ऑफ द एफर्ट. पर डेटा अगर अवेलेबल है उसको माइग्रेट करना पड़ेगा, हम उसको मिलकर डेटा माइग्रेट करेंगे ताकि पूरी सिटी को ऑनलाइन किया जा सके. Correct. I think वही चाहिए. We have already taken a decision to sunset the existing application. अगर existing application को अगर sunset करना है तो we need lot of support and help
in migrating and integrating the existing data which is already sitting in silos from last 10 years and which is a very important data. So wo help you can give us, correct? You can help us. And that's what I wanted. Thank you. Hi, I'm Dr. Deval Mishra from WRI India. So I have two parts of a question which are distinct from each other. The first one is about the standardizing the communication protocols between systems. For example, Indore जैसे शहर में, if I take an example of Indore, we have Smart Cities mission that collects a lot of data. We have municipal corporation which has a lot of data. We have the SPV for public transport, AICTSL, which has its own data, and we have the security, the police, which has their own cameras and data. But those systems are not able to communicate between themselves today. It may not be the case down the line when we have one standardized system, but what of today and in the coming 5 years? Can we have a national level standardization and protocol document which is a live document and which would help cities pan India in realizing what digital India encompasses? And my second question is relating the common user database that Mr. Muthukrishnan said. Won't it open us to security breaches? Data, all users' data at one place. How would we counter that? Thank you. So I'll answer the first part and hand over, maybe the second part also. Maybe answer the second part first, the security part. I think security is a given. We have to make sure that the platform is secure from any vulnerabilities, attacks, those kinds of things. And by, I didn't mean single database with data. It could be shared, but it can be distributed also. So it can be distributed, but data needs to, there should be a single source of truth for that data. Like if you're talking about identity, there's an Aadhaar, there's a central Aadhaar database and it's distributed so that you have a mechanism of authenticating it uniquely. And it's with that entity. So you have APIs obviously that let you, validate something or not. That's the security part of it. And of course, the second part of security is privacy of the PII, personally identifiable information. I know the data protection bill is still under debate, and when it comes out, we'll have specific actionables to work on. But that's again a second part of data. Data needs to be protected. We need to think about consent of personally identifiable data. And there are some very specific guidelines that we already put out. Maybe we can give you the link offline. We can share with you what our recommendations are, along with NUDM as well, right? Like for example, collect minimal data, make sure it's masked for people, only right people who need access to the data, get access to it, audit trail of all people who are accessing it and things like that, right? The interoperability part, what we've done within the NUDM is we've defined standard KPIs for urban governance in the context of the 10 applications that we've currently put out. And cities can consume, there are standard APIs that cities can consume to push data into the national sort of dashboard. Or at a state level or a city level. It can be at both levels. So there are standard APIs for data aggregation. That is one part of it. But that is only in the within the 10 applications that we put out. And this will keep growing. Like you mentioned, if you add more, Manpreet talked about FSM. Tomorrow we add fecal sludge management. There will be FSM specific KPIs and we'll define them. And there will be now APIs for pushing FSM data to the central dashboard. And it will keep growing over a period of time. I'll give it to Manpreet to talk about IUDX, which is the next level of data interchange. I'll have answer in two components. One component, typically the interoperability from a functional perspective, wherein Pashim mentioned about standards. If I look at a common word like property tax, every state, every city defines it in a separate manner. Somebody calls it a property tax amount, somebody calls it a property tax value, somebody calls it property tax, somebody says house tax. So it's the interoperability will not happen if we don't have standards. That's where Pashim said the standards of these services are being built under our mission.
6 have been published. You can go through those from NIO website, and that's where the whole citizen story starts. The standardization starts. That's where the functional part is all about. From the tech part, there is India Urban Data Exchange, IUDX, in collaboration with IISc Bangalore. You can go through the website. That's where the data, a whole city interchangeability and use cases around data, a lot of work around data is happening, urban data, and then one use case, how it moves to other city. That's where a lot of work is being done in IUDX. That's where you can go through, and that's the future in urban data governance part of it. Thank you. A last question, but I think it's a layman's question. It's not a technical question. The problem what a citizen faces, the net speed is the biggest problem in this country. We all talk of digitization. If you don't have a speed, it is very difficult to use the apps and whatever things you use. If anybody want to apply for a passport, it takes at least a whole day, 24 hours sometime, to load your information and get a date on that. What is the solution, do you think, for this? Because everybody will talk of apps. And another thing, all smartphone you are talking of. You have got a phone, smartphone, and everything is handy. But the phones themselves, they are coming with lots of already apps loaded into it. If you load more apps, then it doesn't work. So on that, this is a common man's question. This is not a technical one. But if an ordinary citizen faces this problem, what do you think is the solution for this? There's no easy answer to this actually, but technology is itself providing. टेक्नोलॉजी खुद ही सोल्यूशन ये प्रोवाइड कर रही है. पिछले आई थिंक 10 साल में ही अगर आप देखेंगे तो हम 3G से 4G से आज 5G पे आ चुके हैं, जिसमें स्पीड और अमाउंट दोनों बहुत ज़्यादा हो गया है आम सिटीजन्स के लिए एट ऑलमोस्ट द सेम प्राइस. आप अगर देखिए तो पैसा इंक्रीज नहीं हो रहा है, पर आपकी स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इंक्रीज होते जा रहे हैं. टेक्नोलॉजी का बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ही ये है कि जब वो नई चीज़ लाते हैं वो पिछले प्राइस पॉइंट पे ही लाते हैं और पुरानी चीज़ को रिड्यूस कर देते हैं. तो वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिटीज़न के लिए बेनिफिट है, और शायद आगे भी 6G भी शायद सेम प्राइस पॉइंट पे ही आपको मिलेगा और मे बी 5-6 साल में वो भी आ जाएगा. So 4G, 5G, 6G is all okay. The speed, even if after 4G and 5G, I'm not able to get things download. That is the problem. I am staying in this hotel. If I want to online myself on a particular thing, वो गोल घूमता रहता है. It doesn't get clear. So I am asking a solution for that. So Mr. Wankhede, I might have I might have to add what Pashina said. So one solution may not solve all the issues, but one solution on which Upyog and also Digit was built is a microservices-based technology. So microservices actually divides the whole application into multiple small applications. So it is easy for you to, or even at a lower network speeds, it's easy for you to consume those applications and then go to the next application, next microservice. So like login or OTP. So OTP is one microservice built in Upyog. So if you are applying for some, let's say simple login, so you get a OTP quickly, because you can get OTP even on 2G or even on Edge. So that completes that microservice. Then you get on to the next service of filling a form or filling your application. So that is the one solution which I think we are trying to circumvent, right? Not solve, but I will call it, we are trying to circumvent that problem with adopting a technology which is much more complex, but very simple to use. Yeah. बहुत सारे CSC सेंटर्स में these days बहुत सारे CSC सेंटर्स में अगर इंटरनेट नहीं है तब भी आप डेटा एंट्री कर सकते हो. जब भी आपके पास इंटरनेट आएगा सारा का सारा डेटा इकट्ठा अपलोड हो जाएगा. दैट्स अनदर सॉल्यूशन व्हिच बहुत सारी हम एप्लीकेशन में बिल्ड करते हैं. I was going to say the same thing. We have offline mode in the applications. ये ऑफलाइन मोड में क्या होता है, नेट काम नहीं कर रही है तो फिर आप डेटा एंट्री करते रहो और एप्लीकेशन विल सिंक आफ्टर नेट कम्स अप. So that is there for wherever you are working with low network areas. Field में काम करना है आपको. Cities में typically network होती है. In the field is where you have
a problem. So in many of the sanitation use cases, FSTP plants are very far away, वहाँ पे network नहीं होती है, तो उस वाले केस में हम लोग offline mode वगैरह करते हैं. So the platform supports an offline mode for these kinds of use cases. I think with that, we would like to conclude the session. We have discussed at length about the technology, the governance structures, or the governance transformation that technology can help us to achieve, and how cities and states can benefit from solutions like Upyog and the knowledge standards which NUDM is trying to come out with. So I'll take this opportunity to thank all the participants here and also for you being such a kind audience. So we'll wrap up this session, and after lunch you should be needed in this hall by 2:30. Yeah. That's it. Thank you, sir. Speakers on the dais for inspiring and sharing your valuable words on the technical session theme Catalyzing Digital Urban Future. On behalf of MIC member Indore, I thanks to all the speakers on the dais. And now it's time to give memento to our speakers. For giving memento to Pankaj Ji Sharma, I would like to call upon Shri Nand Kishore Ji Pahadia, MIC member Indore. Sir, please. Thank you, sir. For giving memento to Chandar ji, I will like to call upon Jeetu ji Yadav, MIC member. Sir, please. For giving memento to Manpreet ji, I will like to call upon Vishal Baheti ji, senior advocate. Sir, please आइए. तालियों की आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जोरदार कर्कश ध्वनि से स्वागत करें. For giving memento to Pashim ji, I will like to call upon Priya Dangi ji, MIC member. Thank you, ma'am. For giving memento to Roshan ji, I will like to call upon Rajesh ji Sudhawat, MIC member. Sir, please. Udawat. Okay. Thank you, sir. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत for the technical session 1. And now I request all the dignitaries on the dais and all the participants and all the members to go away for the lunch in first floor Maple. And session 2, technical session 2 will start at 2:30 sharp in Imperial Hall, second floor. Yes. Thank you. Thank you, sir. So
is Shri Anshul Ji Puria, and the keynote speaker is Shri Hitesh Ji Vedai. Now I would like to call upon Shri Anshul Ji Puria on the stage, Shri Hitesh Ji Vedai on the stage for the technical session 2, Shri VP Kulshrestha Ji on the dais, Srimati Alka Bharat Ji. I would like to call upon Srimati Alka Bharat Ji. Shri Saurabh Manuja Ji. Shri Milind Mahaske Ji. I would like to call upon Shri Milind Mahaske Ji on the dais. Now we'll move towards the felicitation ceremony. For felicitating Shri Anshul Ji Puria, I would like to call upon Ravi Ranjan Guru Ji. Nitesh Vaidya. And Nitesh Vaidya sir. जोरदार तालियों से स्वागत करें. हाँ, श्री हितेश जी वैद्याई का स्वागत के लिए मैं रवि रंजन गुरु जी से अनुरोध करूंगी कि वे उनका स्वागत करें. थैंक यू सर. कौन करे? श्री वीपी कुलश्रेष्ठ सर के स्वागत के लिए मैं डीपी तिवारी सर को आमंत्रित करती हूं कि वे आए और उनका स्वागत करें. थैंक यू सर. श्रीमती अलका भरत जी के स्वागत के लिए मैं अनुषा को आमंत्रित करती हूँ. श्री सौरभ मनुजा सर के स्वागत के लिए मैं रवि रंजन गुरुजी सर को आमंत्रित करती हूँ. तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत करें सर प्लीज. श्री मिलिंद महस्के जी के स्वागत के लिए मैं रवि रंजन गुरु सर से अनुरोध करती हूँ कि वे उनका स्वागत करें. Thank you, sir. After the felicitation ceremony, I would like to give a brief introduction of Shri Anshul Puria ji. He is currently working as an advisor in Atal Institute of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal. He has published and presented his works in national and international conferences and journals and government reports, focusing his current research on urbanization, resilience, housing, and socio-economic well-being of people. Now I would like to hand over the mic to Shri Anshul Ji Puria for giving the introduction of other speakers and continue with the technical session too. Thank you. Thank you, ma'am. First of all, I thank the organizing committee to collaborate with the Center for Urban Governance, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis for this session. Team CUG is delighted to be a partner for this session.
I have my team members from Center for Urban Governance, Principal Advisor, Dr. Suprava Patnaik with me, Ms. Jalja Saji. And I work as advisor in Center for Urban Governance, AIIGGP Bhopal, and it's a policy think tank of Government of Madhya Pradesh. On behalf of my institute, I welcome you all for the second session, intriguing and timely topic of reinventing frameworks for urban governance and planning. I'll just briefly describe the structure of the session. We have a keynote address followed by 4 presentations by the experts on the theme of the session, that is reinventing frameworks for urban governance and planning. After this, we will take questions from the audience and then wrap up the session and conclude the session with key tagline. And I'll just quickly introduce the experts and set the context for the session, and then we'll move on with their presentations in order. So we are honored to have on the dais with us Mr. Hitesh Vaidya, who is currently Director, National Institute of Urban Affairs, NIU, New Delhi. Sir has tremendous experience in the field of urban management, urban governance, and capacity building. He is known in the urban sector for his experience in capacity building of urban local bodies, providing support and instituting significant urban reforms at the local level. He has been associated with the UN, World Bank, and United States Agency for International Development for several noteworthy assignments. Next, we have Mr. VP Kulshrestha. He currently holds the position of chairman at Institute of Town Planners, Madhya Pradesh chapter. An IIT Kharagpur graduate, Mr. Kulshrestha has designed and developed master plans of major cities of Madhya Pradesh such as Bhopal and Indore, and he has worked on numerous projects across diverse urban environments. He brings more than 40 years of experience in the urban planning and governance sector, having served major urban planning organizations and offices such as Town and Country Planning Department, Land Revenue Department, Madhya Pradesh Urban Development Department, etc. And then our next esteemed expert is Professor Alka Bharat. She is an architect planner with more than 3 decades of expertise in academia and research. She has successfully managed a wide range of duties, including those of academician, HOD, and institute dean. Professor Alka is passionate in comprehensive spatial planning, sustainability, and resilience with a focus on people and natural resources. She believes that the built environment of the future should be the one in which people and nature may live in harmony. Then our next distinguished expert is Mr. Saurabh Manuja. Mr. Saurabh has more than 17 years of work experience in the field of research, education, and consultancy, and he is presently employed by GIZ in India as a waste management advisor. As a part of his project position, he played a significant role in creation of the Mahua digital platform. Earlier in his career, while working with TERI, he was involved in modeling GHG emission from the waste sector for NDC reporting for the country and creating work plans utilizing methods for emission estimating. He is a graduate from Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia. He has also been adjunct faculty at Indian Institute of Forest Management, Bhopal, and TERI. And next, I am humbled to introduce Mr. Milind Maske. Mr. Milind has been at the helm of affairs at Praja Foundation as CEO since 2010, scaling it up to become a key national player in transforming urban governance across India. He has helped set up some of the key projects, report cards for ranking elected representatives, training programs for elected representatives, and Praja's Urban Governance Index in 2020. He is a business management graduate from Mumbai University and brings with him more than 2 decades of experience in managing development sector projects. So, with this varied line of experts from academics, government, policy think tanks, and NGOs, this session aims to develop into the critical aspects of reinventing frameworks for urban governance and planning. Throughout the discussions, we will explore groundbreaking strategies, progressive policies, and transformative ideas that can shape the future of urban spaces worldwide. And as we all know, in an era marked by rapid urbanization, unprecedented technological advancements, and the pressing need for sustainable development, it is crucial for us to explore innovative approaches and reimagine the systems governing our cities and urban spaces. So, we sincerely hope that this session will inspire and empower each one of us to play an active role in building sustainable, inclusive, and prosperous urban environments. So, without further ado, we start the keynote address by Shri Hitesh Vaidya. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. I know lunch के बाद session
करना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करूँगा कि ना मेरे पैनलिस्ट सोएं ना आप सोएं, ताकि उसको मैं अपनी अगर ना कर पाया तो आप बोल देना ये सेशन सही नहीं था, पर कोशिश करूँगा कि आप जागते तो रहें, सुनते रहें वो मैं नहीं बता सकता, पर जागते तो रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू for giving me an opportunity for addressing this। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में ही बोलूँ ना कि इंग्लिश में बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे मेयर्स हैं, बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं वो भाषा बोलना चाहता हूँ जो भाषा में वो लोग काम करते हैं। आज सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि हम कह रहे हैं री इन्वेंटिंग अर्बन प्लानिंग फ्रेमवर्क्स। आज हम यहाँ से बात कर रहे हैं, 2 साल तक हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन से आपसे बात कर रहे थे और आप लोग वहाँ पे फंक्शन कर रहे थे। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी बदौलत खड़ा हूँ और आपकी बदौलत ये बातें कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको अपने लिए और अपने प्रैक्टिशनर्स और सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए आई थिंक बिग हैंड देना चाहिए, क्योंकि आज हम बातें कर रहे हैं री इन्वेंटिंग, बिकॉज 2 साल उन्होंने झेला, उन्होंने फंक्शन किया और आज हम उस बात को कर रहे हैं। तो उनके लिए बिग क्लैप एंड बिग हैंड टू देम। और 2 साल जब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स पे पासपोर्ट साइज फोटो में आते थे तो हम क्या बोलते थे? 7 चीजें, आप कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी वेबिनार, कोई भी वो उठा दीजिए, हम सिर्फ 5 या 7 चीजें बोलते थे। सबसे पहले हमने कहा कि प्लानिंग जो है वो हमें चेंज करनी चाहिए, ये प्लानिंग से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें बहुत नेबरहुड प्लानिंग करनी चाहिए, हमें लोकल लेवल प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लोकल लेवल पे आ रही हैं। सेकंड थिंग हमने कही कि डेटा एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम हमें पता लगता था जब हम स्पेशल डाटा करते थे कहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, कहाँ पे हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, कैसे इस हॉटस्पॉट्स को एड्रेस किया जाए। थर्ड थिंग हमने कही कि पब्लिक हेल्थ और प्लानिंग को एक दूसरे के साथ जोड़ देना चाहिए, और ये बातें सब लोगों ने कही कि पब्लिक हेल्थ और प्लानिंग का आपस में इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हुई कि कन्वर्जेंस की बात हुई कि जब तक कन्वर्जेंस नहीं हुआ, आज सुबह भी बात की कि साइलोड अप्रोच से हमें कन्वर्जेंस अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। हमें एक हर सिटी का एक माई बाप बनाना पड़ेगा, एक सिटीज का एक कोई सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये सिटी मेरी है, उस टाइप के हमें स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। हमने ये भी कहा कि इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो फाइनेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। और कहा कि कोविड की तरह हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, इस टाइप की कई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारे पास सिटी लेवल पे डिज़ास्टर से लेकर डिज़ास्टर रेजिलिएंट फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। और हमने ये भी कहा कि हमें, क्योंकि हमने पॉवर्टी को देखा, तो पुअर पॉवर्टी के ऊपर स्पेशल फोकस होना चाहिए, ताकि हाउ डू वी मेक प्लानिंग मोर इंक्लूसिव। दैट वाज वन ऑफ द अदर मैसेज वी वांटेड टू टॉक अबाउट। और सबसे पहले भाई, ये सब जब करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए एट द लोकल लेवल, जो आज सुबह भी कहा कि नई स्किल्स, नए लोग, नई चीज़ें। अब ये सब चीज़ें 2 साल हम कहते रहे, 2 साल के बाद हम फिर से उसी दशा में हैं, उसी दिशा में हैं। उसके लिए कैसे हम प्रयास करें, क्योंकि वो 2 साल सिर्फ पर्दे के पीछे थे, अब हम सामने हैं। हमें वो कहीं से एक तस्तरी नहीं आ जाएगी कि वो सब कुछ वन स्पेस शटल विल कम, वो बोलेगी कि आज से ज्ञान आपको ये मिल गया बुद्धा की तरीकों, अब आपसे ये अलग से करना शुरू करेंगे। उसके लिए डेलिब्रेशन होनी पड़ेगी, उसके लिए डायलॉग्स होने पड़ेंगे, उसके लिए डिस्कशंस होनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, और वो इस टाइप की कॉन्फ्रेंसिस से ही हो सकता है, क्योंकि किसी एक के पास, हमारे पास आंसर्स नहीं हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करें। जब मैं री इन्वेंटिंग की प्लान की बात करता हूं तो सिर्फ एक चीज मेरे को समझ आती है, और मैं कई बार सोचता हूं कि हमारी हालत इस टाइम कि हम चाहते हैं कि हम नई दिशा की तरफ चले, हम चाहते हैं कि हम नए प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाएं, हम चाहते हैं कि अब जो हमने 2 साल में सीखा उसको कैसे करें। तो हमारी हालत है जैसे अर्जुन महाभारत के मैदान में खड़ा है और कृष्ण से पूछ रहा है, अब करूं तो किन लड़ूं या न लड़ूं, आगे बढ़ूं या न बढ़ूं, गांडीव उठाऊं या न उठाऊं। और वो टोटल कंफ्यूज है। उसके पास एटलीस्ट फॉर्चुनेट था कि उसके पास कृष्ण थे
जिन्होंने उसको गीता का ज्ञान दिया, हमारे को अपनी गीता खुद लिखनी पड़ेगी। हमारे पास कृष्ण नहीं है, आप लोग ही कृष्ण हैं जो अपने आप मिलकर अपनी गीता को करेंगे। और दैट इज द चैलेंज विच वी ऑल हैव टू रियली स्टार्ट। हाउ डू वी वांट, बिकॉज फॉर अस ऑल्सो अब ये स्ट्रगल है कि जो अब हम करेंगे वो हमारी आने वाली जनरेशन्स, उसका जो हमने 2 साल से वो लर्निंग जो हमें की, कैसे हम अपनी आने वाली जनरेशन को उन लर्निंग से करेंगे। और उसके लिए हमें एम्पावर होना पड़ेगा, एम्पावर थ्रू नॉलेज, एम्पावर टू टेक अ डिसीजंस। हमें एंगेज करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, और हमें इवॉल्व करना पड़ेगा सो दैट वी कैन इनोवेट एंड वी कैन को क्रिएट। ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। हम सिटीज़ को इंजन्स ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, पर सबसे पहले आज सुबह जो बात हुई एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की है, ये इंजन जो है वो ट्रक का इंजन है, ट्रेन का इंजन है या कार का इंजन है। अगर जो इंजन है उस इंजन के हिसाब से हमें अपने स्ट्रक्चर्स को बनाने पड़ेंगे, हमें अपने म्यूनिसिपल पावर्स को उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा कि वो इंजन वहां पे वो चल सके। तो उसके लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। जो हमारा सिस्टम है 74th अमेंडमेंट की हम बात करते हैं, 25 साल मैं भी 74th अमेंडमेंट के साथ ही मैं इस प्रोफेशन में पैदा हुआ। अगर 74th अमेंडमेंट नहीं चल पड़ा तो इट्स बेटर नाउ द टाइम हैज़ कम कि वही बातें करके वही दोहराने से अच्छा है कि उसको लेके लेट्स री लुक एट 74th अमेंडमेंट एंड से वेदर इट वर्क्स और डजंट वर्क। सो आई थिंक एज अ practitioners community we have to start thinking, let's go back to the drawing table and see what new structures हमें देखने पड़ेंगे। और अगर इंजन को चलाना है तो इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। किस टाइप का फ्यूल चाहिए, सीएनजी चाहिए कि आपको डीजल चाहिए कि आपको ईवी व्हीकल चाहिए। तो उस फ्यूल की तरह आपको फाइनेंसिस की बात करनी चाहिए। व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूल आपको फाइनेंसिस की बात करें, किस टाइप का फाइनेंस हमें चाहिए, कैसे हमें, अगर ये हमें बदलना है तो किस टाइप के फाइनेंस चाहिए। तो अर्बन लोकल बॉडीज को, इस सिटी ऑफ इंजन ऑफ ग्रोथ को कैसे हम फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करें उसकी बात करनी पड़ेगी। सुबह भी कहा कि नई चीजें आई हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो एयर क्वालिटी, मोबिलिटी कोई बात नहीं करता था। एज अ स्टूडेंट मैंने नहीं पढ़ा वो इन चीज़ों को। ये नई चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ इमर्ज हुई हैं। तो हमें उसके लिए स्किलिंग की ज़रूरत है। किस टाइप के स्किल्स चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ये नई चीज़ें करने के लिए क्या ये स्किल्स अवेलेबल हैं या नहीं है, इन चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। तीसरा, अगर ये इंजन को चलाना है तो ट्रैक्स, रोड पे चलाना है, प्लेन पे चलाना है या रेलवे के ट्रैक, किस टाइप के से ये इंजन चलेगा, उसके ट्रैक्स के लिए हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे। कैसे ये इंजन चलेगा, कैसे ये हमें फ्रेमवर्क्स जो हैं उसको रिजुविनेट करेगा ताकि ये इंजन जो है वो सड़कों पे सही चल पड़े, सिटी सही से ये काम कर सके। और सबसे पहले ये सब तो अच्छा है, इसके लिए ड्राइवर्स की बहुत ज़रूरत है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ विद आवर मेयरल सिस्टम, आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की पावर, इन सब के ऊपर फिर से हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे अर्जुन की तरफ आंसर नहीं थे, हम सबके पास आंसर नहीं है। वी ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स अननोन टेरिटरीज। तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है पार्टनरशिप्स की। किसी एक के पास आंसर नहीं है, बट एक साथ मिलके हम आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है और पार्टनरशिप्स करनी पड़ेगी, तभी हम एक दूसरे से विचार कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने अभी जब बजट किया तो कहा कि हमें नए सिस्टम सोचने पड़ेंगे। नए सिस्टम सिर्फ एग्जिस्टिंग सिटीज़ के लिए नहीं सोचने पड़ेंगे, नई सिटीज़ के लिए भी सोचने पड़ेंगे। हम सब के पास, एंड आई मस्ट से, हम सब कहते हैं, आज की सुबह की मीटिंग में भी कहा कि हम ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मसाले बहुत हैं, हमारे पास रेसिपी भी बहुत है कि ये मसाले से ये सब्जी बनती है, पर कौन सी सब्जी किस कल्चर में, किस इन्वायरमेंट में, किस मौसम में चलेगी, वो हमें राइट जोड़ना है। हर सब्जी हर जगह नहीं चल सकती। तो इंग्रेडिएंट्स आर देयर, रेसिपीज आर देयर, बट लिंकिंग दैट रेसिपी टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट इज अ मच मोर इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस कुछ और नहीं है मेरे साथ। गवर्नेंस सिर्फ ये है, हाउ इज द विजिबल चेंज वी सी इन द सिटी। इंदौर में मैं जब उतरा हूं इस बार, और हमेशा उतरा हूं, सबसे बड़ी विजिबल चेंज जो नजर आती है, साफ इंदौर। दैट इटसेल्फ इज द यूएसपी ऑफ इंदौर। वो विजिबल चेंज जब सिटीजन देखता है तो उसका अपने आप से एक मोटिवेशन आता है कि यार अगर सिटी ये कर सकती है, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं। अगर जब तक वो विजिबल चेंज नहीं होगी, गवर्नेंस
सिर्फ निर्माण भवन के कॉरिडोर और पावर से नहीं होगी, गवर्नेंस यहाँ पे सिटी में देख के होगी, एंड दैट आई थिंक मॉर्निंग ऑलरेडी हैज बीन ऑल वी नीड टू डू, एंड बेस्ड ऑन द एग्जांपल ऑफ इंदौर, ये एक्सीडेंटल एफिशिएंसीज जो हैं इनको चेंज करके हमको इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसीज में बदलना पड़ेगा। इंदौर एक नहीं, क्यों नहीं हमारे सारे शहर इंदौर बन जाते। तो वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स जब तक हम नहीं स्ट्रेंथन करेंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे। मेरा यह है कि 4 चीज़ें मैं चाहता हूँ, एंड आई विल क्लोज माई थिंग, कि हमें बात करनी पड़ेगी स्केल की, कि जो हम प्लानिंग प्रोसेस करते हैं वो क्या है। हमें जूम इन करना पड़ेगा नेबरहुड लेवल पे और जूम आउट करना पड़ेगा एट अ रीजनल लेवल, क्योंकि कई इश्यूज जो हैं वो लोकल लेवल पे होंगे प्लानिंग के, कई इश्यूज जो है रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे होंगे। जैसे गूगल मैप में हम ढूंढने जाते हैं तो जब हम शॉप ढूंढते हैं 56 गली कहाँ, 56 दुकान कहाँ है, तो हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं, और जब हम देखते हैं कि यार इंदौर के बाहर कौन सा जगह है, देवास को ढूंढना है, तो हम ऐसे ऐसे करते हैं। वो ऐसा ही प्लानिंग स्ट्रक्चर्स को हमें जूम इन और जूम इन होना एक अकेला लैंड यूज प्लान से हो नहीं पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स हैव टू इंटीग्रेट विद ईच अदर, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। सेकंड इज, हर अलग अलग सिटीज हैं, कोई कनेक्टेड सिटीज हैं, कोई स्वच्छ ट्रांसफॉर्मिंग सिटी है लाइक इंदौर, कोई मैच्योर सिटीज हैं, कोई ग्रोइंग सिटीज हैं, कोई ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज है। हर सिटी हर लेवल पे है, पर हमें क्या देखना है, अगर उन सबको बदलना है तो वो सिटी का कल्चर क्या है, सिटी का यूनिक आइडेंटिटी क्या है। जैसे इंदौर की वो स्वच्छता है, लोकल इश्यूज क्या हैं, जब तक उन सबको नहीं इकट्ठा किया जाएगा, प्लानिंग की बात नहीं करेगी। तो वी नीड टू लुक एट जूम इन एंड जूम आउट एंड सी हाउ द प्लानिंग बिकम्स इन दीज 3 थिंग्स, कि वो उस कल्चर को आगे बढ़ाए, उसके लोकल इश्यूज को सॉल्व करे और उसकी यूनिक स्ट्रेंथ को उसको इकोनॉमिक ड्राइवर बना के करे। तीसरी चीज जो हमें देखनी है कि टाइम फ्रेमवर्क। अभी एक 20 साल का मास्टर प्लान बनाते हैं और उसके बाद खत्म। अभी मैं मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041 बना रहा हूं एज अ दिल्ली। मैं बहुत अपने आप को, जब मैं घर जाता हूं तो मैं अपने बच्चों को कहता हूं, देखो तुम्हारा बाप दिल्ली बदलने में सहायता कर रहा है, और बहुत जोर जोर से पीट के, जब तुम बड़े हो जाओगे तो दिल्ली इतनी बढ़िया हो जाएगी, उसमें ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें लोग बात करेंगे। और मेरा बेटा मेरी तरफ देखता है और कहता है, पापा टेक अ वॉक, बाहर जाके बात करो, मेरे से बात मत करो। ऑल व्हाट वी हैव लॉस्ट इन दिस इज वी हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द यंग जनरेशन, और उस यंग जनरेशन की ट्रस्ट को वापस लाने के लिए हमें काम करना है। मास्टर प्लानिंग एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, एक लैंड यूज नहीं बनाना है, वो ये बनाना है जो इंदौर ने किया, कि नेक्स्ट जनरेशन उसको क्लीननेस की तरफ लेके जा रही है, उसको पता है ये करना है, इसमें मेरे को कंट्रीब्यूट करना है। एंड आज सुबह ही कहा कि 725 करोड़ रुपया लोगों ने दिया, वो ट्रस्ट वो वापस लाना है, एंड दैट इज द रोल ऑफ अ मास्टर प्लान विच वी नीड टू डू। एंड लास्ट इज, तो 20 साल की जगह हमें 5 साल के प्लान बनाने पड़ेंगे, हमें 10 साल के प्लान बनाने पड़ेंगे। हमें जाना कहाँ है वो निश्चित है, पर वो प्रोसेसेस जो है वो फ्लेक्सिबल करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें अपना टाइम फ्रेम्स को चेंज करना पड़ेगा, उनको मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क करना कि 5 साल के बाद, ताकि हमें अगर प्लान चेंज करना पड़े, वी शुड हैव, हमें अशेम नहीं होना चाहिए कि यार प्लान चेंज कर दिया। इट शुड बी अ रियल टाइम प्लानिंग प्रोसेस विच वी नीड टू मूव ऑन। एंड लास्टली, सिटीजन की बात करते हैं, कैसे सिटीजन को एंगेज करें, क्योंकि सिटी सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या ऑफिस में बैठ के प्लानिंग करके नहीं है, उससे सिटीजन के क्या व्यूज हैं, एकेडमिया के क्या व्यूज हैं, आपके इंडस्ट्रीज के क्या हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट किया, उनके व्यूज को कैसे हम लेके आए, उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। सो इट ऑल हैज टू बी अ वेरी वेरी आइटरेटिव प्रोसेस। इट कैन नॉट, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, मल्टी गवर्नेंस प्रोसेस which we need to really start looking at. And I know that there are a lot of experts who are going to talk about it. I am not an expert on this subject, पर मेरा ये है कि जब हम रीइन्वेंट प्लानिंग फ्रेमवर्क्स और गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात करें, तो ये समय आ गया है कि अगर ये एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम G20 की प्रेसिडेंसी है, U20 की, अगर इंडिया कैन शो अ पाथ टू अदर कंट्री एंड बिकम दैट रीजनल लीडर और अ ग्लोबल लीडर, टू शोकेस कि हमें वो स्ट्रेंथ है कि वी कैन टेक बुल बाय हॉर्न और टफ डिसीजंस लेके नई प्लानिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। नहीं तो
वो 25-30 साल से वही प्लानिंग प्रोसेस है, उसमें हम एडहॉक चेंज करके ये आज थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दिया या आज यहाँ शिफ्ट कर दिया, उस तरह से चेंज करके हम एक बड़ी चेंज और एक कठिन चेंजेस करके एक नई दिशा की तरफ बढ़ें कि हमारे प्लानिंग क्या होने चाहिए, हमारे गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या होने चाहिए, उस तरफ जाएं। तो उसके लिए क्या टूल्स होंगे, क्या टेम्पलेट्स होंगे, क्या कैपेसिटीज हमें डेवलप करनी पड़ेगी, इसके बारे में पूरी तरह से फिर से सोचने की जरूरत है। सो आई लुक फॉरवर्ड कि ये डिस्कशन, ये डेलिब्रेशन और ये एक्सपर्ट्स जो इसमें बात करें वो एक नई दिशा की तरफ बात करें, ना कि वही व्हाट यू कॉल दिस ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल की तरह। एक्चुअली लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट ब्रूइंग आवर न्यू वाइन्स, एट लीस्ट एट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू once again for giving me an opportunity. धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. We have noted the important keywords from your session, sir. The 4 points that you mentioned: scale, connecting, transforming cities, time of framework, reducing the master plan time from 20 years to 5, and engagement of citizens, academia, industry. And up before that, you also talked about zooming in, zooming out of at neighborhood scale or regional scale. So, sir, continuing with this discussion, we have next expert. Kulshreswar, he has been working with the town and country planning department, so he can further elaborate on the master planning process, and he can further add to the discussion what you have left us with. So sir, I invite you for your presentation, please. Without any formality, I'll just start my presentation. And I would like to tell you that my presentation will be very, very basic sort of thing, where content will be like that what we are, since morning we are talking about the reinventing of the urban planning or framework of urban planning. But why? What is the need of that? So I have to explain a bit about that. Then what is the framework of the governance? Then of course, I mean, how this evolution of urban governance has started in India, a little about that. Then what is the current Indian urban scenario at the moment with the few facts and figures, and finally a few recommendations. Here you can say there are certain gaps. The gaps can be, हाँ, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ अपने प्रेजेंटेशन को, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब हितेश हैज स्पोकन इन हिंदी, और बिफोर दैट इन द मॉर्निंग ऑल्सो समबडी सेड दैट प्लानिंग इस तरह की हो गई है कि नो बट द पीपल दे मेड इट कॉम्प्लेक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सिटी वी आर प्रोबेबली अनेबल टू एंगेज द सिटीजन्स, और आम आदमी को जोड़ना वो संभव नहीं है. द सेकेंड थिंग इज अबाउट द लैंग्वेज ऑल्सो. इज़ वेरी करेक्ट दैट द लोकल लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. तो थोड़ा अगर हम प्लानर्स अगर थोड़ा देख लें अपने लोकल लैंग्वेज के हिसाब से करें तो शायद ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा. सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी हिंदी में बोलूँ, और ऑफ कोर्स मे बी इट माइट बी लिटिल मिक्स्ड. सो जो गैप्स की बात मैं कर रहा था, तो सबसे पहला एक चीज़ है इसमें कि रिजिड वर्सेस डायनामिक प्लानिंग फ्रेमवर्क. Rigid means we make master plans and we say therefore this document is for the 10 to 12 years. 10 से 12 साल तक ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ऐसी ही सिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, विदाउट ये सोचे हुए कि सिटी जो ग्रो कर रहा है उसमें एक नेचुरल बिजनेस ग्रोथ हो रही है या टूरिज्म का कोई बहुत सडनली एकदम बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई जो कुछ हुई, तो ये सारी चीज़ें उस फ्रेमवर्क में वो कैप्चर नहीं कर पाएगा. इसलिए दैट डॉक्यूमेंट बिकम ऑलमोस्ट इनवैलिड सॉर्ट ऑफ थिंग. Then of course lack of regional framework. There are hardly any regional framework. और जबकि जैसे बताया आपको कि because of the population growth or urbanization, with the more rapid urbanization, you know, some of the cities जैसे
दिल्ली है, दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन, कलकत्ता में CMDA, बॉम्बे में ग्रेटर बॉम्बे, और इस तरह के रीजन्स को बन जाते हैं। तो द थिंग इज, इन सब चीज़ों को मिला के द अर्बन गवर्नेंस हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। देन ऑफ कोर्स हमें जो कुछ भी है अभी मास्टर प्लान या जो भी डॉक्यूमेंट हमारा होता है, उस डॉक्यूमेंट में हम लोग जो है एक तरह से देयर इज हार्डली एनी स्ट्रेटजी बेस्ड आउटकम, स्ट्रेटजी बेस्ड थिंकिंग है। वो सब लैंड यूज़ पे ज़्यादा आधारित रहती है कि लैंड यूज़ है, यहाँ पे ग्रीन लैंड यूज है, यहाँ पे रेजिडेंशियल, यहाँ पे PSP, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, व्हाइल दिस इज नॉट रियली थिंग विल हेल्प द प्रॉब्लम। देन ऑफ कोर्स लैक ऑफ डेटा ड्रिवन प्लानिंग, मॉर्निंग में बहुत इस पर बात हो गई है कि डेटा ड्रिवन, डेटा ही नहीं मिलता तो क्या करेंगे अपन, नाइदर स्पेशल डेटा नॉर MIS डेटा, कुछ डेटा इतना इनएडिक्वेट मिलता है कि तो पहले तो डेटा कलेक्ट करने में अपने को बहुत प्रॉब्लम होता है, और डेटा मिलने के बाद वो साइलोस की तरह से कि डेटा अगर मान लीजिए मेरे को पानी से संबंधित डेटा चाहिए तो PHE डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, जबकि कुछ पोर्शन के लिए मेरे को नगर निगम जाना पड़ेगा। सो इट्स मोर नंबर ऑफ पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। देन कोई भी हम लोग जो है ना, कभी भी अर्बन रीजनरेशन, हम लोग बात करते हैं ग्रीन फील्ड पे कि नया कुछ डेवलप कर दें यहाँ पे, लेकिन जो ऑलरेडी जो हमारा शहर है उसका एक तरह से रीजनरेशन कैसे किया, अर्बन रीजनरेशन कैसे कर सकते हैं, उसका क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। देन ऑब्वियसली द अर्बन रीजनरेशन का एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया विच इज़ अ फेलियर है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कुछ प्लॉट्स पे, छोटे छोटे प्लॉट पे कुछ रिकन्स्ट्रक्शन हो जाता है और उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, देयर इज हार्डली एनी आउटकम फॉर द सिटी, फॉर द पब्लिक। Then rapid urbanization is, of course, everybody knows about that. It leads to degraded built environment. Then disaster risk बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, and with the इस समय जैसे climatic change जो होता है उसके consequences इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि proper housing services कुछ भी नहीं मिल पाती शहर को। Then we never thought about the shared infrastructures. इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाते हैं, लेकिन जैसे अब सुबह मॉर्निंग में कहा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पता चला कि एक विभाग के पास है। आई रिमेंबर ऑफ द टाइम जब कंप्यूटर किसी विभाग को खरीदना बड़ा मुश्किल काम होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 86 और 87 और। अगर किसी डिपार्टमेंट ने उसके कंप्यूटर खरीद लिया और सम अदर डिपार्टमेंट वांटेड टू डू टेक सम हेल्प ऑफ दैट, वो इतना साइलो की तरह से एक्ट करता था, नहीं ये ख़राब हो जाएगा या ये हो जाएगा, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आते हैं। बट आज की जो स्थिति है उसमें शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए एयरपोर्ट मे बी, आई मीन इट माइट नॉट बी द एक्टिविटी ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और समथिंग, बट आने वाले समय में ये संभव है। लैंडफिल्स हैं, वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई में हमारा जो है, सपोज कीजिए दो अगर म्यूनिसिपैलिटी पास पास हैं तो उनका सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एक ही हो सकता है, तो एक है तो हो सकता है कि शेयरिंग ऑफ वाटर सप्लाई कुड हैव बीन बेटर ऑप्शन। देन सीधे ट्रांजिट सिस्टम है, ट्रांजिट सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये सारी चीज़ें ये हेल्प करती हैं। देन ऑफ कोर्स जहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क, वी टॉक अ लॉट अबाउट द फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क बेसिकली एक तरह से ये समझ लीजिए कि इससे काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्बन गवर्नेंस। हालांकि ये सारे जितने एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन एवरी एलिमेंट हैज़ अ सेपरेट प्रॉपर्टीज, इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म विजन उसका रहता है। देन जहाँ तक इसका प्लान एलिमेंट जो है ना, उनका जो मेन कॉन्सिक्वेंस है वो फॉर्म एंड फंक्शन कैसे क्रिएट हो सकते हैं, और जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज हम लोग जो जिसकी बात कर रहे हैं वो सब इंटरलॉक हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मास्टर प्लान इज मोर ए स्ट्रेटेजिक बेस्ड प्लान, बट वी नेवर थॉट अबाउट दैट, वी स्टिल आई मीन taking place of land use development plan sort of thing. जहाँ तक फ्रेमवर्क का सवाल है, देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर, मैनी मोर, जैसे स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम्स, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल, सो मेनी थिंग्स आर देयर।
देन ऑफ कोर्स सम काइंड ऑफ एडप्टिव गवर्नेंस एंड रीइन्वेंटिंग फ्रेमवर्क्स में हमारा फाइनेंसिंग, अभी साहब ने जैसे मिस्टर हितेश ने जैसे बताया अभी, फाइनेंशियल रिन्यूअल ऑफ अर्बन एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल रिन्यूअल अगर अपन नहीं सोचेंगे उसके लिए कि जो कुछ भी हमें करना है वो कैसे करना है, वो उसके लिए फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, वो सारा अपने को देखना बहुत आवश्यक है। देन ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू प्लेस मेकिंग कैन बी डन। प्लेस मेकिंग एक तरह से एक फिलोसफी है, और अदर इन इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन इट कैन ट्रांसफॉर्म द स्पेसिस with the help of course, I mean that includes another dimension where ideas of the people can be brought for. So circular economy, a sustainable mobility. Sustainable mobility means basically ये हमारा access, जो मोबिलिटी के किसी जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को पकड़ने के लिए एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस होना चाहिए तो इट्स नॉट ओनली दैट हमने कहा यहाँ एक्सेस है वहाँ गए और कर लिया। अगर मैं कार लेके जा रहा हूँ तो मेरे को कार खड़ी करने के लिए जगह तो चाहिए, यानी सम काइंड ऑफ पार्किंग स्पेस सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट। देयर आर मैनी मोर। देन सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स इट्स नॉट दैट जैसे यूज एंड थ्रो वाली चीज़ खत्म होनी चाहिए। यूज एंड थ्रो में ख़त्म होने का मतलब जैसे कोई भी एक वेस्ट है या कुछ भी है, वो इट शुड नॉट बी कंप्लीटली वेस्ट, इंस्टेड दैट कैन बी रीयूज सॉर्ट ऑफ थिंग। तो रिसोर्सेज कैन बी रीयूज्ड दैट वे। देन नेक्स्ट कम्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द अर्बन गवर्नेंस। इवोल्यूशन ऑफ अर्बन गवर्नेंस समझना बहुत भी एक अच्छा प्रयास है कि ओरिजिन जो था हमारा अर्बन प्लानिंग का, वो इवन ब्रॉन्ज एजेस से दिखता है। देन इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह जो कुछ भी थी, वहाँ पे भी बहुत एक्सकेवेशन किया गया, तो वहाँ पे भी आपने देखा कि एग्जिस्टिंग प्रूफ्स रिवील होते हैं। एफिशिएंट वाटर सप्लाई सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवरेज सिस्टम वाज देयर एग्जिस्टिंग एट दैट हड़प्पा एज ऑल्सो। Similarly, in the ancient India, there's Manasaras, शिल्प शास्त्र एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये भी इसमें भी टाउन प्लानिंग प्रिंसिपल्स को बताया गया है। दे आर स्टिल अवेलेबल। एंड इसी समय में अयोध्या, वाराणसी, मदुराई, कांचीपुरम एंड ये सारी उसी समय के प्लान टाउन्स का टाइम है। देन नेक्स्ट कम्स द मौर्यन डायनेस्टी। इसमें भी काफ़ी मॉडर्न डायनेस्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाते थे विद द वेल प्लान्ड फोर्टिफाइड कैपिटल, सो दैट जो शत्रु लोग हैं, एनिमी है, उतना अफेक्ट ना पड़े। जैसे पाटलिपुत्र की एक एग्जांपल है। देन कम्स द मुगल एरा। मुगल एरा में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया उन्होंने, स्पेशली विद द जो उनका जो मस्जिद वगैरह उस समय जो हुआ करती थी, वो और बाज़ार दोनों की लोकेशन इस तरह से थी कि आई मीन दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग। और उनकी प्लानिंग में आप देखिए उनके जो शहर बसाए उन्होंने उस समय, देखो गार्डन सिटीज़ एंड डिज़ाइन मोन्यूमेंट नोटेबल आर देयर। दीज सिटीज़ आर फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद, ओल्ड दिल्ली में, ये सब जो हैं बड़ी फेमस हैं। देन कम्स इन 1882 में लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो हैं वो ही आज रिकॉग्नाइज किए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड एज फादर ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। इनिशिएटेड वो इन्होंने, जब वो यहाँ पे वाइसराय थे, दिस वाज इन 1882, उस समय काफ़ी इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे। एंड वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द ब्रिटिश इंडिया। आज जो हम जो देखते हैं, जो प्रेजेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो फॉर्म स्ट्रक्चर जो देखते हैं, वो लॉर्ड रिपन के जो कल्पना थी उसी के ऊपर आधारित हैं सारे। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम सर, इफ यू कैन क्विकली रैप। ओके। सो एनीवे, सो स्टिल आफ्टर दैट तो बहुत सारे जो है इसमें बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट वगैरह सब जो हुए। देन पैट्रिक गिडीज इज इम्पोर्टेंट वन। पैट्रिक गिडीज ने क्या किया था, ये एक इंदौर का मास्टर प्लान भी उन्होंने बनाया था उस समय। तो ये सब करने के बाद नेक्स्ट आई कम टू आवर प्रेजेंट अर्बन सिनेरियो। प्रेजेंट अर्बन सिनेरियो में अपन कह सकते हैं कि आज की डेट में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम है, अर्बन सिस्टम है एट द मोमेंट। ऑलमोस्ट 11% ऑफ द टोटल ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन इंडियन सिटीज़। अर्बन ग्रोथ
is expected to contribute around 73% of total population increase. So this way you see the very rapid urbanization is taking place. Then of course there's some facts and figures you can see on there. और census towns में कितने almost 14.4% of urban population is there. Statutory towns में भी 84.5% urban population is there. This is very alarming sort of thing. Then जो issues हैं, issues are very common, जैसे traffic congestion, unavailability of the service land, air pollution, climate change का consequences, flooding, all these things are there. Then comes the other issues, this simple, all very common kind of issues are there. जैसे lack of planning in cities and regions, ये सब चीज़ें हैं. तो इस समय जो है ना, जो स्थिति है अर्बनाइजेशन वगैरह की, जो अभी जो पहले बताया, तो उसके लिए अपन बिजनेस एज यूजुअल नहीं कर सकते. We need to do some changes. So definitely re-engineering or the reinvention of this kind of thing is very important. एक और प्रॉब्लम है इज अबाउट द लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी. इंस्टीट्यूशन के लिए क्लैरिटी नहीं, देयर सो मेनी ओवरलैपिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर. एंड देन 74th अमेंडमेंट में हमने कहा था कि सारी जो प्लानिंग फंक्शंस हैं वो सारे लोकल बॉडीज़ को दे दिए जाएंगे. वो आज तक भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाए हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. एंड सिमिलरली उसमें जैसे कहा गया मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन कमेटी, ये इंडिया में अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हार्डली 3 या 4 बनी हैं, उसके आगे अभी तक नहीं बन पाई है. इंदौर इज़ ऑल्सो ट्राइंग हार्ड कि यहाँ पे भी एक MPC बनाई जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है. देन another is most important difficult problem is that कि lack of adequate technically qualified planners in India. TCP और NIUA और नीति आयोग तीनों ने एक स्टडी ऐसी की थी जिसमें उन्होंने देखा कि अभी 12,000 पोस्ट ऑफ अर्बन टाउन प्लानर्स आर रिक्वायर्ड इन द कंट्री. लेकिन आज की डेट में 4,000 सैंक्शन पोजीशन है टाउन प्लानर्स की इन स्टेट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट. अगर ये ज़्यादा इसको कंपेयर किया जाए तो यू विल फाइंड दैट हार्डली 1 टाउन प्लानर फॉर 11 अर्बन सेंटर इज देयर. देन देयर आर सो मेनी चेंजेस. हम लोग जो है ना, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे अक्सर कहते हैं कि सब हमारे लड़के ने इंजीनियरिंग कर ली, या डॉक्टरी कर ली, मेडिकल कर लिया, MBBS कर लिया, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड सॉर्ट ऑफ थिंकिंग. आज हमारे यहाँ B प्लान, M प्लान सब कुछ है, लेकिन अभी तक वो स्टेज नहीं आ पाई जब बन के हमारा लड़का प्लानर बन गया, बिकॉज ऑफ द नॉट वेरी मच अवेयरनेस ऑफ दैट थिंग. सिमिलरली अभी क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इवन AICT में M प्लान के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्लानिंग के करीब 25 नोमेनक्लेचर अवेलेबल हैं. Then next comes about the urban and rural planning. There is hardly any synergy between these two. So we did a lot of things, UDP, PFI guidelines, then all these URDPI, FI guidelines 2015 में बनाई थी. लेकिन सब में चेंज होने की बहुत आवश्यकता है. अभी कुछ सिटीज़ तो ऐसे हैं कि जिनमें डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स बने हुए हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स इतने पुराने हो चुके हैं, उसके बाद अभी तक उसके रिवाइज नहीं किए हैं. हालांकि इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बनाई हैं. एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे देश में म्यूरल सिस्टम है. मेयर जहाँ पे है जो सिस्टम है, उसमें इट इज़ जस्ट उसमें कोई मेयर सिस्टम है, ही इज़ ए टाइटुलर हेड ओनली, लेकिन विदाउट एनी पावर्स. मेयर के पास कोई पावर नहीं है, जबकि सारी पावर इज एक्यूमुलेटेड विद द म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट. तो ये अपने को बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. एंड दिस मैं नहीं कह रहा है, दिस इज बीइंग, अभी रिसेंटली देयर वाज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म की थी, जिसमें नीति आयोग, TCPO, NIUA, उन्होंने सभी लोग शामिल थे. उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें इसके बाद पे काफ़ी चिंता जताई गई है. देन सेकेंड थिंग इज़ अबाउट जितने टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हैं पूरे देश में, इनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें कम से कम 4 डिपार्टमेंट ऐसे, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश उसमें करके, कि जहाँ पे प्लानिंग का हेड जो है वो अर्बन प्लानर नहीं है. देन ऑफ कोर्स
ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, लेकिन इनके बारे में अपन पहले ही बता चुके हैं. 56% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अर्बन. So we have already mentioned about that. It's not that. Then next comes about the mega cities. हमारे जो projections हैं वो 2018 में जो थे ब्लू कलर के और 2019, 2022, 2030 में जो expected है. So you can say that what kind of rapid urbanization is taking place. Similarly, this is all about the next is about the global scenario of the urbanization. इसमें आप देखिए कि इंडिया का जो परसेंटेज अर्बन है वो करीब 34.03% है, और जबकि अगर इसको टोटल वर्ल्ड का अर्बन पॉपुलेशन से अगर रिलेट किया जाए तो इट कम्स अराउंड 11% अर्बन, आई मीन एज कम्पेयर टू इन द वर्ल्ड, थ्रू इन द वर्ल्ड. जहाँ तक मध्य प्रदेश का है तो इसमें नगर निगम करीब करीब 16 हैं, नगर पालिका करीब 98 हैं, नगर परिषद करीब 298 हैं, टोटल 407 अर्बन बॉडीज़ हैं. देन आई थिंक दिस इज़ अ मेजर जो मेरा उसका जो क्रक्स ऑफ द था इज़ वेरी बेसिक, वो मैंने यहाँ पे कर दिया. आई थिंक नेक्स्ट विल सी व्हाट वी कैन डू. Thank you, sir. Thank you for your wise words of wisdom, sir. Next, we have Dr. Alka Bharat. She's an academician, so she'll give us that point of view. आप सभी को नमस्कार. This is आप सभी को नमस्कार. I will thank all my earlier panelists and all those who have spoken in the morning. सबने मेरा काम बहुत आसान कर दिया. Dr. Vaidya, he said something about we have ingredients, we have recipes. खाना अच्छा क्यों नहीं बन रहा? Let's see क्यों नहीं बन रहा. और जो खाना अच्छा बना है हमको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? That also we'll see. If just see on the screen, I have used a term scenarios. काल्पनिक भी हो सकते हैं, यथार्थ भी हो सकते हैं. But we have to build. If we believe in जो सपने नहीं देखता वो जी नहीं सकता. So we have to understand there's something much more than what we think, something much more than what others make us think. Let's see how things go. Where this sir की ingredients देखते हैं. Very quickly going through some facts, some efforts, and some resultants. These are few facts all of us know. Population is changing and it is creating ripples. कब तक हम इस बात को लेंगे कि हमारी जनसंख्या बहुत है? The paradigm has shifted. हमारी जनसंख्या बहुत है, इसलिए हम rich हैं. Now we are worried about चाइना को कब पीछे छोड़ेंगे? Because we have understood it's human resource and human capital. If we are rich in capital,
We are rich in resource. How best we use it? These are few facts which shows that the disparity, the bridge between urban and rural, it's going fast. Fine, it's going fast. Engine is there. It will take us to the destination. But we have to design the destination. We have to make it, where do we want to go? How do we want to go? And why do we want to go? So very quickly, going through these facts, which I'm not going to read, it's just to establish a background, कुछ connect करने के लिए। मैं आगे क्या बोलूंगी? सबने पहले क्या बोला? So just a visual connect, right? So there is demographic change leading to economic change, socio-economic system change, and natural system. Very passionate about natural system. So this is where we have to put a stop. जो मूक है उसको कुचलना नहीं. Nature doesn't speak, but you will see what nature is showing to us. We have to have a very clear life, not and blissful ignorance. Ostrich life नहीं जीनी, दिख रहा है, पता है, लेकिन चलना नहीं. क्यों नहीं चलना? So because of this, there are multiple streams which are going. We are putting our efforts. यहाँ पे गड्ढा भरो फटाफट दूसरी तरफ जाओ. It's a contextual, it's a contingent plan, ad hoc planning. जो दिख रहा है उसको ठीक करो, आगे जाओ. But till when? Till when? So we have a related change in governance, moving from in-person to virtual to so many. Other figures which have started showing results on natural systems. Forest होने चाहिए, लेकिन रखेंगे कैसे? Don't know. We are just waiting for Forest Act. We are waiting for Water Act. We are waiting for Air Act to work for it. हमने क्या किया? Nobody is worried. उसने क्या किया? उसको करना चाहिए. Now, if we continue with this style of life, I think few slides after this, we'll see what is going to happen. Now, this is where something to speak about water resources. हर कोई इस स्टेटमेंट से बहुत खुश है. नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर पानी को लेके होगा. तो क्या चुपचाप बैठे? No. So what to do? It's part of governance. Who to do? Who is going to take the reins? If you just see the last one, the urban effect is a multiple effect. It's a compounding effect. It has to do everything with water, electricity, infrastructure, transportation, everything and anything that keeps you comfortable and that makes you worried. So very quickly, not going through these challenges, not repeating the challenges, I tried to make use of some findings by Urban Digital Mission and Niti Aayog, echoing the same which other panelists sharing the dice with me and the early ones they have said. There's lack of land, there's lack of infrastructure, it's master plans, that is any documents for our help. They are outdated, mushrooming of slums,
inappropriate control regulations, some multidisciplinary, multi-sectoral requirements, this dimension is lacking, lack of citizen-centric process, technical incompetency. And the last one, which is added dimension, we have lack of preparedness towards what we say as disasters. Disasters along with upcoming threats. Finally, I want to sum it up. It's weak urban planning, weak municipal finances, infrastructure deficit, lack of capacities. Fine, this is well accepted, no issue. Safed pura safed nahi hota, kala pura kala nahi hota. Still, this is it. But we have to understand, we belong to this system itself. Just by crying does not give solution to it. Long back, ARC2 has given a statement that our governance needs to be re-engineered. So this is not a new term. It must be decades back. What did we do? So whatever we did, let's take its re-engineering. It did not work, that's fine. Right? And if we are looking forward towards SDG 11, that needs to be Dhoni ka helicopter. So we cannot just play push and push. There has to be something which is revolutionary in nature. Apart from agencies and all, we have a very robust research is going on. Just to mention one, I don't say this is the best I say. It's just an example to quote. We have a ready-made material with us. How many of us did we ever visit these? Sorry, most of us, no? Right, so when we have helps available with us, let's make use of it and then see whether it is working or not working. It's a good research exclusively for Indian cities done by people sitting outside area. So we all sitting at the grassroots could be better solution providers. Now, based on this, some policies have been framed. National Urban Policy Framework, thanks to an AIIUA headed by Dr. Vaidya. Lots of efforts, lots of out-of-box efforts, lots of conventional efforts, they have been brought to public notice. It's not only the reports which are prepared, nicely wrapped and kept in our cupboards. It's for public. So this report by itself also highlights something to be done. I'm very sorry for some glitch. The points I highlighted was urban planning and the governance one, right? And for this, what they have suggested, it's only one which I've taken out of 10, that the system needs to be dynamic. The system needs to be iterative and continuous. So the efforts are all in place. Ingredients are there. How best it can be put in practice, government is also putting efforts. Lots of acts, lots of regulations, lots of liberties, and lots of funds also. कब तक पैसे के लिए रोएंगे?
in the morning itself, and lots of appreciation too. Indore Municipal Corporation, earning more than double the amount through green bonds. हम सब क्यों सो रहे हैं? This is a wake-up call. Wherever you put efforts, you will definitely get some results which makes you much more happy than you think you should have been. Now, with this, I'm sharing this with Milinji. Thanks a lot to his agency as well, where he has tried to put non-parametric, non-statistical aspects into values. अच्छी है, नहीं है. We are able to understand. If I say whatever can be measured, could be managed, this is the job he has done. तो हमारे सामने कहानी भी है कि हमारी गवर्नेंस क्या कर रही है, हमारी गवर्नेंस किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे है. After this, the complete story, we have everything, we have anything that is required to make a system work well and to be appreciative about. लेकिन कहानी कुछ और है. चलते हैं, देखते हैं यथार्थ में क्या है. Ma'am, sorry for interrupting, but just 5. if you can quickly. Right. The temperature is rising. कितने एसी खरीदेंगे और कितनी टेम्परेचर को बढ़ाने में इंस्ट्रूमेंटल होंगे. There are some facts which are put in front of you, but the infographic is very clear. The one on the left side is 2019. We have touched, this is carbon, which the slide is showing. The carbon emission has almost doubled, or 3 times, which is there. Its results are yet to come. The temperature is there. We have maximum touching somewhere around 48.4. This is average. This is average. Land surface temperature, very surprisingly, has touched even 60 degree in India. हम तो वो जो न्यूज़ के बाद आती है ना, उसमें सुनते रहते हैं, ओ चुरू में इतना हो गया, अमृतसर में इतना हो गया. But that is not LST. Land surface temperature has touched even 60 degree, much more alarming then. When we increase the limits, we eat up biodiversity, we eat up fertile land. ये सब कौन देखेगा? हम सब मिलके देखेंगे. But this is what the ground reality is. Moving much ahead out of water supply, sewer, sanitation. Much more which is happening at very fast rate and irreversible to happen. If you can see the year, I would like you to have attention on. The infographic in front of you is of Banaskantha district from Gujarat. 2015 में फ्लड है, 2016 में ड्रॉट कैसे हो गया, 2017 में फ्लड है, 2018 में ड्रॉट कैसे हो गया, लेकिन हुआ. That's the truth. The truth is in front of you. These are something which the science and technology has helped us to know. So we have to understand something much more than this. So what should be done? All these clear responsibilities, common pool resources, monitoring, evaluation. We have to audit ourselves. We have to audit the activities such that, just now, Kulshay sir has said, business as usual nahi chalega. So we are moving from business as usual
towards long-term integrated approach. How to do it? It's evidence-based. I've shown some snippets. Others, they will be talking something more. You know much more. Everybody knows. Put them together. Khichdi bhi to achhi lagti hai. Let's try khichdi. No issue. So we have neat and evidence-based. We have to put different layers of climate risk, everything. Smart. Smart term is smart now these days. Everything you do needs advertisement. Smart term is the one. So it has to be time sensitive. Finally, it should result into an informed governance. आप जिसके लिए कर रहे हैं उसको पता तो चले कि उसके लिए क्या हुआ, वो कितना safe है. One thing which the government has started, and I as a one, appreciate competitive federalism. आप सब इंदौर वालों के चेहरे पे तो देखिए, सुबह जो एंकर was speaking, every second term was, आइए आप इंदौर में हैं. So we have to be possessive. We have to own up that is what gets created through competitive federalism. If we put the complete federal system towards competitiveness, we will definitely have better results to come. There are few approaches, but I'll just pick one: scenario building. मैंने जिससे शुरू किया था, सपने तो देखिए. So let's consider scenario building as what you don't have in front of you, but you can build upon. There are few concepts, okay, leave it. Now scenarios could be single attribute. एक ही aspect को लेके कर सकते हैं. और scenarios could be non-linear, that is multiple aspects. If I just go through these single linear scenario building. Sorry for interrupting, ma'am. This is the last one. This is the last one. I just want to bring attention of everybody. Have we ever tried to create scenario of floating population? आप लोग कभी भी किसी भी religious place पे गए हो और वहां पे खूब भीड़ है, आपने कभी सोचा उस शहर के रहवासियों का क्या होगा? So this is what we have as scenario building. We have some systems at our help. Similarly with this, there could be non-linear across the sectors, different scenarios. I've just built one. बहुत डरा दिया. कुछ खुशी के पल के साथ वापस चले हम. Yes, there are solutions to it. A very small attempt has been made at our end to understand कि हम कैसे बचा सकते हैं natural resources, हम कैसे अपनी biodiversity को safe रख सकते हैं. Please see our research work, which is already published and is publicly available in the Journal of Sustainable Development and World Technology. The other one, आप आपस में फ्लड और ड्रॉट को मिटिगेट कर सकते हैं. We have another research work which has got published in Journal of Water and Climate Change. So डर के जाने की कोई जरूरत नहीं. डर के आगे हमेशा ही जीत है. That's why my end slides have all these good ending. हमारा पास solution है, बस करने की थोड़ी सी जरूरत है. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for your graphical and illuminating presentation, ma'am. Now let us zoom in a bit, just like Hitesh sir said, and let's focus on a particular problem. So the next speaker, Mr. Saurabh Manuja, he is going to speak on Sansadhan Portal, which is jointly developed by GIZ and MOVA. Please.
आप सब लोगों को नमस्कार। मुझे लग रहा है कि काफी लोग उबासियां ले रहे थे, कुछ लोगों को झपकी लेते हुए भी देखा। तो अभी तक सारे लोग जो है मोस्टली बात कर रहे हैं कि या तो ज्ञान मिला नहीं है या फिर जो है वो सिनेरियोज आगे बहुत खतरनाक हैं। तो मुझे भी डर लग रहा था वहां बैठ के कि अगर 60 पहुंच गया तो कैसे होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब हमने बोला कि वील रीइन्वेंट अर्बन गवर्नेंस, सो वी स्टार्टेड विद रिफॉर्मिंग अर्बन गवर्नेंस कि ऑलरेडी सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, नकारा नहीं जा सकता। उन्हीं सिस्टम्स को और बेटर पहले बना लेते हैं। तो उस सोच के साथ एक पोर्टल है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। पोर्टल के बारे में मैं आगे बात करूंगा, मेरे पास थोड़ा शॉर्ट टाइम है। मैं पहले इशू के बारे में बात करता हूं। मैं वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं, मैं वेस्ट की बात करूंगा। सॉरी, गवर्नेंस उसका पार्ट है, बट वो एक इशू है गवर्नेंस का बहुत बड़ा, और शायद हम ऐसे शहर में हैं जिसने उसी के ऊपर जीत पाई है। प्लास्टिक एक बहुत बड़ा इशू हम लोगों के लिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम देखें तो लगभग हम 11 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल जनरेट कर रहे हैं, और 150 मिलियन टन तो पहले से ही मरीन एनवायरनमेंट में है। पूरे कंट्री के बराबर प्लास्टिक वेस्ट फ्लोट करता है। एशिया पैसिफिक रीजन की अगर आप बात करेंगे तो 49% प्लास्टिक जो है वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है, और लगभग 38% कंज्यूम भी यहीं पे हो जाता है। तो अगर आप ग्लोबल सिनेरियो में बात करें तो बहुत बड़ा चैलेंज प्लास्टिक वेस्ट का साउथ एशिया पैसिफिक रीजन से आ रहा है। इंडिया का प्लास्टिक कंजम्पशन 13.5 किलो पर पर्सन पर ईयर है, जो कि ऑब्वियसली ग्लोबल सिनेरियो से कम है, जो 28 है। मगर इशू क्या है कि प्लास्टिक, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, मैडम भी, सर भी बता रहे थे कि हम लगभग 11% अर्बन पॉपुलेशन लेके चलते हैं पूरे वर्ल्ड की। इंडिया जो कि सिर्फ 2.6% है, और लगभग 1/6 पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की यहां पे रहती है। तो इन टर्म्स ऑफ भले पर कैपिटा हमारा कम हो, पर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन बहुत है। तो उसके कारण हो क्या रहा है कि 10 में से 2 नदियां जो लगभग 90% प्लास्टिक वेस्ट कैरी करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो इंडिया में लाई करती हैं। तो ये मरीन लिटर इशू इसीलिए इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा है। कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही, प्लास्टिक से अच्छा मटेरियल नहीं मिलता हमें। मगर प्लास्टिक के साथ इशू क्या है कि वो बहुत लंबा टाइम लेता है डिग्रेड होने में। 25 साल में थैली डिग्रेड होती है, 450 साल में प्लास्टिक की बॉटल, और अगर फिशिंग नेट्स की बात करेंगे तो 600 साल लगा देंगे। और देखा ये गया कि लगभग 3/4 प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जमीन से आता है। जमीन से मतलब शहरों से। ये फोटो हमारे एक प्रोजेक्ट साइट का है, कानपुर का। जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो एक हॉटस्पॉट था, विजयनगर चौक था, वहां पे जो है वो इस तरीके से प्लास्टिक फैला रहता था। नीचे आप देख सकते हैं, कोशिश करी जा रही है कि आगे ना जाए, मगर निकल ही जाता है। अब थोड़ा सा बेटर हो गया है, वहां पे ड्रेन ट्रैप्स लग गए हैं, एक MRF लग रहा है, प्लास्टिक फिशर आ गया है। बट इशू क्या है कि सिटी जो है वो फ्रंट लाइन पे है। अगर इशू हम बात करें कि प्लास्टिक वेस्ट को हमें रोकना है, तो शुरुआत जो है वो फ्रंट लाइन से करनी पड़ती है, बॉर्डर से पहले शुरू करना पड़ता है। तो बॉर्डर शहर है। ओशन कंजर्वेंसी रिपोर्ट ने 2020 में कहा था कि 3/4 प्लास्टिक लैंड बेस्ड सोर्सेज से आ रहा है। तो ये क्लियर है कि हमारा टारगेट जो है वो सिटीज हैं जब हम बात करें। तो आइए, अगर हम इसको दोबारा से देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट इशू जो है वो मेजरली लैंड बेस्ड सोर्सेज से है। सिटी वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। तो खाली सिटी वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेंथन करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके आगे सोचना पड़ेगा।
हमें प्रोसेसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, जो मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उसको कहाँ लेके जा रहे हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आज एक शहर है, सोचता है कि मैं सबको बहुत अच्छी सर्विस दूंगा, सारे शहर से वेस्ट कलेक्ट होकर आएगा, सेग्रीगेटेड कलेक्ट होकर आएगा, अगर उसको वो आगे लिंक नहीं कर पाया, प्रोसेसिंग में नहीं दे पाया, तो अल्टीमेटली फिर वो डिस्पोजल साइट पे चला जाएगा और कहीं ना कहीं डिस्पोजल साइट फिर उसको फ्लोट करके जो है वो नदियों नालों की तरफ ले जाएगी, तो इशू सॉल्व नहीं होगा। तो हमें अप्रोप्रिएट लिंकेजेस की जरूरत है। इसी सोच के साथ एक पोर्टल आया संसाधन, मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। पहले कुछ सवाल है। हम इंदौर में, मेरा सवाल यह है, कितना मटेरियल एमआरएफ पे अवेलेबल है रिसाइकलिंग के लिए आज की डेट? दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश स्टेट ने कितना वेस्ट मटेरियल एनर्जी रिकवरी के लिए भेजा पिछले महीने? कितना मटेरियल रिसाइकलिंग के लिए गया, एनर्जी रिकवरी के लिए गया, डिस्पोजल के लिए गया या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए डाइवर्ट किया गया? या अगर हम पूछें कि कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो एमआरएफ डील ही नहीं करता, जिनमें प्लास्टिक्स की बात करें तो 10-12 तरीके के प्लास्टिक्स हैं, कौन से मटेरियल हैं जो वो डाइवर्ट ही नहीं कर रहा रिसाइकलिंग के लिए? ये सवाल वो थे जो हमारे पास भी थे। हम रिसर्च कर रहे थे अपने 3 शहरों में प्रोजेक्ट में, कानपुर, कोची और पोर्ट ब्लेयर। और जब हम इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे तो हम भी कंफ्यूज थे, क्योंकि सिटी को ही नहीं पता होता कि हो क्या रहा है, क्योंकि एमआरएफ शायद कोई और ऑपरेटर डील कर रहा होता है और सिटी को सिर्फ इससे मतलब होता है कि रिसाइकलिंग कितनी हुई, ब्रॉडली बता दो कितना प्लास्टिक तुमने डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट करना है स्वच्छतम पोर्टल पे। तो इस सोच के साथ पोर्टल आया संसाधन, और संसाधन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने होस्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए ही बनाया गया था और आज की डेट में वो एसबीएम पर है और पायलट चल रहा है उसका। 7 शहर उसके अंदर, 8वां शहर इंदौर भी है उसके अंदर। तो ये इशू था जब हमने स्टार्ट किया कि सैप कंपनी है जो मोस्टली सिस्टम्स बनाती है, और उसने कहा था कि लेस देन 1% डेटा जो है वह एनालाइज होता है, तो हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं लग पाती कि क्या है। मैकेंजी ने भी कहा कि डिजिटाइजेशन जो है वो प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है, गवर्नेंस को भी एनहांस कर सकता है उसकी सर्विसेज में। और डिजिटाइजेशन के साथ ये तो है ही है कि रेप्लिकेबिलिटी बहुत आसान है, यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, डिजिटल एप्लीकेशन की बात हुई कि सिटी के लिए अलग सिस्टम बनेगा, स्टेट के लिए अलग बनेगा और नेशनल लेवल के लिए अलग बनेगा, पर जब बनाने बैठे तो समझ में आया डिजिटाइजेशन का पावर। एक सिस्टम नेशनल लेवल से जिसके पास स्टेट के अथॉरिटीज हैं, सिटी की अथॉरिटीज हैं, एमआरएफ लेवल की अथॉरिटीज हैं, तो बेसिकली एक डिजिटल सिस्टम पूरी कंट्री के लिए। ये आया कहां से? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ने कहा था कि आपको हर सिटी को और विलेज पंचायत को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी या सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी देनी है। अब आप फैसिलिटी तो दे देंगे पर आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा वहां हो क्या रहा है, तो उस सोच के साथ ये आया। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम इस सिस्टम लेके आए, सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग मरीन एनवायरनमेंट, जो सिटी पे पायलट करता है, स्टेट पे कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, नेशनल लेवल पे उसको और आगे लेके जाता है और नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आपको नेशनल लेवल इंडिकेटर की तरफ पॉइंट आउट जरूर करूंगा, जो कहता है कि महुआ जो है वो नेशनल डिजिटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और स्टेट लेवल कंपैरिजन हो सकता है लेवल ऑफ रिसाइकलिंग का। 2011 में एक बेसलाइन स्टडी किया गया, एक कंसल्टेंट ने हायर किया गया था और उसने करीब 85+ इंटरेक्शंस करे। कोविड टाइम था, बहुत सारे इंटरेक्शन मुश्किल हो रहे थे पर किए गए। और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा कोविड लॉकडाउन खुला तो 6 एमआरएफ्स में पायलट भी किया गया। साथ ही साथ उसको डेटा को बैकअप करने के लिए मटेरियल वेस्ट कैरेक्टराइजेशन स्टडीज भी किए गए कानपुर में, पोर्ट ब्लेयर में।
और उस समय 52 कैटेगरीज ढूंढी गई थी सब मटेरियल्स की, बाद में वो बढ़ के 68 हो गई। एक पोर्टल आया संसाधन, ये आप अपने मोबाइल पे भी एसेस कर सकते हैं, sansadhan.sbmurban.org। ये इसका कोई बटन नहीं है, ये अभी यहीं पर अवेलेबल है, बहुत जल्दी ये बटन भी आपको एसबीएम की वेबसाइट पे मिलेगा। तो ये क्या करता है कि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एमआईएस सिस्टम है स्वच्छतम, ये डेटा नीचे है उसके, मतलब होता क्या है कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज जो हमारे शहर में हैं वो इसमें लॉगिन करती हैं, वो वहां पे अपना डेली डेटा पंच करती हैं इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर में, और एंड ऑफ द मंथ वो रजिस्टर पुश कर देता है डेटा स्वच्छतम पोर्टल पे। तो मंथली एमआईएस सिस्टम जो एग्जिस्ट करता था वो वहीं एग्जिस्ट करता है, एक नीचे के लेवल से डेटा ऊपर फ्लोट कर जाता है। मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, एक स्टेट को समझ में आता है कि मेरे सिटी का परफॉर्मेंस कैसा है, उस सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर एमआरएफ का परफॉर्मेंस कैसा है, एक एमआरएफ को दूसरे सिटी के एमआरएफ से कंपेयर किया जा सकता है, एक सिटी को किसी भी स्टेट के दूसरे स्टेट से सिटी से कंपेयर किया जा सकता है। तो ये 68 कैटेगरीज जो आइडेंटिफाई करेगी पोर्टल के अंदर, 14 प्लास्टिक कैटेगरीज हैं। इट ऑल्सो हैज ह्यूमन हेयर, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, बनाना स्टेम, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजों का प्रभाव रहता है। तो ये विश लिस्ट थी और विश लिस्ट के हिसाब से 68 सब कैटेगरीज निकल के आई। और ये ट्रैक क्या कर रहा था, ये ट्रैक कर रहा था कि बेसिकली कितना मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है। अब ये क्यों पता कर रहा है कि अवेलेबल क्यों है स्टॉक में, ताकि वो मटेरियल रिसाइकलर्स को अवेलेबल किया जा सके। बेसिकली इस पोर्टल के ऊपर रिसाइकलर या कंपनीज भी लॉग इन कर सकती हैं साइन अप करके, और दे आइडेंटिफाई कि कितना मटेरियल कहाँ अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई रिसाइकलर हूं, मैं लॉग इन करता हूं एंड आई एम इंटरेस्टेड टू लुक एट पेट, तो ये पोर्टल मुझे पूरा बताता है कौन से स्टेट में कितना पेट अवेलेबल है रिसाइकलिंग के लिए, और मैं उनसे इंक्वायरी भेज सकता हूँ उस पर्टिकुलर एमआरएफ पे, मैं उसको फोन कॉल कर सकता हूँ, ईमेल भेज सकता हूँ। Sir, since we are running ahead of 1 time, minute. please. And how much of this material goes out for recycling, waste to energy, road construction and disposal? तो बेसिकली 4 ऑफ रूट्स और 1 स्टॉक अवेलेबल, ये सारी चीजें हैं जो पोर्टल प्रोवाइड कराता है। तो बाकी की जो बाहर की जो 4 चीजें हैं, ये बेसिकली स्टेट, सिटी और नेशनल लेवल को मॉनिटर करने के लिए, और बीच वाली चीज जो है वो मार्केट के साथ कनेक्ट करने के लिए। दिस इज हाउ पोर्टल लुक्स लाइक। ये उसके लॉगिन करने के बाद के फोटोग्राफ्स हैं। यहाँ पे आप जो नीचे पाई चार्ट देख रहे हैं, ये बताता है कि मटेरियल का फ्लो कैसे हुआ है बाहर एक पर्टिकुलर एमआरएफ का एक पर्टिकुलर ईयर में। ये बताता है कि कौन सी 17 कैटेगरीज के मटेरियल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और अगर आप हम इसको क्लिक करते हैं तो जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स आप देख सकते हैं आगे कि कौन कौन से मटेरियल का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर हम परफॉर्मेंस देखना चाहते कि रिसाइकलिंग कितनी कितनी हुई है ओवर द ईयर, तो आप देख सकते हैं सारी 17 कैटेगरीज और डिफरेंट मंथ्स में परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है 23 में। इसी के साथ मैं अगर इन सब कैटेगरीज को क्लिक करूं तो उसकी सब मटेरियल के परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे ये समझ में आ जाएगा कि प्लास्टिक डील हो रहा है पर रबर एंड टायर डील नहीं हो रहा। तो रबर एंड टायर डील नहीं हो रहा मतलब मेरा एमआरएफ रबर एंड टायर में डील ही नहीं कर रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे शहर में रबर एंड टायर निकलता नहीं हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं लिंकेज नहीं है। लिंकेज नहीं है तो हो सकता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई कैन इंटरवीन एंड हेल्प that MRF to find a linkage. So basically these are all the levels which I have talked about: national, state, ULB, MRF and company level. और पोर्टल पे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। मैं MRF के तौर पे तो आप समझ ही गए होंगे कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी अपना परफॉर्मेंस देख सकता है। एक जो और बेटर जो बेनिफिट ये है कि हर लेवल की एक जैसी रिपोर्ट दिखाई देती है। मतलब अगर मैं एज अ सिटी रिपोर्ट देखना चाहता हूं, आज की डेट में भी डेटा होगा पर एमआरएफ ने अपने रजिस्टर में मेंटेन किया हुआ होगा पर अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो यहां पे एक ही फॉर्मेट में सारी रिपोर्ट्स देखी जा सकती हैं कंट्री लेवल पे। और साथ में कंपनीज को भी लोकेट किया जा सकता है। सिटीज जो है वो लोकेट कर सकती हैं डिफरेंट रिसाइकलिंग फर्म्स को जो साइन अप किया है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मटेरियल्स दे डील इन।
मतलब अगर मुझे चाहिए कि थर्मोकोल का डीलर मैं ढूंढना चाहता हूँ और कोई वहाँ पे कंपनी ने साइन अप किया था और उसने कहा था कि वो पॉलीस्टाइरीन में डील करता है, तो बेसिकली मुझे सर्च करना है सिर्फ पॉलीस्टाइरीन और मेरे सामने सारे लिस्ट ऑफ रिसाइकलर्स आ जाएंगे या ट्रेडर्स आ जाएंगे जो पॉलीस्टाइरीन में डील कर रहे होंगे. सो दैट्स अ वन लाइन मैसेज कि बेसिकली हमें जो रिफॉर्म करना है वो ये है कि जो पहले हम फ्लिंटस्टोन की एज में रहते थे वहां से हमें जेटसन्स की स्टेज पे जाना है. थैंक यू. Thank you. Thanks a lot, sir. Now, moving on with the last presentation, we have Mr. Milind Maske from Praja Foundation. Sir, because of time limit, I request you to. Sir. ओके, मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने के लिए, बट मैं मुंबई से हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी प्रेरित रहेगी मराठी और अंग्रेजी से, तो प्लीज़ संभाल लीजिए उसके लिए मुझे. मेरे पहले के जो स्पीकर्स थे उन्होंने काफ़ी मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने अर्बन गवर्नेंस के बारे में जो बेसिक होता है, जो स्टेटस होता है, उसके बारे में काफ़ी सारा चीज़ें बता दी है, तो मैं उसमें कुछ जानने नहीं वाला हूँ. बट मैं थोड़ा बताना चाहूँगा प्रजा के बारे में, ताकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करूँ. सो हम लोग 26 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, मुंबई दिल्ली में काम करते हैं मोस्टली, बट हमारा एक रिसर्च है जो पैन इंडिया रहा है, जहाँ पे हमने अर्बन गवर्नेंस को मैप करने की कोशिश की है. और उसका एक रिपोर्ट बना था 2020 में, जिसको हम लोग अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स कहते हैं, जिसमें रैंकिंग की गई अलग राज्यों को कि वो लोग कैसे अर्बन गवर्नेंस में काम कर रहे हैं और क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं रिफॉर्म्स के लिए. और इस काम में हमें जब हमें काम करते हैं, हमें बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में हम लोग अर्बन गवर्नेंस को जब देखते हैं तो 3 चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी सोचते हैं. और मुझे लगता है कि अगर उनके बारे में सोचा जाए तो अर्बन गवर्नेंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी आसान रहेगा. फर्स्ट, हमारे शहरों को कौन चलाते हैं. सेकंड, इनफैक्ट पहला जो सवाल है वो सुबह कुणाल जी जो बात कर रहे थे, मल्टीपल एजेंसी से हमारे शहरों को चलाने वाली, तो उसकी तरफ वो पॉइंट करता है. सेकंड, हमारे शहरों को चलाने के क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है. और तीसरा, हमारे नागरिकों को क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उन शहरों को चलाते हुए पार्टिसिपेट करने के लिए. और मैं तीसरे सवाल के ऊपर थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी संस्था जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. एज इंडिविजुअल, एज सिटीजन्स, हमने जो अनुभव किया है उससे प्रेरित होकर हमने उसमें काम किया हुआ है. तो हमें लगता है कि अगर हम लोग नागरिकों के हिसाब से अगर शहरों को चलाने की कोशिश करें, उनके डिमांड्स के हिसाब से, उनके नीड्स के हिसाब से, तो शायद हमारे शहर और सस्टेनेबल हो सकते हैं. एक प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है. इनफैक्ट उसका एक सिंपल मतलब है कि जो काम एक पर्टिकुलर लेवल पे हो सकता है उसी लेवल पे करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर के लेवल पे करना चाहिए. हमारे अर्बन गवर्नेंस प्रणाली में हमारे सेंटर गवर्नमेंट के फंक्शंस काफ़ी स्ट्रांगली डिफाइंड है, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन स्ट्रांगली डिफाइंड है, बट लोकल गवर्नमेंट को हमने उतना स्ट्रांगली डिफाइन नहीं किया है, उनको एम्पावर नहीं किया है. सो उसको अगर करते हैं तो शायद हम इस चीज़ को और बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं. बट ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं है. 74 अमेंडमेंट से जो 30 साल पूरा पहले आई थी, उससे काफ़ी सारे अलग अलग राज्यों में एक सिटीजन पार्टिसिपेशन को लेके एक्सपीरियंस हुए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स बिल्ड हुए. तो मैं 2-3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बोलना चाहूँगा, एंड देन उसमें क्या इशू है और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं आगे चलने के लिए, उसके मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा. केरल की बात आती है, काफ़ी वार्ड कमेटी और एरिया सभा की बात आती है 74 अमेंडमेंट में. बहुत कम राज्यों में वार्ड कमेटी एरिया सभा इम्प्लीमेंट हुआ है. जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ उसमें जितना भी लिटरेचर अगर देखेंगे तो केरल की बात काफ़ी बार आती है. केरल के राज्यों में जो जनक के सूत्रम करके प्लान है, पीपल्स प्लान करके प्रोसेस है, जहाँ पे 6 स्टेट्स में पीपल प्लानिंग होती है, तो उसके बारे में बात आती है. इनफैक्ट बहुत टाइम लोग उसी एक्सपेरिमेंट को लेके बात करते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत अच्छी तरीके से पीपल पार्टिसिपेशन होता है, जिसके बारे में काफ़ी रकम जाना जाता है. आइजवाल, अगर मिजोरम का जो राजधानी उसके बारे में बात करते हैं, तो आइजवाल में 4th टीयर को भी एम्पावर किया गया है. नॉट जस्ट द वार्ड कमेटी, पर हमने उसके नीचे जाके
हमने नॉट जस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बट उसके नीचे जाके हमने वार्ड कमेटी को काफ़ी एम्पावर किया, जहाँ पे इवन टैक्स रिकवरी का और टैक्सेस उनको डायरेक्टली जाता भी है। वो लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्चुअली कचरा उठाने का काम जो 4th टियर है वो करता है, और सिटीजन ग्रुप से बेसिकली। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वहाँ पे। अगर वो एक काफ़ी कॉर्नर के राज्य में जाते हैं, नागालैंड में जाते हैं, तो वहाँ पे वार्ड कमेटी में वॉलंटरी लोग पार्टिसिपेट करके उसमें वहाँ पे काम करते हैं। सो इन 3 राज्यों का मैं जस्ट एग्जाम्पल की तरह शेयर करना चाह रहा था। अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मुंबई में करीब 2003 में एक प्रणाली चालू हुई थी जो जिसमें ऑनलाइन कंप्लेंट्स की प्रणाली चालू हुई थी। आजकल हम सब जगह पे देखते हैं, इनफैक्ट इंदौर में 311 ऐप चल रहा है जो काफ़ी अच्छा है, बट मुंबई में उसकी शुरुआत इस तरीके की प्रणाली की शुरुआत 2003 में हो चुकी थी। उसको आगे चल के काफ़ी इंटीग्रेट किया गया, और जैसे अलग अलग सिस्टम्स आते हैं उसको इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मुंबई में बाद में व्हाट्सएप पे इंटीग्रेशन किया गया, फ़ोन नंबर तो एक ही है ही, वेबसाइट है, CFC सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स है, उस तरीके से प्रॉपर इंटीग्रेट करके कंप्लेंट्स को, नागरिकों के कंप्लेंट्स को सॉल्व करने की एक एंटायर सिस्टम बनी हुई है। पूना में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल रहा है कि उन्होंने एक स्टेप आगे गए हैं। वो लोग इवन बजट मेकिंग में सिटीजन्स के पास से आई थिंक 2008-9 से सजेशन पूछते हैं। जस्ट म्युनिसिपल बजट इंप्लीमेंट करने के पहले एक फॉर्म आता है जो न्यूज़पेपर में ऐड आती है, और प्रॉपर ड्रॉप डाउन्स रहते हैं जिसके हिसाब से लोग अपने सजेशन सुझाव दे सकते हैं, और वो काफ़ी अच्छा तरीके से चल रहा है। मुंबई में आई थिंक इस साल उन्होंने एक बार कोशिश की है, कुछ अलग अलग राज्यों में भी इस तरीके की प्रणाली चल रही है। बट इन 3-4 एग्जाम्पल को अगर देखेंगे तो एक चीज़ निकल के आ रही है कि जैसे हम आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर नागरिकों को इन्वॉल्व करना है। सुबह के पहले सेशन जो पहला टेक्निकल सेशन था उसमें हमने डिजिटाइजेशन की बात की, उसमें मोबाइल पेनिट्रेशन की बात की। सो मे बी दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट। 30 ईयर्स हो चुके हैं 74 अमेंडमेंट को, बट हम लोग वार्ड कमेटी, एरिया सभा उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। सो मे बी समथिंग नीड्स टू बी रीलुक्ड एट। सेम सोल्यूशन को लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो शायद सिटीजन का पार्टिसिपेशन अच्छी तरीके से उसमें ले पाएंगे। अगर हम लोग अभी के करंट सिनेरियो देखते हैं टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ किया जा रहा है, तो 2-3 जगह पे यूज़ होती है। एक ट्रांजैक्शंस के लिए सुबह ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन के लोग बात कर रहे थे, NUDM के लोग बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं जहाँ पे लोगों को पेमेंट करने के लिए या कंप्लेंट्स रेज करने के लिए एक सुविधा दी जा रही है। अगर इसमें देखेंगे तो एक एनालॉजी मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, हमारे पास एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, हम उस सर्विस को लेते हैं, उसके लिए बिल पे करते हैं। अगर बिल सर्विस से खुश नहीं है तो हम लोग एक कंप्लेंट करते हैं। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर एंड अ कंज्यूमर। हमारे शहर आज भी उस तरीके से चल रहे हैं। अगर हमें उनको उससे मूव करके उसको सिटीजन को पार्टिसिपेंट बनाना है, इक्वल पार्टनर बनाना है, तो हमें थोड़ा सा रीलुक करना होगा उसको, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करती है। उसके लिए शायद 2 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक, प्रोएक्टिवली हमें डेटा बताना जरूरी है लोगों को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे शहरों में क्या काम कर रहे हैं। जो पुणे कर रहा है इन अ वे कि वो बजट मेकिंग के पहले पूछता है लोगों को कि आपको बजट में क्या चाहिए, पर उसके जगह पे अगर हम लोग ने सामने से बताया कि आप पर्टिकुलर रोड पे एक अमाउंट स्पेंड होने वाली है, उसके लिए दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टर, उस कॉन्ट्रैक्टर इस दिन काम चालू करने वाला है, इस दिन काम बंद करने वाला है, ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने वाले, इस तरह की प्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देना चालू करेंगे तो शायद लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट आएगी कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसमें। सेकेंड, उसके साथ अगर हम लोग उनसे फीडबैक लेना चालू करेंगे गवर्नमेंट सिटीजन से कि अगर आप खुश थे क्या सर्विस के साथ, दैट विल बी समथिंग विच विल बी हेल्पफुल। उसके आगे जाके अगर हम लोग ने प्लान बनाने के पहले लोगों को पूछा कि आपके नीड्स क्या है, आपके आइडियाज़ क्या है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ओपन एंडेड बना के मतलब नहीं, उसको स्ट्रक्चर वे में ही बनाना होगा ताकि सजेशंस कंस्ट्रक्टिव सजेशन आ सके, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो शायद वो हेल्पफुल रहेगा। मैं एक उस प्लेटफॉर्म में क्या चीज़ें हो सकती है थोड़ा उसके मैं बात करना चाहूँगा। तो हमारे हिसाब से 4 चीज़ें हो सकती है। एक चीज़ एक उसमें लोगों के नीड्स वांट्स क्या है वो पहले से कैप्चर करो।
लोगों को वॉलंटरिज्म के लिए वॉलंटरी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, लोगों को मे बी फीडबैक के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो वहाँ पे। एंड द लास्ट थिंग, वहाँ पे लोगों को, अगर हम लोग गवर्नमेंट कोई प्लान ला रहा है तो पहले से उनको वहाँ पे शेयर करके उनके सजेशन ऑब्जेक्शन पहले से ले लीजिए। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट विल वांट टू लिव विद। आई वाज टोल्ड टू मेक लाइक अ क्लोजिंग स्टेटमेंट, तो मैं सॉरी, तो बेसिकली अगर हमें सिटीज़ को सस्टेनेबल वे से बिल्ड करना जरूरी करना है तो हमें 3 चीज़ें करनी होगी। एक, लोगों के नीड्स को समझना होगा। सेकंड, उनको प्रोएक्टिवली क्या कर रहा है गवर्नमेंट वो बताना होगा। थर्ड थिंग, हमें उस चीज़ को बताते वक्त हमें कोई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बताना चाहिए, लाइक बेंचमार्क डाल के। दैट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू। Thank you, sir. So, because of limited time, we are skipping the question and answer round. And now I would like to take a moment to express our gratitude to each and every one of you for your participation and insightful, valuable contributions. And before I conclude, I would like to extend our heartfelt appreciation to our event organizers, MOHUA, Indore Municipal Corporation, and AIILSG, and their dedicated team that has worked tirelessly behind the scenes to make this a success. And I would also take this opportunity to thank the Vice Chairman of AIGGPA, Professor Sachin Chaturvedi, for his invaluable and support and motivation. And before formally closing the session, I would like a one-liner or a tagline from each speakers of this session as a message from this session to the U20 event in Ahmedabad. And I'll start with I have a tagline on data-driven governance, which I understood from all the speakers, and based data analysis and decision based on data. So, Sir Kulshesh, if you could share your message, please. As regards this, everybody is parcel of that. That means everybody is responsible for that, and everybody has to do something. So the message can be sunshine your city. Sunshine your city by doing ... Next, please, sir. थैंक यू। आई थिंक मेरा मैसेज ये है कि हमने बहुत साल गुजार दिए बातें करने में, अब आए एक्शन करते हैं ग्राउंड में। उससे ज्यादा कोई कार्य नहीं है, बहुत हो गया। अगर इंदौर दिखा सकता है तो बाकी क्यों नहीं दिखा सकते? लेट्स मूव इन टेंशन टू एक्शन। Culture shapes cities, and cities, they inculcate culture. So cities are more than experience. That is it. Thank you, ma'am. Please. Yeah, the time is for digitization, better monitoring, reformed governance, and cumulatively bringing all together to shape a near future. Thank you. Please. Building sustainable cities needs leveraging technology to facilitate citizen engagement, enabling a deep understanding of their needs and concerns, and proactively sharing governance governance data based on clear benchmark. Thank you. Thank you, everyone. Thank you once again for your participation and engagement, and wishing everyone a wonderful day. And now I hand over the mic to the Master of Ceremony. Thank you, sir. With this, we come to the closing of this amazing technical session too, and I would like to thank all the speakers and moderators for sharing their experience on urban governance. And now I will want to thank them by giving a small token of appreciation. For this, may I please call on the stage Shri Suresh Ji Khwade, Councillor IMC, to give the memento to Shri Hitesh Ji. Sir, please.
जोरदार तालियों से स्वागत प्लीज. Now, may I please call on the stage Shri Gajananji Gowde, Councillor IMC, to hand over memento to Anshulji Puria. जोरदार तालियों से स्वागत. Now I would like to call upon the stage Shri Atulji Patel Burhanpur to give the memento to VP Kulshrestha ji sir. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत. Thank you, sir. Now I will like to call upon Srimati Kanchanji Gidwani to give the memento to Dr. Alka Ji Bharat. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत प्लीज. तालियों की आवाज में बहुत कमी नजर आ रही है मुझे. Now I would like to call upon Srimati Sunita Ji Hadia to give memento to Mr. Saurabh Ji. जोरदार तालियां. Thank you, ma'am. Now I would like to call upon DP Tiwari Ji to give the memento to Mr. Milind Ji. Now I would like to call upon the stage for the photo session with the speakers. Thank you all. Within 5 minutes, we will starting our next technical session 3, championing local identity.
improved access to global funding facilities, building. May I have your attention, please? It's time to discuss about framework for improved access to global funding facilities, building a strong local community infrastructure to support planning and design of public spaces, enabling policies and norms in favor of local articles and entrepreneur, discussing on innovative database technology in planning framework, assessing and sharing these practices at global level. For technical session 3, the moderator of technical session is Shri Piyush Ji Pandya. I would like to call upon the stage Shri Piyush Ji Pandya. Keynote speaker of technical session 3 is Shri Praveen Ji Chaudhary. I would like to call upon the stage Shri Praveen Ji Chaudhary. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज. Now I would like to call upon the Srimati Jigna Ji Desai, Dr. Parul Ji Munjal, Dr. Neel Kamal Ji, and Shri Roshan Kumar Ji Singh. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सारे स्पीकर्स का. Now I would like to give a brief introduction of the moderator of the technical session 3, that is Shri Piyush Ji Pandya. Shri Piyush Ji Pandya is an assistant professor in School of Architecture and Planning in Vauxhall University. Piyush Ji Pandya is an architect and urban planner who graduated from NIT Bhopal 2010 and CEPT University 2015 respectively. He carries the experience of more than 13 years in the academic and professional domains of architecture and design, cultural-based urban development, urban heritage management, tourism strategies, and cultural documentation and research. He has worked on projects that involved the European Union, Worldwide Fund for Nature, AIIGGPA Bhopal, EDII Ahmedabad, Intact Bhopal, central and state governmental offices, urban authorities of several Indian cities, and innumerable local stakeholders. Now I would like to hold on the mic to the moderator, sir, to give the introduction. Now it's time to give for the felicitation ceremony. I would like to call upon Ravi sir to felicitate Shri Praveen Ji Chaudhary. Now I would like to call upon Now I would like to call upon Arjun Singh to felicitate Shri Piyush Ji Pandya, moderator of the session. Now I would like to call upon Shri D.P. Tiwari Ji to felicitate Shri Roshan Kumar Ji Singh, IAS Commissioner, Ujjain Municipal Corporation. Sir, please. Now I would like to call upon Mimrode Ma'am, Counselor, to felicitate Dr. Jigna Desai, Professor and Head Center for Heritage Conservation, CEPT University. Mimrode Ma'am, please. Mimrode, sorry.
Thank you, ma'am. Now I would like to call upon Nimish Jain to felicitate Dr. Neel Kamal ji, Professor and Director, Center for Heritage Management, Ahmedabad University. Thank you. Now I would like to call upon Monica ji to felicitate Dr. Parul Munjal, Director, Intact Heritage Academy. Thank you, ma'am. As we have a short of time, so I would like to hand over the mic to Piyush J. Pandya, sir, for continuing their further session. Good morning, everyone. Good morning. I hope मुझे उम्मीद है चाय ने थोड़ी मदद की होगी आपको और मैं वादा करता हूँ कि इस सेशन के बाद आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ख़त्म हो जाएंगे सारे सेशन तो I'll start with the introduction of my panelist in my panel. So I'll introduce first Mr. Praveen Chaudhary, U20 Sherpa and Deputy Municipal Commissioner, Ahmedabad Municipal Corporation. He is a 2014 batch Indian Administrative Services Officer of the Gujarat cadre, who currently serves as the Deputy Municipal Commissioner of Ahmedabad Municipal Corporation. He has held several important positions throughout his career. As District Development Officer of Junagadh District, he worked in different sectors of rural development for more than 3 years. As CEO of Smart City Ahmedabad, he has been implementing technology-based projects in the city. Now, interesting thing is that Junagadh and Ahmedabad both are historic cities, so we are hoping to have some key insights from him. Second panelist is from Ujjain, Sri Roshan Kumar Singh, IAS Commissioner, Ujjain Municipal Corporation. He is an IAS officer of 2015 batch. He is currently serving as Municipal Commissioner of Ujjain Municipal Corporation, Madhya Pradesh. He is an alumni of IIT Kanpur with a specialization in civil engineering. He has served for more than 7 years as a bureaucrat. The third panelist from the panel is Professor Jigna Desai, Faculty of Architecture, SEPT University, and Head Center for Heritage Conservation, CRDF. She is an architect with an expertise in working with existing and historic built environment. She has, for over a decade, worked towards consolidating conservation education at as a faculty. The master's program in conservation and regeneration that was introduced by her in 2018 is widely recognized and was presented as a commended case of global innovation in World Heritage Education in 44th session of World Heritage Committee in 2021. A previous role at the university include head of undergraduate office and head of gender parity mission. Jigna is founder, head and principal researcher at Center for Heritage Conservation, one of the expert heritage bodies that advises Archaeological Survey of India. She has written extensively on these subjects. Her most notable book is Equity in Heritage Conservation, The Case of Ahmedabad. She is also a co-founder of a small award-winning architectural practice, JMA Design Company, where she brings resource conservation perspective to architectural design processes at all scales. Our fourth panelist is Dr. Parul Munjal. She is a director of Intech Heritage Academy, Delhi. She is a conservation architect with expertise of being an academic at School of Art and Architecture, Sushant University, for 10 years, and senior conservation architect at Development and Research Organization for Nature, Arts and Heritage, which is shortly called as DRONA, prior to that. With a strong orientation towards interdisciplinary research, Munjal had edited books and published widely in
journals of repute in the areas of heritage conservation, community-based approach, and heritage tourism. The focus of her doctoral research was on the heritage of small and medium towns in Gurgaon district. The final panelist is Dr. Neel Kamal Chapagain. He is a professor and director of Center for Heritage Management, Ahmedabad University. Dr. Neel Kamal Chapagain is an architect and heritage professional from Nepal, currently engaged as a professor and director of the Center for Heritage Management at Ahmedabad University, India. He has been instrumental in setting up graduate program on heritage management, launched in 2015, a Journal of Heritage Management launched in 2016, and an annual conference series on heritage management, education and practice since 2017. He is also heading the Secretariat for Asia Pacific Higher Education Network for Safeguarding Intangible Cultural Heritage, being hosted at Center since 2022. It's a body of UNESCO. He has recently been nominated as one of the global facilitator for the implementation of 2003 UNESCO Convention on Safeguarding Intangible Cultural Heritage. With that, we'll start the session. But first, let's have a keynote presentation by Shri Praveen Chaudhary, U20 Sherpa. Please come on the dais. Thank you. Distinguished Dais, Municipal Commissioner of Ujjain, urban planners, esteemed scholars, ladies and gentlemen. Namaste and a warm welcome to all of you. It is an honor for me to stand before you today as a representative of Ahmedabad, Chair City of Urban 20 Cycle, and India's first UNESCO World Heritage City. As we gather here in this beautiful city of Indore, known for its remarkable cleanliness, it is evident that local identity plays a significant role in shaping city's character and fostering a sense of pride among its residents. Indore's reputation as a clean city is a testament to the collective efforts of its people who have embraced and championed their local identity. Ahmedabad too has a unique local identity that sets it apart from other cities. Yet, the inscription of Ahmedabad as a UNESCO World Heritage City is a testament to the city's rich cultural heritage and architectural heritage and its commitment to preserving its unique identity. The prestigious recognition showcases Ahmedabad's architectural marvels, historical sites, and cultural vibrancy, which have been carefully preserved and protected over the years. One aspect of local identity that deserves special mention for Ahmedabad, in the case of Ahmedabad, is heritage conservation. Ahmedabad has undertaken remarkable efforts to preserve its architectural treasures, historical landmarks, and urban spaces that reflect its rich history. A noteworthy policy implemented by the Ahmedabad Municipal Corporation is the Transfer of Developmental Rights (TDR) scheme for heritage projects, heritage properties. This innovative policy allows property owners to transfer their developmental rights to other areas, encouraging the conservation and restoration of heritage buildings. By incentivizing heritage conservation through the TDR scheme, Ahmedabad has showcased its commitment to preserving its local identity and cultural heritage. Promoting local artisans' efforts is another essential aspect of championing local identity. Ahmedabad takes immense pride in its vibrant arts and crafts industry, which is deeply rooted in traditional practices. Heritage Walk, Kite Festival, Kankaria Carnival, and such initiatives not only showcase the city's vibrant culture, but also creates opportunities for economic growth and cultural exchange. Enabling policies and norms in favor of local artisans and entrepreneurs can drive tourism and complement infrastructural development, fostering a thriving local economy. In Ahmedabad, we have impaneled local traditional architects who have been working on heritage properties only.
So those artisans get a platform through the city's efforts. We should also explore frameworks for improved access to global funding facilities like the International Fund for Cultural Diversity. In the case of Ahmedabad, we had done multiple international collaborations for preservation of heritage structures of Ahmedabad. International funding for heritage preservation play a vital role in supporting heritage management. Today, the discussions which are held throughout the day for the three priorities which were laid out during Sherpa summit in February under U20. So these discussions will definitely add value to the communique that is going to be tabled by the chair city Ahmedabad to the G20 presidency this September. So I am hopeful that this communique will shape policies and actions aimed at championing local identity and promoting sustainable urban development and on global scale. Before concluding, I would like to extend my sincere gratitude to the organizers of this meaningful event, mainly Indore Municipal Corporation, Ministry of Housing and Urban Affairs, All India Institute of Local Self-Governance for their efforts in bringing together mayors, urban practitioners, experts and stakeholders to share their knowledge and experience. In conclusion, let us join hands in celebrating and championing local identities of the cities. Thank you. Thank you very much. I was very delighted to see this sixth component of the priority areas for U20 summit. And sometimes it is overlooked, sometimes we don't pay much attention on culture because in our head we have this idea that conserving heritage always against the development. You know, like whenever we try to build a road, some heritage structure would obstruct that and probably we won't be able to build that particular road or widen that road. So these kind of challenges we have, and we always think that it hinders our development. But let me expand the brief which you have seen in your booklets on this particular session. Culture and heritage epitomize the essence of the local. The local represents not only our identity, but also sustainability, encompassing elements such as the local economy, indigenous produce, and native traditions. The influence of heritage and culture permeates every facet of urban life, ranging from marketing agencies and political landscapes to urban development and psychological well-being of its citizen. As tangible evidence of this, consider the evocative imagery presented within the booklet or the poster promoting this event. It is an established truth that urban sustainability, with its foundation in the environmental, social, and economic domains, cannot afford to overlook culture. Some may argue that the failure of certain grand urban projects can be attributed to a lack of comprehension regarding local cultures and communities. In the past decade, experts have proposed the inclusion of 4 pillars in sustainability framework, that is culture. This notion was reinforced by Agenda 21 for Culture, which advocated for the reinforcement of local cultural policies and the integration of cultures as a fundamental component of our development model. The UNESCO 2005 Convention underscores the intricate relationship between culture and sustainable development. But what exactly do we mean when we refer to culture and heritage? Over the past few decades, the scope of urban heritage has expanded beyond physical structures alone. Urban culture and heritage have evolved to incorporate intangible aspects, wielding immense power to shape and rejuvenate public spaces and the built environment. Consider, for instance, the clever utilization of cultural cues, such as the Diwali procession, as a means to raise awareness. A century ago, Patrick Geddes
ingeniously harnessed the heritage of Indore, the Diwali procession, by parading rat effigies through the streets following a plague outbreak, thus generating public consciousness. That is the power of culture. Another example, what we see now, instead of having a honking vehicles carrying the garbage, Indore very ingeniously decided to have a jingle which connects with people. That is the power of culture. One might also argue that that jingle is something behind the grand success Indore has. Yet the question of economics arises. Does the preservation of heritage impede development, as some city managers might argue? Recent research suggests that cultural policies are increasingly recognized as catalysts for economic growth and urban revitalization. The renowned contributions of Richard Florida have popularized the notion that culture has a positive impact on cities' allure or attractiveness, attracting both private and public investment as well as highly skilled and educated workforce. This phenomenon is evident in cities such as Dubai and Las Vegas, which have nurtured creative industries to compensate for their initially culturally barren landscapes. Conversely, Indian cities boast a different narratives. As the country's top 5 wealthiest cities, Mumbai, Delhi, Kolkata, Bangalore, and Hyderabad also represents powerful cultural entities. Even corporations, companies leverage culture and urban identities to promote their products. As exemplified by platforms like Book My Show and Make My Trip, which employ heritage visuals to depict the essence of various cities. If you have ever booked any tickets on Book My Show or Make My Trip, you will see the logos are made based on the heritage of that particular city, including Indore as well, where the Rajwada is showed. While it is widely understood that urban economics revolve around factors such as location and land use, it is essential to acknowledge that the value of the land is deeply intertwined with local culture. The Kumbh Mela in Ujjain, the music traditions of Gwalior, and the Chanderi weaves from Chanderi are just a few examples of how cities' identities are shaped by the products they are renowned for, whether it be Hyderabadi biryani, Indori poha, Maheshwari silk, or Lucknowi chicken curry. Locally crafted products bolster the local economy by utilizing regional resources and indigenous human capital on the supply side, while also fostering local trade and export on the demand side. The craft sector in particular contributes to a reduction in carbon footprint and ecological degradation by utilizing locally available natural resources and employing simpler vernacular techniques that align with local context. Moreover, crafts form integral part of regions' intangible cultural heritage, encapsulating the worldview of communities and preserving their identity and dignity. Consequently, by fortifying all 3 pillars, which represents environment, economic, and social, the craft sector becomes a crucial contributor to holistic and sustainable development of both core communities and the wider region. This is one example of vocal for local, which also our Honorable Prime Minister propagates. Cities worldwide yearn for a paradigm shift away from inhuman and insensitive development practices towards harmonious urban environments that cater to the psychosocial and socio-psychological needs of their inhabitants. The issue paper on Habitat 3 by UNESCO again aptly recognizes the pressing need for a new urban development model beyond mitigating vulnerability and reducing environmental footprint. This new model must rehumanize urban spaces, both in terms of scale and by fostering a sense of belonging. Cities serve as a melting pots of culture, not limited to human culture alone, but also encompassing biological cultures. The amalgamation of these diverse communities yields something intricate yet harmonious, contrasting yet symbiotic, and incomprehensible yet familiar. It is essential, however, that we move beyond the romanticized notion of heritage prevalent in our cities and recognize the existence of
subaltern cultures as well, local biodiversity, and the unique genius loci bestowed upon spaces by these marginalized communities. Having considered the role of governance, we acknowledge that cities are primarily composed of three major entities: government bodies, private corporations, and the people themselves. To add a fourth entity into this framework, we must also account the urban wildlife and biodiversity. From the perspective of private enterprises, cities serves as economic entities. For corporations, city is an economic entity. For governments, they are administrative entity. And for the people, cities represent cultural entities. To effect positive change, we must adopt new perspectives and exchange our lenses accordingly. With this foundation established, I now open the floor to the panel and pose my initial question. But before that, we'll have a quintessential, a video of a quintessential project from Ujjain, which is recently developed. And after that video, we will have a presentation by Mr. Roshan Kumar Singh. Thank you. Hara Hara Mahadev. महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। अध्यात्म भी चाहिए, कुछ ऐसा भी हो जिससे आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को भारतीय सनातन सत्य संस्कृति संस्कार और जीवन मूल्यों का ज्ञान हो। वहीं से नींव पड़ी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से श्री महाकाल लोक की उसी दिन। जय श्री महाकाल। आई होप सभी की जो हल्की फुल्की नींद होगी वो अब खुल गई होगी। तो बेसिकली ये दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर। तो जिसको पूरी मूवी देखनी है उसके लिए यू ऑल आर वेलकम टू उज्जैन। दोज हु हैव नॉट विजिटेड द कॉरिडोर टिल नाउ, इट्स हाई टाइम and it's a great occasion to visit Ujjain and witness and experience the corridor for himself or herself. Now we'll start the presentation. Next. Next slide. Ujjain, Avantika, Ujjaini, Vikram Nagari, there are many names to the city.
सप्तपुरियों में से एक है. Sappuris are, I think everyone knows, Haridwar, Mathura, Kashi. Ujjain is one of the Saptpuris and one of the most ancient cities. It's also called Mahakal Nagri because of obviously Mahakal temple. It's Lord Mahakal Nagri, so one of the Jyotirlings, which is the major attraction of pilgrims here. Apart from that, we have Shakti Peeth, known as Harsiddhi Mata Mandir. We have several other temples, और उज्जैन को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है. सांदीपनी आश्रम इज ऑल्सो टोल्ड एज श्री कृष्ण भगवान मथुरा से यहाँ पे ज्ञान लेने आए थे, शिक्षा प्राप्त करने आए थे, और उसके बाद फिर द्वारका और आगे की यात्रा उन्होंने की थी. तो it says that Ujjain is also a future potential hub of education. Ujjain is also place of King Vikramaditya and his Navratnas. Sorry, it's working. So this whole Mahakal corridor, the video which you just witnessed, was conceptualized and executed by Ujjain Smart City Limited. The whole project started in 2019 and inaugurated last year by Honorable PM Narendra Modi ji. For preserving and enhancing local identity of Ujjain, these were the major 5 components. We work towards conservation of heritage and built environment. Definitely, when we started executing the project, we faced several old temples which needed to be retrofitted and conserved. We worked towards that. Apart from that, we had a lake which you will see in coming slides, Rudrasagar Lake. It also has a major mythological importance. It was full of jalkumbis and the local sewage went into that lake. It was completely cleaned, rejuvenated, some local pitching and other such kind of desilting civil works was done. Another component is aesthetic and ambient environment. I think the whole corridor is one of the most bright example of aesthetic work. And for ambient environment also, we work towards having a great landscaping sites and several such water bodies and fountains and such structures there. One of the major challenge was, the whole area was congested and we had only one entry point for the temple. Now, through various gates and pathways, we have 4 to 5 entry points and many other entry points are coming up in the phase 2. For facilities, we worked on many structures. We have waiting area, we have lounges, we have toilets, we have parking facilities. Regarding safety and security, we have set up an advanced AI-enabled surveillance system, which is not only working for crowd control, but also it is helping us in detecting any kind of suspicious movement or any such threats. Next slide. These works are the list of works which were executed in phase 1, which is already inaugurated. The whole corridor is abbreviated as MRIDA, that is Mahakal Rudrasagar Integrated Development Approach. The whole corridor along this length, which is around 1 kilometer of the length. We have some parking areas around this space. We have a facility center, this one, and the entry to the temple is through this facility center. It has a waiting area of around 4,000 persons. We have some smart roads. Basically, these lanes were widened and all these amenities were set up on these roads. As I said, for rejuvenating the lake,
We executed several networks of sewerage system there. We have a network of EVs, that is e-carts. We have audio guide also, so that there are 5 languages are encrypted in that, so that people may just walk through and they may get the feed of audio system about depicting the whole murals and mythological stories in their system. These are some of the prominent structures which one can see along the whole corridor. This is Nandi Dwar, which is at the entry of the whole corridor. This is Kamal Kund. You can see Lord Shiva being surrounded by 4 lions. This is the whole stretch of Mahakal corridor. This is Rudrasagar Lake, which was rejuvenated. One can see a small island, which was called Rooster Island. This is Pinaki Gate. This is Triveni Museum, which is also a major attraction of the whole place. And here is the main Lord Mahakal temple. These are some of the views of the corridor. As I already said, the whole corridor is around 1 kilometer of stretch, and predominantly we have 25 feet mural walls running across the whole corridor. Around 108 panels are installed there, and these columns known as stumps. There are 108 stumps, and various stories depicting the mythological stories of Ujjain are depicted on this mural walls through carvings and other such works. As I was describing about the Kamal Kund, this is the Nandi gate, because it is believed that in any temple of Lord Shiv, Nandi is seated on the entrance, and there are 8 Dikpals also on these columns. Also, there are statues of holy rivers on this entrance area. These are some of the sculptures. One can see Shiv Bharat around here. One can see dancing Lord Ganesh here. Similarly, the other sculptures are also depicting some of the mythological stories. One can see Samudra Manthan, which is the around Kshir Sagar. One side Devtas and other side Danavs were there. Everyone knows about the whole story. This is very interesting one. It is said that when Shiv Bharat was being started, Lord Vishnu himself did the Shringar of Lord Shiv. This is the whole Shiv family. Lord Ganesh and Kartik can be seen along Parvati ji. This is the Kailash Parvat being held up by Ravan. So this one is very interesting to note, because as I said, it was a major challenge of rejuvenating the whole Lake Rudrasagar. This whole area was encroached upon by the local people, and the sewage was flowing through it. So it was a major challenge. The available area was only 2 hectares, and now with all these works, the available area of the whole campus is around 47 hectares. This is Mahakal Dwar. It is said that in the ancient times, people can go from Ramghat to the Lord Mahakal temple through this gate, and it is also being preserved and retrofitted, and this is one of the also major attractions of the whole corridor. This is another attraction, Neelkant 1. You can see some fountains and facade lighting also. This is the visitor facility, as I was describing. Around 400 pilgrims can be seated there, and they can wait here. They can deposit their mobiles and other such valuable items in there. Some facade work and musical work were also was done. And during evening, these facade lights are being showcased there, and chanting of some mantras are also being done there.
This was the inauguration ceremony, which was a grand success across the country, and it was a major event, I think, in the recent times for Ujjain, because after that Ujjain came again on the scenario of the country, and it's I think now it's not only on the national map, it's on the international map also, and everyone coming to the India wishes to visit to Ujjain and visit the Mahakal corridor and Mahakal Lok. Now these are some of the projects which we are planning in phase 2, and mainly these are the facility centers. We are coming up with parking locations. We are coming with heritage hotel. This is the Maharajwada building, and school was being run in this building. Now this school is shifted by Smart City in a different separate building, Smart School. And now we are preserving it, and some of the works which are conducted here, and now we can see that the whole building has come up in this shape, and it has come up as a very beautiful structure, and we hope that once it gets completed, it comes up as a major attraction, and the heritage Dhamsala, the heritage hotel can be run into this. Pedestrian bridge is being planned here. A ropeway is also being planned by NHAI. The whole idea is from railway station, people can come across the Rudrasagar Lake, and from Rudrasagar Lake through this pedestrian bridge, people can directly enter to the facility center, and from there, darshan of Lord Mahakal can be done. It's a 200-meter long bridge, which is 6-meter wide, and we hope that it will be completed in next 2-3 months. A leisure and water screen show is also planned in Rudrasagar Lake, so that people can get another attraction and they can spend some good quality time there. As I was saying, after the inauguration of Mahakal Lok, the branding of Ujjain went at a different level. Not only Ujjain city, but overall Madhya Pradesh got a major boost throughout the country and throughout the world. We witnessed some international events in Ujjain, and not only Ujjain, but across the whole state. Some of the examples are we witnessed Pravasi Bharat Divas in Indore and Global Investor Summit in Indore. As I said, we benefited from this whole event. We are getting some major projects also. Recently, Ujjain is selected for Unity Mall. In every state, there is one Unity Mall being constructed, and MP government has selected Ujjain as the venue for Unity Mall. The idea is that all the products, one district, one product, GI tagged products, and all such kind of handicrafts will be showcased here, and it will kind of integrate the whole country into one place as the theme of our emblem, that is unity in diversity. Our rivers Kan and Shipra also got entry in Namami Gange project, and not only Ujjain but even Indore also got some major projects under Namami Gange for the cleaning of river Kan and river Shipra. With after Mahakal Lok, we witnessed several events like 5G in the whole state was inaugurated in Mahakal corridor itself. So after this whole Mahakal corridor, we are getting several new projects and several new events are being organized in Ujjain, not only Ujjain but in the whole region. If we talk about the economy, the major boost is being witnessed in terms of hospitality and public transport system over there. Before Mahalok, the hotels and other such facilities, dhamsalas, were just seeing 50% occupancy, and now after Mahakal corridor, one cannot find a hotel being with any single room vacate there. So after the corridor, the hospitality sector saw a major boost. If we talk about the temple donations, before Mahakal Lok corridor, the temple donations were to the tune of 2-3 crores per month. But after the corridor, the temple donations had went up
to 15 crores per month. So one can see there is a growth of around 5 to 6 times in the temple donations itself. So with this, we hope in the current, in the ongoing months and on the ongoing years after Mahakal Lok Phase 2 also opens to the public, we see some major economy boost to the city. Recently, we saw some textile and other such kind of industries being opened there, and the hotel chains like Radisson, Marriott, and Taj are interested in finding some place for their projects. So that's it from my side. Thank you very much. Thank you, sir, for taking us through a very interesting and ingenious project, one of its kinds in MP. And now, before delving into extensive discussion, we would request our panelists to talk a little bit about their work in context with the priority areas, this particular key points, what we have. So I'll start from that end, and I'll request Professor Neil Kamal to talk about his work in context to the priority areas. Good afternoon, everyone. First of all, thank you to the organizers for inviting me over here. As I come from the Center for Heritage Management, Ahmedabad University, I will speak as an academic, as an architect. I think in local identities, there can be several aspects that we can consider. Being an academic, I would also like to remind us of some critical questions about the theme of identity, because as much as it sounds very simple and something that we can easily connect to, it might also be very complicated at times. So what does identity mean? Do we have one identity or more? How do we connect identity with our local things that we have, particularly in the age of globalization that we live? So these are the few questions. And for me, at my center at Ahmedabad University, we have taken it up through various ways. For example, this morning we went through the Heritage Walk in Indore. We have also looked at Heritage Walk as a tool to promote identity, to make people aware about a city's identity. And there perhaps we can find multiple identities. So that's one aspect I can think of. The second is, and again, adding to the previous speaker, Sri Praveen Chaudhary from Ahmedabad, he mentioned Ahmedabad's efforts. I think Ahmedabad also had the Heritage Walk as a tool being used very successfully. And there, I think our center also had been, a key partner there. Another thing we do is we have a very unique master's program in heritage management, which is first of its kind in not only in India, but also in the Asia Pacific region. And there, the effort has been to use the concept of heritage as a theme which actually touches upon various aspects of our life. And it establishes the idea that heritage is not in opposition to development. Heritage actually is an enabler of development. Now, from that perspective, if we think, heritage can be a source from which we can draw upon our identities. We can build our identities. What I sensed since yesterday when I arrived to Indore is doing that. Even in the Heritage Walk this morning, we heard the cleanliness campaign being so rooted in its history. And therefore, the cleanliness seems to be a heritage of Indore. Now, and so this is another thing. The third thing in our program we tend to do is, how do we make the issue of identity or the perspectives of heritage something that people can count on to improve their livelihood, to improve environment. Heritage and identity, these are not something we should have to go to museum to see and enjoy. It should be something that becomes part of our life. I keep hearing, while in Indore, you please enjoy the Indore's delicacies. Now, that's also a way to think about identity, right? So the third thing we do is, how can we diversify the idea of heritage? How can we make heritage as an idea that touches upon various aspects? So it's an interdisciplinary approach. It's not just monuments, although monument as a very physical thing comes very handy to talk about, but we can also think about intangible cultural heritage as a theme to look at. And I must say, along with India being in the forefront of really getting so many sites into the World Heritage List from UNESCO, India is also gradually picking up on nominating its intangible cultural heritage. If you have paid attention, last year, Durga Puja from West Bengal, Kolkata, was registered in the representative list of intangible cultural heritage in UNESCO. Now,
India is working on nominating Garba from Gujarat into that same list. And it can be endless. Every state can nominate something. So I think that is coming up as something to promote India's identity in a very diverse way. And so as a program, we sensitize our students to look at all these opportunities which are given by UNESCO or UN or all these global systems, but then see how can our local opportunities can actually tap into that. So how do you create synergy between the local and global so that you come up with your own local identity that actually you can promote to the global. So I think we run an academic program which sort of not only goes deeper into understanding our own local heritage, but also connecting that to the global framework so that you actually brace it. I think this kind of managerial strategies is what we need in today's practice. And I think that's also a very key important part of governance system. And if I think from that perspective, just last point I would say is the theme for this panel, championing local identities, that can also be a process which can enhance our urban governance. So I will stop at that point, Piyush. Thank you. Thank you, Professor. Now I'll request Dr. Munjal to talk about Intech Heritage Academy, your work, probably your PhD as well, and tell us about all those things in context with the priority areas and the theme. So good afternoon, everybody. I have the opportunity of heading the Intech Heritage Academy, but actually I would sort of like to first talk about a little bit about Intech as a whole. And I'm sure most of you would have heard about the organization Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. This was established in 1984, and we're going to be completing 40 years in the next year. And over this period of 40 years, essentially the various divisions of Intech that spread across architectural, natural, intangible cultural heritage, heritage crafts and communities, art and material heritage, and heritage education and communication services, and the Intech Heritage Academy, along with, of course, ancillary things like cultural affairs and publications and all of those. Essentially, over these 40 years, what Intech has been able to do is look at, it started with the idea of looking at unprotected heritage. So when we talk about, typically 40 years ago, I think when people were talking about heritage, they were essentially looking at monuments, and they were looking at these landmarks, you know, like the Humayun's tomb and the Qutub Minar. So I think Intech sort of brought in the idea of looking beyond these monuments and actually talking about heritage from the perspective of those that are not under the government directly in terms of protection status, neither under the state government, under the state archaeology departments, nor under ASI, but actually beyond that. And there's so much of it. There's actually, India is really, really, I'm sure you all at your local levels would have realized and are very familiar with how rich we are in our heritage resources, whether it's the built ones, whether it's the intangible ones, whether it's natural heritage as well. So with this idea, I think over the 40 years, Intech has worked on projects that have ranged from building level adaptive reuse projects that bring, you know, certain structures which were probably lying either in disuse or were not being properly used or had lost their sort of glory into the mainstream again. Even worked at the city level in quite a large way, because the intervention, I suppose, has been about 100 cities where either conservation plans or heritage management plans have been prepared by Intech. There is a lot of work in the Natural Heritage Division, which looks into wetlands, water bodies, ponds, lakes, their conservation. Looks at rivers. In fact, one of these very recent projects has been under the Ganga project, NMCG project, under the NMCG, where 3 of the divisions, Intangible Cultural Heritage Division, Natural Heritage Division, and Architectural Heritage Division came together and actually documented a vast stretch of the Ganga. So along the Ganga, you know, whatever places exist, whatever cities and towns exist, so what kind of heritage is there? And in fact, that was based on a lot of community consultation. So
with this, I would like to again mention that when we're talking about communities and their identities, I think it's very important to sort of understand that sometimes communities may not even be aware of what they have, the value of what they have. And that's where I think heritage education becomes very important, an area in which INTAC has really sort of done commendable work, working with school students in developing heritage clubs, how to become a volunteer, a lot of competitions, filmmaking, which are all sort of revolving around local heritage. So you actually, the students in these schools are able to then engage directly with heritage around them and actually bring it to the forefront. Beyond that, they work with colleges also, and they work with citizens and talk to citizens about how they can actually engage with heritage at the local level. What are the ways in which they can become volunteers, they can conduct heritage walks, they can be active citizens in the field of heritage. And then we have the crafts and communities division that actually has worked with communities, craft communities. So one of these examples, recent examples, is working in the Mumbai region, where Kagzipura is an area which the division has worked on, and actually the paper making tradition has been revived in that place. So now there's an actual, functioning livelihood that is dependent on this traditional paper making, and it has been revived. And another example would be Jaisalmer stone crafts people, and they design workshops that were conducted with them, and they actually developed products which were then could be mainstreamed as products that are in demand today. So lots and lots, which of course 40 years of work I cannot encapsulate, but now coming to the Heritage Academy, I would say that the Academy essentially has three verticals: capacity building, training, and research. And all of these are focused on preparing, building people's knowledge in the area of heritage in a holistic manner. So we work with government organizations as well through the chapter network. This is another important aspect I would like to mention, that INTAC currently has a voluntary chapter network that spreads across the country, about more than 220 chapters. So the idea is that heritage should not remain a domain of certain experts, only, but it has to be something that is a movement from the grassroots. It has to be something that has to be grounded in the people themselves. And hence this voluntary network is something which exists in 220 cities, as I mentioned. And the idea is that the chapters then connect with the local stakeholders, whether it's the government organizations, whether it's some kind of communities, whether it's certain areas that need to be looked into, whether it's some kind of intervention that is required, and they sort of develop projects out of that. So the headquarters helps with pilot projects, and then the chapters are supposed to take that forward, on their own. So become self-sustaining and bring in various kinds of funding. So whether it's CSR or other kinds of models of funding as well. Whereas, of course, the headquarters supports with the pilot projects. So with that, I come back to the academy, and I would like to say that again, we network with the chapters again, and wherever there are training requirements, capacity building requirements, we are happy to sort of curate courses around those. So this is something that is within our sort of mandate, and along with our own chapter members whose capacities we've built, we sort of extend that idea to any kinds of stakeholders across the country. So the Academy also has a research scholarship program. It publishes a journal, and it has a program which is on documentation in heritage, of heritage, unprotected heritage, which is an award. And we also run a PG diploma program, which is open to graduates from any discipline, again, similar to in model to heritage management, in terms of not being focused on just architects, and allowing people from any discipline to come in and actually engage with heritage as professionals, as entrepreneurs. So one of the areas that we are really looking at is heritage entrepreneurship. So we started this course on cultural and heritage entrepreneurship, and I think that's a very, very important emerging area that we all need to look at. There's so much that we can leverage, and we have taken a step towards that by introducing this course. And I think
going back to now my PhD and maybe my academic role, I think I would like to mention that some of the interactions that I had being an academic at Sushant School of Art and Architecture, where we were trying, we introduced this program called MARC in Built Heritage. And the idea through our studios was to actually engage with the heritage of Gurgaon. So where we are situated, we actually engage with our own heritage of the place. And had very interesting interactions with various stakeholders as a part of that process. So when Neil mentioned that, whose identity are we talking about? So whose choices and whose opinions are we talking about? So I would give one example over here, that in Gurgaon we have something called the Kaman Sarai, which was being converted into a multi-level car parking. So this we held these we were interviewing these people who had shops within the Sarai, and some of them said that, we don't have a problem if we get a better shop in the multi-level parking, So they were fine with it as long as they get a better shop, which is there in the multi-level car parking, and they were fine with that. But there were others who probably were not direct beneficiaries, who were saying that, no, we have memories of the place, and, we use this place in this way, and there's this tree. So a lot of these trees were cut down as a part of that project, which was taken up by the municipal corporation. And a large part of the structure, some of which were even, there were plaques mentioning their historicity and all of that were taken down. But again, as I said, that, whose view are we talking about? Who are these stakeholders, and whose view is valid and whose isn't, is a very important question that we all need to ask. And that's where probably sensitivity and understanding about heritage and pride in our own heritage becomes very important. Because as I was saying, a lot of times people don't even realize that this is important. An example that I would give here is from a project that was done by Intac and Ambedkar University in Delhi, where the area of Mehrauli was taken up. And this was a center for community knowledge and Intac partnering. And the idea was to bring out narratives, oral histories, people's artifacts of the local people living in the area. And they sort of arrived at these fascinating results, because people thought that, suddenly there was this value of something that was lying in their house for decades and decades, something that was a kind of a cart wheel, lying somewhere, or some story of their grandfather, or something like that. And suddenly there was this, it was all brought out, and there was this sense of pride in the people that, okay, this is also valuable. So I think that is a very important step at the local level, where we need to start encouraging and nurturing this idea of our local heritage being actually important and being valuable. Request you to be. So, all right. So, I'll cut it short over here, and maybe if there is more time, we will later talk about the PhD. Yeah, thanks. Thank you. Though it was very enriching to listen to you, but we have limited time. So we had already have a introduction of Ahmedabad and Ujjain. So I'll move to my alma mater, CEPT University, and I'll request Professor Jigna to talk about her work at CEPT University and very briefly about her book as well. As a last speaker, I know I have to be really brief and I have to kind of talk to the point. I'll try to talk to the point. I won't talk about the educational program that we are running. I think this is that's for possibly another forum at the university. I'll talk about the CEPT Research and Development Foundation, which many of you possibly know about. It is a research and advocacy wing of the university that pushes for innovation and best practice in built environment. Within that, we have many centers, including public policy, water sanitation. We all work together, and one of the centers is Center for Heritage Conservation. Center for Heritage Conservation looks at various aspects of conservation, ranging from research of historic buildings to scientific material characterization. We have advised Tourism Department and Department of Archaeologies on various aspects, and also municipalities, including Ahmedabad Municipality and Agra Municipality, on World Heritage matters.
All our work is done with a perspective of equity, sustainability, and implementability. These are the three pillars that we have. In this forum that speaks on urban and on governance, I want to speak about historic cities and the work we do pertaining historic cities. And all administrators and executives over here who work with historic cities know for the fact that it is very, very difficult and very, very messy to deal with historic cities and governance of historic cities. So I'm going to talk about 3 or 4 initiatives that we do that help push this possibility of governing historic cities better. The distinct difference between historic places and historic cities is that historic cities are mostly living, breathing entities and have all problems and possibly more that all cities have. So taking building permissions, getting waste management, getting transportation sorted out, and a lot of it are also the problem of historic city other than heritage conservation. And mostly they are in a mess because the same tools don't work the same way in historic cities. Like Hitesh ji said today, I think he said, "Har sabzi har jagah nahi ug sakti, yak nahi ban sakti," something of that sort. So I'm going to talk about these initiatives. The first initiative I'm going to talk about is bringing urban heritage on digital governance platform. We have an entire digital unit where we work with the latest digital technologies to put heritage places on the digital governance map, not just from the point of view of tourism and navigation, but also from the point of view of creating models of risk assessment, looking at their current conditions, and like we were talking about hotspots, possibly which are the hotspots that are that have very little people staying there. There's out migration, there's more congestion, conditions of buildings are are really bad. So and also working in Ahmedabad, working in other cities, we're also looking at disaster risks. We are looking at climate change risk. Ahmedabad is going to face possibly one of the worst risks in terms of heat island effect. So how do we map those risks on heritage structures? The second is to look at urban areas around monuments. All of the people who are in governance know that around the monuments are these protected monuments, are these ASI zones, and it is very difficult to manage them. There are series of permissions. We are working with communities as of now to understand what are their needs to get permission, and we soon hope to then connect to the governance to bring that on a governance platform. That is where I will once again draw from other discussions where we say that that is where we need to bring the neighborhood planning around the monuments, the neighborhood planning model and the local planning model around the monuments. The third is area we are working on is mobility in historic cities. Historic cities, as we saw in one of the presentations by Dr. Bharat today, are, when I was looking at the Bhopal map and she was looking at the heat island effect, it was the historic city of Bhopal that was least warm compared to others, and which basically kind of reinforced the notion that they are naturally low emission zones and they lend themselves naturally to car-free mobility. We are looking at electric vehicles, possibility of looking at walkable routes, and this along with suggesting mitigation methods to balance between public mobility, infrastructure in historic cities. So we are working with the metro, we are working with fast rapid transit that go through underground or BRT that goes through the city, on how do we make sure that these new infrastructure does not how best can we create win-win situations, like Piyush was bringing out, that instead of looking at it as in opposition to each other, how can we work together to create that sense of place with this sense of mobility? And the last initiative I will talk about is our site school initiative. Now, site schools are places within historic cities, and there are 4 just now around Gujarat, that we work with the custodians of the place and we occupy those places for 3 or 4 years. In these 3 or 4 years, we work not just to conserve those places, but to
work with the communities, with the governance, with the custodians to understand the place and to build capacities in those places. So when we are situated there and we are working from there, we cannot then deny the question of health. We cannot deny the question of climate change. We cannot deny the question of sustainability. We cannot deny the question of economies. And we have to do all of that while we are also talking about, while we're talking with the local communities, so the local knowledge systems become integral part of what we are discussing. All the other discussions that we are doing in other research forums, we bring it to our site schools in order to build capacities. We do Young Heritage Explorers program there. So they become kind of sites where we talk about all the difficult problems that arise in historic cities, including the question of confused identities, multiple identities, marginalized identities, because all historic sites are kind of, if I have to talk about in the medical terms, they present symptoms of the larger cities as well. So, well, with these 4 initiatives, I'll end here, and I hope we have time for discussion. Otherwise, then that is it. Thank you very much. Thank you, Dr. Jigna. So what I'll do is that since we are short of time, so I'll float questions which I design in a way that I will ask individual persons, but I believe that I'll float the question and I'll open the panel for the discussion, like other people can also answer this, and those questions are would be focused to a person, but I'm pretty sure that others can definitely talk about it, because those kind of things we all are doing. And it's really nice to see a panel comprising of administrators and academicians who are also practicing on the field. And they're also into research. So my first question again starts from that end. I'll talk about one of the highlights of this theme, which is improved access to global funding facilities. And I'll take a cue of the European Union funded project, which was given to Ahmedabad Municipal Corporation and Ahmedabad University Center for Heritage Management as well. Dr. Neil, you can start with that answer. Then the similar thing, the answer can also be contributed by Professor Jigna and Dr. Munjal and distinguished administrator here. Thank you, Piyush. Yeah, I think that might really connect to the discussion we are having. So in 2014, the European Union had a call, and these kind of calls are always available. And I think the nice thing was we had not started our program, so we're looking at doing some ground research and preparing the ground for our master's program in heritage management. And so there was this opportunity because European Union since late 1990s has been floating this idea that next century is going to be the century of cultural and creative industry. So that has really become the very key thing. And we kept thinking here, countries like India should be at the forefront of really cultural industry, creative industry. But then, interestingly, we are not really thinking about it, but the Europeans are really ahead of it. And so in that course of exploration, we came across this funding, which required to have a European partner and an Indian partner. And so we had a partner in Spain, a University of Valladolid. And what we proposed was, okay, let's have the university as the partner, but also let's bring our city as the partner. And that was a very nice proposal we did, and we actually was selected out of 50 to 80 competitors. And I think that was the real good thing, and we had a funding for 3 years, 2014 to 2016. So we had Ahmedabad University and Ahmedabad Municipal Corporation. We had University of Valladolid and Valladolid Municipal Corporation as the partners. But the site was to be Ahmedabad. And what we did was we said Ahmedabad, at that time it was not yet the World Heritage Site, but that was in the process. So we said, as much as Ahmedabad has the old city, the historic monuments, Ahmedabad also has very rich cultural heritage in terms of its intangible cultural heritage and crafts. So we wrote the proposal in a way that we wanted to do some base study, like the diagnostic studies of the craft sector, which would allow us to do research and then find out where are our gaps. I'll give you one example. Kite flying had already been recognized as a key thing that was emerging in Ahmedabad. In our diagnostic study, what we realized was, as much as kite flying, the kite festival was emerging at that point,
there was a major issue. The issue was the threads and all the equipments that you do use to kite flying were actually gradually being encroached by the Chinese suppliers. And that was a major thing we found is, okay, if that is our heritage, we better fix this economic issue that the market is actually unknowingly, driven towards something which is not fair to the local artisans. And so we recognize that as one area of intervention that needs to be done. So it's a long story, but to make it short, we came up with few strategies at the end of this project. One, Praveerji talked about the listing of the craftsman as the resource person available for building restoration and all that. That was one exercise we did in part of that process. We also listed several other craft sector and we did cluster analysis. We tried to form a kind of an association of them so that they could talk to each other and all that. I think in a way, the Ahmedabad World Heritage City Trust that is there as a USP for the management of the World Heritage Site, I think the genesis of that idea was within this thing that we were exercising at that point. So I think this kind of a research project led to a few things which I think is there in Ahmedabad today in different forms. But I think the more important thing for us to think about is championing local identity can be done in a very meaningful manner if the academic institutions and municipal corporation really work together. And I'm really happy that I was part of that team. And at this point, I actually remember, Mr. P.K. Nair, who had been there at the Heritage Department. Unfortunately, we lost him during the COVID. People like him who came from ASI, had been in municipal corporation, who was behind the setting up the Heritage Department, Heritage Cell and all that. It was such a nice collaboration between the academicians and the administrator and the technicians who were at the municipal corporation. I think that can be a model for, all of us all to look at this point. Thank you. Thank you, Professor. I'll quickly take any addition to this answer from any of the panelists, maybe from the municipal corporations of the both cities, or maybe the other two institutes we have here. So, anyone? Or it can maybe all in the form of supplementary question, right? Yeah, maybe that can also be done. My take on this is we have witnessed foreign agency support also on this. In our case, we are working with AFD, that is French Development Agency, and their representatives do visit regularly to the city and they keep guiding us, and their expert advice is always very good in shaping our projects. Like I was talking about the Maharajwada complex, their comments and some of the suggestions were very well appreciated by the local stakeholders also, because heritage is accepted only when the local stakeholders are taken on board. So if we take all the suggestions and present them before the local stakeholders, then we come up with a structure, with a conservation work which is acceptable to everyone. Thank you. To say something? No, I think. All right. So I think as Professor Neelkamal said, that we have always these kind of opportunities floating around from outside agencies, intergovernmental agencies, and we can definitely tap on those agencies, those funds, by collaborating locally with municipal corporations, people, and academic institutes. My second question is to Professor Jigna Desai itself. We talked about people and their participation and equity. So she had written a book on this subject, and I'll leave the mic to you to talk about more about it, like how to make people more responsible and bring more ownership about their heritage in historic areas. Okay, so if I'm referring to the book that I wrote, which is my research based in Ahmedabad, and it was happening at the time when the nomination of World Heritage for World Heritage was going on. So my research was during that time, and at that time what I found was that on one hand, at a very abstract level, people who live in the city were quite excited about the city becoming a World Heritage City. So people are living inside the World City. But on the other hand, they were also very, very nervous about
what would this mean for them? Would this mean that their city doesn't, won't have the right for to the best of facilities that are there in the new city? Would this mean that the city will just freeze and they'll have to move out because there will be no development here? So that was one level of question. And the other level of concern that were there amongst the people were about why is a particular area getting, or a particular building getting listed, and why is this other building or the other area not getting listed? So it was those questions that led me to this question of research. And I'll straight jump into the kind of framework that I arrived at, which we still use in our site school processes. And that framework is basically that we've realized that for people, for academics, and for the nation, heritage cities and historic cities matter for its historic value. And that is something important, and I'm not getting into the discussion of that, or I'm not kind of questioning that. But for people, heritage matters in three ways. It either matters for their sense of place, which is one of the concerns that we're talking about. It matters as their cultural reference or a cultural resource, or it matters as an economic resource. And this, when we say people, for everybody, it does not matter in the same way. So if I'm living in the city, my sense of place and what I will connect to my sense of place will be very different versus if I'm visiting the city, if I'm a tourist. So if I'm a tourist, I would like, and I took the example of Bhadra Plaza in Ahmedabad, and similarly you can take the example of any one of these major landmarks in any city. If I'm a tourist, let's say Taj Mahal, I would want to see Taj Mahal to be pristine, clean. I would want that fantastic photo with just me alone and the Taj Mahal in the back. But if I'm living in Tajganj, my relationship to Taj Mahal is very different. If I'm living in the other part of Agra, not in Tajganj, my relationship to Taj Mahal is very different, and my understanding of that heritage is very different. If I'm ASI, my understanding is very different. If I am the municipal corporation, my understanding is very different. And if I am UNESCO, my understanding is very different. So that framework basically talks about how each of these things, the sense of place, economy, and culture, is different for every stakeholder involved, and what are the questions we need to ask, and what are the issues we need to address so that we are cognizant of all of this. Something will always get compromised, somebody's point of view will always get left behind, but are we cognizant of it? So that's what I talk about in my book, and I think I'll end it there then. Okay, so very quickly, I'll open the floor for questions from the audience. If at all we have any very brief 2 questions we can take, or otherwise we can have a closing remarks from each of the panelists. I can see a hand raised in the back. So do you want to ask any question? No. Okay, so very quick question, ma'am. Hello, I am Mansi Jain. I am an architect and urban designer. I would like to know that history or any heritage item, if it's a monument or any historical item per se. So we have some tangible thing, or even if there's something intangible, we have something to hold on to. But if we talk about urban planning or the large-scale city master plan or development, which speaks about the history as well. So how do the conservationists try to preserve that value? For example, Jaipur's development hasn't really valued, new development hasn't valued the grid system that was followed in the past. So I think we got the question, we understand the question. Anyone wants to answer that? Maybe, I think I'm the only urban planner here, but, but anyone of you can, yeah.
since she said, how do conservationists, come to terms with it? I think any Yeah, of us I can think answer. criticism was towards me, so I should keep quiet. Yeah. So I think when if you're talking about planning principles from the past that we have inherited, I think at one level the question of continuity is what you're saying. That should we take those principles and embed them within the new planning system as well? I would say definitely, why not? If there is something that works well, then ideally we should look at that continuity. But if we look at the field of conservation, which is looking at something from where we're looking at historicity of a place and hence trying to intervene in it because of the values that it brings along with it. Of course, the conservationists would focus on how to keep that alive and sustain that, how to see that the heritage values and the significance of that historic area in itself continues. But definitely, I think just like we in the field of conservation talk about traditional knowledge systems to quite an extent, and that's something that we are addressing, we all are trying to address. So when we talk about traditional knowledge systems, traditional knowledge principles, and whether it's in terms of building construction, whether it's in terms of planning, whether it's in terms of how we grow our food, whether it's in terms of how we eat our food, I think it's definitely something that if we can draw the value out of that and actually take it forward, I think that would be fantastic. So I think it's the planners who have to think about it and react to that. I take that point. So, yeah, very quickly. Just quickly add to it. There is also one is that looking at the historic city or a historic part of the city for its value. But I think there are many examples in India as well as in abroad that there are certain relationships that are carried forward in the new city. So if you look at Ahmedabad, for example, because I've studied that extensively, the way Ellis Bridge was constructed to continue a particular axis on the newer side of the city. If Europe has a lot of example, the way Paris extends all the urban axis, or Rome during the Baroque period extends all the urban axis. So I think that is one of the ways of, while the new city doesn't have to replicate the old city, in, instead of looking at these old cities as a barriered or kind of fortified boxes that are inside different and outside different, if these relationships are made like many cities have made, and respecting those relationships, urban relationships, then becomes important. All right, thank you. So basically, instead of giving a brown patch as land use, it should be more integrated and there should be a gradation. So with that, I'll quickly summarize the session. We talked about a lot of projects. We also talked about academia helping the field, the capacity building. And we have good examples of Ahmedabad and Ujjain and many other cities. Okay, with that, sorry Pratik, we will have to end the session. We are running out of time. So maybe individually we will answer your question. So now I convey my gratitude and I convey my thanks to the organizers, for the audience, I extend my thanks to all the panelists for giving their time, and yeah, thank you. Thank you so much, sir. With this, we come to the closing of an interesting technical session 3, and I would like to thank all the speaker and moderator for sharing their experience. And now I will want them by giving a small token of appreciation. May I please call on the stage Mr. Dharwaiji sir to give the memento to Shri Praveen Chaudhary sir.
Now I would like to call on the stage Mr. Manoj Ji Pathak to give the memento to Shri Piyush Ji Pandya. Now I would like to call upon Srimati Sonila Mimrode Ji to give the memento to Shri Roshan Kumar Ji Singh. Thank you. Now I would like to call upon Abhishek Ji Gehlot to present the memento to Dr. Jignad Ji Desai. Now I would like to call upon Shri Rajan Ji Garotia Ji, Secretary, to present the memento to Dr. Neel Kamal Ji. Now I would like to call upon Srimati Lataji Agrawal, Rajen Ji Garotia Ji, to present the memento to Dr. Neel Kamal Ji. Srimati Lataji Agrawal to present the memento to Dr. Parul Munjal Ji. Thank you, ma'am. Now I will request all the dignitaries on the dais for the photo session. We would be going to start the closing ceremony within 2 minutes. So I request all the participants to be there only. ये वाले नहीं है ये भी रहेंगे ये भी रहेंगे मॉडरेटर रहेंगे तभी करेंगे For summary and closing remarks, I would like to call upon on the dais Mr. Ravi Ranjan Guruji, Deputy Director General AIILSG. Now next, I would like to call upon Srimati Harshika Ji Singh, Indore Commissioner IMC on the dais. Next, I would like to call upon Shri Kirit Kumar Ji Parmar, Honorable Mayor, Ahmedabad on the dais. Now I'd like to call upon Shri M.B. Singh, Director, G20 Ministry of Housing and Urban Affairs, to come on the dais, please. Closing of any session is not a sad thing. It means that something else is about to begin. It's well said that there are many things that don't really end anyway. They just begin again in a new way.
Now, I would like to hand over the mic to Ravi Ranjan sir for summary and closing remarks of today's technical session. Thank you. So we will not take much time. I know it's almost 6 o'clock and we are supposed to close it, and we'll just take maybe 15 minutes more to just to wrap up the entire day discussion. And the entire the three technical session and the inauguration session we have completed, and there are certain points that we have obviously our rapporteurs will be coming out with the detailed outcome and submit to the ministry, and also the Sherpa of the U20. But there are certain key takeaways that we got it from the today's discussion. I'll just briefly update on those lines, and like I say that the details will be coming out soon. So like we have got the some like population in urban areas is increasing, and soon more than 50% of the population will be living in the cities, making cities crucial for the economic development of our country, as more than 60% of our GDP comes from cities. In the development process, cities should focus on the inclusive development, transparency and accountability, technology, which helps in adopting citizen-centric governance and environmental sustainability. Conferences like this one are essential for knowledge sharing, as solution adopted by one city could also be replicated in other places, thus helping the citizen there. By focusing on the only one aspect, which is the cleanness, Indore has been able to attract the investment, sports and all. For example, the green bond worth of rupees 250 crore issued by the urban local body has been oversubscribed by the huge margin. We need to focus on the neighborhood planning, public health, connectivity, finance, poverty focused planning and the skill development. But we need to more discussion for this, and we need to plan our system for that. We need to identify the uniqueness of every city and work on it. The time has come that India should showcase and build a new track for the urban governance and planning. Rapid economic growth is an important aspect required for the good governance. There are many branches of urban development. How can we join hands and provide a single solution while maintaining the local identity of urban area? That is the question. Digital governance is important to increase the transparency and mobility for the decision making. It has been interpreted before that digital creates a layer of difficulty in urban governance, but eventually it has been seen that it plays a key role in reinventing urban governance. There are three difficulties digitalization faces. First, the acquisition of data and its processing at three levels of governance. Second, the capacity to maintain the continuity in the system, and third, financing. So these are some of the 10 key takeaways we got it today from my team, but rest will come out. So with this, I think the entire day discussion and the deliberation was gone as per our plan. Thanks to all speakers and all the panelists who actually contributed a lot, and the delegates who has participated in the entire discussion. With this, I would like to request Honorable Commissioner Ma'am for giving her closing remarks, and then we would go as per our agenda. Thank you very much. Thank you so much. The day-long event of U20 city event that was there from the morning, we all assembled at around 9:30, 10, and it's been already good time. It's already 6 p.m. I feel and I'm hopeful that all of us had a very fruitful day, wherein we went through three thematic sessions, which were basically very important, very central to this entire concept of urban governance. We all know, as participatory urban governance people or people associated in different forum with the overall urban growth story, we all feel and we all know that in the changing environment, at a stage in India's urban story, where in days to come, the urban world, the urban scenario is going to change. How to rework, how to plan, how to plug the gaps and move ahead in terms of urban governance was what we talked about when we were talking about reworking urban governance.
I happened to be a part of one of the panel discussions when a parallel panel discussions by World Economic Forum where we were talking about the role of basically IT or the role of technology and how can we imbibe in the overall planning of the urban governance. The practical instances, the problem checking, the kind of gaps that exist and how can we come up with solutions for the same was what came out of that panel discussion. And going ahead, the last, but I guess the most important thing with which at least Indore relates itself completely is the role of local urban identity and how does the local urban development, the urban governance revolve around it. As Indore Municipal Corporation and as we all know, the IMC story revolves around the story of identity, how that identity of cleanness, that this city got in the last 6-7 years. And because of the simple identity of being the cleanest city of the country has helped it in several realms in terms of various innovative financing mechanism, as also in imbibing, in converging with various other means and realms of urban development. On behalf of Indore Municipal Corporation, I would like to humbly thank the entire team of All India Institute of Local Self-Government, Tiwari ji and the entire team, which was there from day one to handhold us and give us a way as to how we should go about with this entire planning of this U20 city event. I would like to thank each of the delegates who took out some time from their busy schedule and came and be a part of this entire Indore experience. I hope your stay was comfortable. Your journey from your respective places to Indore was comfortable, and I hope we tried to show you a little bit of Indore in the form of the cultural program last night and the heritage walk, again, an urban identity work that we take up very sincerely in Indore. Going ahead, for all the delegates who are staying back, we have planned a city tour as well in the evening. We would welcome you for that city visit. Please experience Indore. Please enjoy the Indori identity of the special food, the street food for which this city is known for, and the clean world in which it is served in. Thank you so much. Again, thank you so much, Raviji, for giving me an opportunity to be a part of this entire thing. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for your closing remarks. And it's so wonderful, ma'am, to have you in this closing remarks. And I think the entire discussions were very nice. And now going back to the Ministry of Housing and Urban Affairs, we have MB Singh ji, who has been the, I know, since starting of when this U20 cycle started, he's been guiding us. So we want to listen him from MB Singh, sir, from your side. Thank you very much. I know it's very late, but I think we can have a huge round of applause for him. Thank you. Thank you, Ravi ji. I'll not speak much क्योंकि पूरा दिन से आप लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं. But I would really like to convey our sincere thanks to Indore Municipal Corporation led by Honorable Mayor and Municipal Commissioner, Team AIILSG for such a wonderful culminated program. We had varied experience here across the day, like from academia, from bureaucracy, from every sector of society, and across the country, we have been witnessing the people actively participating in the events. And 2 parallel classroom sessions were also there. I just roamed around to those 2 sessions. So I'm sure that this event is a landmark event in the Urban 20 cycle. So with this, I would like to once again congratulate Indore Municipal Corporation and AIILSG. Thank you so much.
Thank you so much, sir. So with this, we are come to end of this today's deliberation and the discussion. And I would like to thank, first of all, Ministry of Housing and Urban Affairs for providing and guiding us for this entire program. I'd like to thank NASA Institute of Urban Affairs, Government of Madhya Pradesh, Indore Municipal Corporation, especially the Honorable Mayor, sir, and ma'am for providing and guiding us for organizing this entire day programs. All the team members of Indore Municipal Corporation, I've been seeing them since long. They've been working very hard to make sure that your stay is comfortable, your pickup is comfortable, and all kind of logistical arrangement should be very comfortable to all of you. So first of all, thanks, and I would like to request all of you to have a round of applause for the Indore Municipal Corporation team for providing all the basic necessities and facilities. And all the partners, all speakers, delegates, and of course all of you for being here for this wonderful city of Indore, who is always a role model of in India as well as outside India. And last, I would like to thank all entire team of AIILSG. They've been working since last, I know, 1.5 months, very hard, day and night, to make sure that the speakers, selections, and the background note and everything should be perfect. So with this, thank you all of you, and we are closing this the entire day program. We can invite all of you to have a group photo. Please come forward. Thank you, ma'am. Thank you. Please, all of you, please join us for the group photo. All of you can come. Please, all Indore Municipal Corporation team also, please, all of you can join. Please stand. Some of the stand can front, some of the stand on the stage. Please join everyone. Some of them can stand here also. All the delegates, please join us. Please join us. All of you, please join for the group photo. You can stand here. Some of AIILSG team, can we stand here? Please go back. Huh? Okay. Okay. I guess it has the capacity to hold all of us. Please join. Sir, please. Ajo Haris. Please, sir. Sir, please join. Please join. Please, all of you. Some of them can stand in front also. Nimis, please stand in front. कुछ बैठ भी सकते हैं. Students can sit in front. आप लोग बैठ सकते हैं. आगे बैठ जाइए. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Enjoy all of your evening. Thank you very much.